Let's start our day 6 on a very fresh and calming note with the yoga session by Dr. Neha Jenner. Dr. Neha, are you there? Are you joined? Dr. Neha is just fixing her camera, I think. How are you all? Sir, are you working from home today? I see some of you in the offices. Saturday is office day. Saturday is office. सर आपकी पुरानी ट्रेनिंग्स भी सैटरडे को होती थी या इज दिस जस्ट द CLMDP प्रोग्राम? बिकॉज़ CLM होती है सैटरडे इज वर्किंग डे. अच्छा. So before Dr. Neha joins, I'll just say that today we will be touching upon the theme of execution excellence. मैं ज़्यादा अभी इस बारे में बोलूँगी नहीं. I think Soumyadev will be talking about it more. And just to start it on a calming note, we have Dr. Neha now. And over to you, ma'am. Thank you. Good morning. I'm audible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Namaste, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hope you guys are doing good. Okay. First, sit in a comfortable posture. Make your back straight. Lift your torso up. Lift your shoulder blades up. Roll back and relax. Bring your elbows slightly towards your body. Palms up towards the ceiling. Once you are comfortable, gently close your eyes. Slowly bring your awareness towards your breath. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Make sure you are not leaning forward or leaning back. Sit on both your glutes equally. Now join your palms together in front of your chest. Inhale and chant 3 rounds of Om. All together, श्वास लीजिए. Inhale. श्वास लीजिए. One more time. Inhale. Now relax. Hands on your knees. Gently open your eyes. Now, first start with the deep yogic breathing or the 3-part breathing. So everyone, make your hands like this. So thumb apart, all 4 fingers together. And rest your both hands
on your waist level so that we can feel the abdominal breathing. So everyone rest your hands on your waist. Rest your hands on your waist. All 4 fingers forward, thumb on the sides. Now, eyes closed. One more time. Inhale and feel the expansion in your belly. With exhale, draw your belly in towards the spine. Again, inhale. Fully expand your belly like a balloon. Exhale, draw your belly in towards the spine. Now with my count, 6 rounds with my count. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. 3 more rounds. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Last round. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1, and relax. Now rest your hands on your lap. Eyes still closed. Just feel the expansion with inhale and relaxation with exhale. Now move on to the thoracic breathing. Again, everyone, gently open your eyes. This time, rest your hands on your lower rib or the floating rib and just feel the expansion. With inhale, fingers are moving apart. And with exhale, slowly, fingers back to position 1. Again, 6 rounds. Gently close your eyes. Now start your thoracic breathing, and with each inhalation, feel the expansion in your rib cage. And with exhale, slowly feel the relaxation. Now, start. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Feel the expansion. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. 3 more rounds. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Last round. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1, and relax. Release your hands on your lap, palms up towards the ceiling. Feel the lightness, feel the calmness. Now the third, clavicular breathing. Again, gently open your eyes. This time, rest your hands at your upper chest. So thumb under your armpit and 4 fingers in front. Chest up, spine neutral, shoulder relaxed, neck free. Again, start your deep breathing with my count. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3,
2, 1. 4 more rounds. If in case 4 is challenging for you, just know that you can always change the count according to your will. Or just listen to your body first. If you are not comfortable for 4, go for 3. Or if you want to do more, you can go for 5, 6. Last few rounds. Very slow inhale. Slow, deep, long exhale. And feel the expansion at your clavicular region. Slow inhale, slow exhale. Last round, everyone. After your full exhalation, release your hands from the chest and rest the dorsal part on your thigh. Eyes still closed. Now rest your left hand on your belly, right hand on your chest. Now 5 rounds. Join all the 3 breathings together. So abdominal, thoracic, and your clavicular. With my count. This time, inhale, try for 4 or 5 or 6, but I'll count up to 4. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. And relax. Hands on your lap. Eyes still closed. Just feel the sensations going throughout your body. Feel the lightness, feel the calmness. Just connect with yourself, with your breath and your breath. Now, the next practice, the next cleansing practice is a Nadi Shodhan. Okay, everyone, gently open your eyes. Left hand, make a left hand Chin Mudra or a Gyan Mudra. Index finger and thumb will make a circle. Rest 3 fingers together and rest the dorsal part on your thigh. Now right hand in a Vishnu Mudra. So join first 2 fingers. Close your first 2 fingers. Open your thumb, ring and your little finger. Vishnu Mudra. Use your thumb and your ring finger for closing your nostrils. We are starting from the left. So gently close your right nostril with the thumb. Inhale from the left, close your left, exhale from the right. Again, inhale from the right, close your right, exhale from the left. Okay? Now everyone, close your eyes and start your breathing. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. You guys continue your cleansing practice. Today, we are going to add breath retention. आप करते रहिए, रुकना नहीं है.
So after your inhalation, just close your both the nostril, hold your breath. श्वास को रोकेंगे. आप उल्टे से श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, and then exhale from the right. So just inhale, hold, exhale. Very slow inhale from one nostril, hold your breath, and then exhale. Very gentle, slow, deep inhalation. Breath retention means we are just holding our breath. I know breath retention is a very challenging practice, so don't force it. Very slow inhale, gently hold your breath, and then exhale. Very slow inhale. Try to hold your breath as much as you can. Don't force for inhalation, holding. So try to inhale in 5, hold for 5, exhale in 5. Don't have the mindset when you come to the practice of pranayam कि हम सब काफी देर hold कर लेंगे. So don't keep in mind. Just gently hold as much as you can. We have to be very, very gentle while retaining our breath. We should never force it, never. Just very slow inhale, hold your breath. Even your hold is 2 counts, 3 counts, 4 counts, 5 counts, or maximum as much as you can, but don't force it. Don't give up. Self-practice is very challenging. For next 1 minute, very slow inhale, hold your breath, and then exhale. So inhalation, antaraya kumbhak or breath retention, and then exhale. This is last round. Once you fully exhale from the left, then you can relax. Very gentle, controlled exhale from the left nostril, and then you can relax. Rest your both hands on your lap, palms up towards the ceiling. Now both hand in Agyan Mudra or a Chin Mudra, chest up. Again, inhale, we do 3 rounds of Om. श्वास लीजिए. Again, one more inhale. Last one. श्वास लीजिए. Now relax. Rub your palms. Once you feel the warmness, do cupping on your right. Make a leaf with your palms. You can chant with me or after me. Karage, Vasate, Lakshmi, Kar, Madhya, Saraswati,
Kar Mule Tu Govinda Prabhate Kar Darshanam. Gently open your eyes into your hand. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Hope you Neha like ma'am. the practice. Thank you, Dave. Thank you so much, everyone. Thank you for a wonderful session. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Hind. Thank you. Good morning, sirs. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, Nagendra sir. Good morning, Jai Singh sir. Good morning. Prashant sir, Neeraj sir, Virendra Happy sir. birthday. Happy Uday. birthday with this good morning to the Happy UPSC birthday. saying. Uday, Thank you, sir. Thank you. Thank you, Uday everyone, sir, happy Thank birthday. you. Happy birthday. Thank you, Somedev. Thank you. साहब जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो UPSC Birthday, star. sir. उदय सर हैप्पी बर्थडे बहुत बढ़िया. अरे बर्थडे बॉय Thank you, को sir. कोनिकल कैप पहन के आना चाहिए. हैप्पी बर्थडे उदय भाई Thank you, सेकंड में sir. पहन के ये कोनिकल कैप. भाई हैप्पी अरे बर्थडे. भाई पिंक उदय बॉल. ग्रुप लीडर हमारा सिंडिकेट लीडर. Thank you, sir. हैप्पी Thank you बर्थडे. very much, sir. हैप्पी बर्थडे उदय Thank you very much, sir. Thank उदय you. भाई जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद, sir. धन्यवाद. Happy birthday, उदय भाई. Thank you, sir. हैप्पी बर्थडे उदय भाई Thank you, sir. Thank you, दादा. Thank you. रमेश बहुत दूर से है इसलिए ऐसे जन्मदिन कर की रहा है. बहुत रमेश बहुत शुभकामनाएं. दूर है इसलिए ऐसे कर रहा है. हैप्पी बर्थडे दूर से. रमेश सबसे सबसे सलूट करीब है, है हमसे. सलूट. सबसे पास में. आप भी करीब है. ये सलूट है, सलूट. Thank Uday sir, happy birthday once again. Thank you, Somedev. Thank you. You're spending the day with us, so we'll try to make it fruitful for you. Thank you. We have आज आप लोग के लिए sir, we have 3 sessions lined up. जैसे कल हमने बताया था, our first session so is on delivering results. हमारे जो 7 talents of a leader थे under execution excellence. We will be starting off with 7 delivering results, which is a part of execution excellence. We'll talk about how you, as senior leaders in the BSF, what it takes to deliver results at the BSF. So the insights, janenge, we'll, get exchange some perspectives from management as well. Then our next session is on giving effective feedback, something that you have been very familiar with from the very beginning of your careers, under the set direction of the 7 talents of a leader. We will be covering this session that will be taken by Dr. Kirti Bala, and we will end the session with channelizing stress. Considering that throughout our learnings from the CLMDP batches, we have realized that it is stress management, psychological well-being is a theme that has been often demanded, and aap log, something that is often required as well. So we hope that you enjoy this session on the channelizing stress. So without further ado, we will start off with the first session. Dr. Dipali, I think you're here, madam. Good morning. Yes, good morning. Good morning, ma'am. Thank you very I'd much. like to hand over the proceedings to you. Yeah, thank you so much. And namaskar to all present here, and very happy birthday to Uday sir. That's Thank you, really ma'am. Thank you very much, ma'am. a great day today. So I wish you a very happy future ahead as well, sir. So, I'm really glad that I have got the opportunity to share the platform with you all again. So I still have very good memories of my previous session, which was really very interesting and full of so much insight, which was a learning mutually at my end also. So looking forward for a great session today as well. So today I would be delivering a session on delivering results, which I mean is something which is synonym to BSF people. And I mean, you are so much into action these throughout your career, throughout your progression, that I mean, there's no question of not delivering results. That's very true. So this session, this workshop is definitely going to give you some insight about how things could be channelized and streamlined, and it could be made up much better and productive in terms of delivering result. So I would just like to share my screen. Allow me a moment.
I hope my screen is visible. Yes, Yes, Doctor. ma'am, it is, yeah. Okay, thank you so much for confirming. So before we jump into this very interactive workshop, I would just like to gaze you through what it's going to be in our next 90 minutes and how we are going to progress with the journey. So we'll initially talk about the context of setting how we would be delivering better results. Then while setting the context, we would be talking about what enables us to deliver better results. And then there's a very beautiful model of these 4 elements wherein we talk about clarity, measure, aligning, and adapting, which helps us to deliver better results. And then looking forward and getting insight from you and few suggestive readings we would be talking about. So let's begin with the session and talk about, let's think about a time when you set yourself a challenging goal and you could achieve it. And what enabled you to do that, right? So yes, sir. So there's a small activity for you all, and I would really appreciate if you can think upon just for 2 minutes, any time wherein you have set up a challenging goal for yourself and you successfully attained it, right? The goal could be something professional, it could be personal as well. Nothing very, it's not very specific that you need to talk about any BSF related goal only. You can think about anything, but wherein you have achieved it and what were the enablers which helped you in attaining that goal. So if I can get few hand raises from anybody who would like to contribute. Dr. Ripali, Man Singh sir has contributed on chat that determination is something that enabled him to do so. Okay, and Man Singh sir, if you could just let us know what was the goal and challenging goal. Good morning, ma'am. Any goal, whatever feels I have to achieve, it's my determination that helps me. Okay. Determination being one of the factors which enables us to attain a goal. Apart from that, there are various other elements as well. And those who set yourself a challenging goal and could achieve it. Not having to go right. Planning. Planning, okay. Determination was another goal. Was another enabler rather. Then avail opportunity. Okay. But opportunity is something, it's not an enabler, it's Time something plan. we need to sense upon and we need to grab it. Madam, but somehow it works also. Yeah, Just, it does work. But if we are able to realize and grab that opportunity, because it's not served on the platter, we need to convert maybe a challenge also into an opportunity. So any suggestion if somebody can come up with, yes, very well. Madam, just I wanted to just, I have just on the background, I have just pasted one photograph. It is not virtual, it is real. Okay. That I got one opportunity that my colleague brother who is in high position, Mr. Bipin, is now also doing course. He once along with local state bank manager, he visit us campus and ask if there is any opportunity for plantation drive. I just welcome them and we facilitate them, and he was very happy. And in CSR, he asked me, whatever you want, you just put on demand, we will supply you. Then I requested that just please, if possible, you please supply us one e-rickshaw, as it may be useful for our troops, as our families, and for pretty small purposes. And 2 days before delivery, the manager came to me and asked me that you write and modify your application, you ask for 5 e-rickshaw. Then we requested for 5 e-rickshaw, and next day he delivered 5 e-rickshaw in the month of February this year. So we took actually our one of our aim was that we have to go for green fuel, and we achieved through CSR. That's why I put on this point that whenever opportunity comes, we must avail it.
True, very true, sir. And if you are not timely responding to those activities, definitely those opportunities, they really fly and fade away. So that is one of the things that we require in order to proceed further. And I can see that picture in your backdrop also, all those e-rickshaw looking really, they are the new ones, I think. So February you've got them delivered, right? Okay, that's Sitting on the rickshaw, sir. and a very good initiative as well, sir, no doubt. One point you have to add. Yes, sir, please go ahead. Goals. When you want to achieve the goals, you should know how important it is to you and how valuable the goals are. True. So if you are able to sense the importance of those roles, I'm sure that initially all of you contributed that a goal can be attained. The enabler could be determination. So I think determination have a very strong connect with how strongly you require to attain those things. Am I right? Yes. Yeah. So that insight into I mean, what would be the result looking like, or maybe how barely I require those things, that somehow retaliate to my intensity of determination. And higher the determination, definitely higher would be the chance to attain that goal. Right. And that reminds me of a very beautiful story of Swami Vivekananda, because in my last session, I do remember that when I've given you the pictures of few personalities, many of you picked up few pictures and you wonderfully contributed about them. And one group also chose Swami Vivekananda. And I got to know very new things about Vivekanandji at that time from that group. So there's a small story which is all about determination, which I would like to share over here. So Swami Vivekananda was named as Narendra during his childhood, and later on he got this name as Swami Vivekananda. So during his childhood, he was very inquisitive and he was very curious child. And he always wanted to know that how does a God look like, and do God really exist? And why do people believe so strongly into God? So he was into a habit of approaching all the saints who used to visit his city. And he used to ask them that, have you seen God? And he got answer from many of them, but he was somehow not satisfied and happy with their answers. So his hunt continued and he kept on inquiring people. And one fine day, there was a man who came to him and he said that Swami Ramakrishna Paramhans, he's in the town and he's a very learned man. And you have been so inquisitive about knowing how does a God look like and does God exist or not. So I think he could provide you answer with all your questions. So listening to this, Swami Vivekananda ji rushed up to Swami Ramakrishna Paramhans and asked him that, sir, have you, Swamiji, have you ever seen God, and how do you preach that God exists if you haven't seen him? So he said that, no, I have seen God and I have talked to him the way I'm talking to you in person. So he said that if you've seen him, then I would also like to see him. Can you make me experience God? So he said, yes, why not? You come with me. So he took Swami Vivekananda along with him, and he holded his hand and he brought him in center of a pond. There was a water body, there was a pond there, and he brought him there. And where the water was quite deep. And immediately he pushed his face beneath the water. And for a few minutes, he just holded his neck very tightly beneath the water. And Swami Vivekananda ji very aggressively, he tried pushing out of water because he was not able to breathe. He was not able to survive. And at one point of time, all of a sudden, with a lot of pressure and thrust, he came up. And he told Ramakrishna ji that, what were you doing? You were trying to kill me. आप मरने के बाद मुझे भगवान से मिलाना चाहते थे क्या? So he said, nahi, I wanted to teach you a lesson and I wanted to show you that जिस force से आप water से बाहर आए, because you wanted to survive, you wanted to breathe. अगर इसी force और इसी intensity से अगर आप भगवान को search करोगे, तो you definitely will get to know about God one day and you'll witness him.
So that is the power of determination, that how barely you require a particular thing, वही आपका goal challenge भी set करता है, वो एक बहुत बड़ा enabler. So very rightly remarked, most of you. So now moving forward, we would be talking about this beautiful model of 4 components, which actually facilitates us in delivering result. And one by one, we need to step on to the other one. The first one talks about gaining clarity, then measuring indicators, aligning your goals and adapting to them. So one by one, we will be proceeding further with each step. So let's talk about gaining clarity. So do you think that it is very much required in your troop also to gain clarity about things? There must be certain goals, there must be certain challenges which you have kept across your men, your people under you. And did it ever happen that they do not have a lot of clarity, and because of that they were not able to attain that goal, which I'm sure must not have happened, because in your case the instructions are very well defined and very well clear. So nothing more could match clarity if I talk about giving instruction in terms of BSF personnel. So any comment about what you need to take care of while you are defining any goal to your troops? The parliament is very clear that your aim is to achieve something, to reach at a destination. There may be stairs, so you will have to tell the team very clearly what is the ultimate goal and what are the stairs or what are the stages we will proceed. So everybody should be in sync that I have to do this, and after attaining the same, we will proceed further. If clarity is there within the team will work fantastically to achieve the same. Very true, Bipin sir. Sir, आपको नहीं लगता clarity actually leader के instructions के basis पे आती है? और क्या कभी ऐसा होता है that there is a group जिसको आपको बहुत ज़्यादा detailed instruction नहीं देने पड़ते, कुछ लोग इशारे से ही समझ जाते हैं, और कहीं आपको मतलब the level at which you are defining things increases? क्या ऐसा होता है सर आप लोगों के साथ? Yes, of course it happens. And when does it happen, sir? Yeah. मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ. सर विपिन सर, प्लीज कंटिन्यू. हाँ विपिन सर, आप बोलिए सर. हाँ सर, पहले प्लीज आप कंप्लीट करें सर. विपिन सर, मैं ये कह रहा था कि जो टीम मेंबर्स हैं, the name as such will comprise various people and they will have different roles to play in achieving that particular aim. So it is not very clear that you should tell everybody everything, but what you want to achieve from him, he should be clear in that aspect, that I have to contribute like this. Very true. That clarity, that may not be important for another person, but the ultimate goal they should know, and for each and every step they should know what is my role in this. True sir. और आई थिंक सो उनको एंड रिजल्ट भी पता होना चाहिए, जैसे आपने कहा ना, ही नीड टू नो व्हाट इज माय रोल इनटू इट, और जो लास्ट आउटकम निकल के आएगा वो क्या होगा. जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट, देयर वाज वन केस रिलेटेड टू ये हेनरी फोर्ड, हु वाज द फाउंडर ऑफ फोर्ड कंपनी, एंड that was a very long back time when most of the cars of Ford were produced in black color. And एक बहुत familiar logo के या एक tagline थी जो Henry Ford ने दी थी, that anything could be sold into the market as long as it is black in color. So the reason was कि black color थोड़ा सा reasonable हो जाता था, और अगर आप पूरी जो उसका जो बनाने का पूरा स्लॉट है, उस पूरे को आप अगर एक ही कलर में कर रहे हैं तो फिर इट विल बी वेरी इकोनॉमिक फॉर यू. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड टू श्रिंक बिकॉज यू वर यूजिंग वन कलर, एंड दैट वाज द टाइम जब कंज्यूमर के पास बहुत चॉइसेस नहीं होती थी. व्हाटएवर वाज ऑफर्ड टू हिम, ही वाज बाउंड टू बाय दोस थिंग्स. तो इस तरह से ना वो बताते थे, मतलब देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच ही डिड विद हिज असेंबली लाइन वर्कर्स, फ्लोर वर्कर्स, wherein one person was asked to fix the screws of the car. उसके टायर में वो स्क्रूज बोल्ट को टाइटन करता था, उसका यही काम था. तो ही यूज्ड टू डू इट, बस एक मोनोटोनस वर्क था, हर रोज आता वो कर जाता उस काम को. ही हैड नो आइडिया कि क्या हो रहा है.
one fine day Henry Ford he took a meeting और वहां पे उन्होंने सारे employees हर level के employees को बुलाया and he made this person realize the importance of कि उसका bolt कसना कितना important है और eventually एक कार है जो बन के आ रही है. That is the final outcome which made him proud a lot and he really felt कि हाँ मेरा काम कुछ significance रखता है. And that increased his level of determination and his motivation towards doing work. So that's true, sir, कि अगर आपको end result आप पूरा picture बताते हो लोगों को तो वो उस bent of mind के साथ काम करते हो. Okay, this is how we need to attain. तो ends पता है तो means भी वो कभी-कभी खुद भी devise कर लेते हैं. And especially in your situation, in your condition, sir, आप लोगों की तो बहुत unpredictable चीजें होती हैं. When you are giving your instruction, you never know कि आगे step क्या होगा और कैसे चीजें turn out होंगी. So then that presence of mind, I think, is very much required for people who are right in the field. तो वहां पे वो उन न्यू वेज को भी डिवाइस कर पाए तो बहुत अच्छा रहता है अगर उन्हें एंड रिजल्ट पता हो तो. So very rightly remarked, sir. Nagendra sir, I can see a hand raise and I'm very excited to hear from you. Please tell me. What do you think about it? एक थोड़ा सा ये है कि कम्युनिकेटिंग द फुल गोल और बिग पिक्चर हमारे कॉन्टेक्स्ट में कई बार ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल एक बात बताता हूँ. जैसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर बिग पिक्चर इज दैट कि वी हैव टू मेंटेन ए वेरी स्मूथ रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, क्योंकि हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डिफिकल्ट रिलेशंस ऑल अराउंड आवर बॉर्डर्स. तो चाइना एंड पाकिस्तान वो तो इनकॉरिजिबल टाइप के हैं, तो दे विल नॉट इम्प्रूव. उनमें चेंज नहीं आएगा. वी कैन नॉट अफोर्ड कि वहां पीस हो जाएगा. बांग्लादेश के अगेंस्ट में वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आवर फ्रेंडशिप. नाउ इफ वी कम्युनिकेट टू आवर ट्रूप्स कि आप ड्यूटी कर रहे हैं बट आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है. फॉर एग्जांपल एक बांग्लादेशी स्मगलर अगर डेथ होती है किलिंग से, तो उसका रिपरकशंस ये होता है कि अगर मान लो हमने 100 kg ऑफ गोल्ड पकड़ा है और उसमें एक बांग्लादेशी मारा जाता है, तो उस 100 kg गोल्ड का जो भी बेनिफिट होगा वो विज़ाविज़ जब हम उसको बैलेंस करते हैं तो एक बांग्लादेशी के लॉस करने से हमारा जो रिलेशन है काफी पीछे चला जाता है, बिकॉज इट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ बांग्लादेश. लेकिन अगर हम ट्रूप्स को बताएं नहीं, देखो हमें जो है इस बॉर्डर को शांत रखना है, हमें मारना नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनके पास से आएगा तो फिर हम ये ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर स्टैंडिंग, हम छोड़ दें, जाने दें जिसको जाते हैं. तो उस टाइम पे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वी टेल देम व्हाट वी रियली वांट. वहां हम ये बोलते हैं भाई आपने रोकना है, कुछ होगा यू फायर ऑन सेल्फ डिफेंस एंड ट्राई टू एप्रीहेंड. तो हमें एक लिमिटेड व्यू उसको देना पड़ेगा. मैं इसको उस हिसाब से कंपेयर करता हूँ. जैसे पुलिस का जो फंक्शनिंग में आप देखोगे कि आप किसी भी शहर में रहते हैं, आप देखेंगे नंबर ऑफ रेडी और ये रोड के किनारे आपके पास में दुकानें लग जाती हैं. पहले एक ठेला लगता है, फिर बाद में सब्सिक्वेंट स्टेज में पूरा मार्केट लग जाता है नॉट ऑन द मेन रोड. होता क्या है कि जो हायर अप्स होते हैं वो बोलते हैं लग रहा है रेड़ा, कोई बात नहीं लगने दो, क्योंकि अगर इनको हटाएंगे तो ये न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, कुछ और काम करेंगे, कम से कम अभी रोजगार कर रहे हैं. तो स्टेट के जो लो लेवल पुलिस है उसको कुछ बोलते नहीं है कि रोको. तो होता क्या अल्टीमेटली जो पुलिसमैन जिसका काम वहां रोकना है वो स्टार्टेड अर्निंग मंथली उनसे पैसा लेने लग जाता है. तो उससे क्या होता है, उस पुलिस का जो ओवरऑल कैरेक्टर है दैट सफर्स. हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आवर कैरेक्टर. मतलब हम अपने फोर्स के कैरेक्टर को किसी भी सूरत में डाउनग्रेड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट लूज, वी कैन नॉट अफोर्ड, एज सिंपल एज दैट. तो इसलिए जो है हमको कम्युनिकेट करना पूरा गोल. एट टाइम हमारे लिए वो सिचुएशन हो जाती है कैश टू वाली, जहाँ जो सिचुएशन होती है वहां उनको सपोर्ट भी करना पड़ता है और हमें अपने ऊपर वालों को समझना ही पड़ता है कि व्हाट हैपेंड ऑन ग्राउंड. पूरी पिक्चर अगर बता देंगे तो समहाउ वी मे एंड अप जैसे कि पुलिस का जो कैरेक्टर है वो लूज है, बोलेगा ठीक है हमारे तो कमांडेंट भी बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी मारना नहीं है, उसको फायर नहीं करना है, जाने दो. एंड ही स्टार्टेड ठीक है पैसा दो और तुम निकल जाओ. हम बोलेंगे सर वो तो बांग्लादेशी था, आप ही ने बोला है रिलेशन अच्छे होने चाहिए इसलिए मैंने उसको कुछ किया नहीं. तो ये एक सिचुएशन आती है जहाँ पे ये हमको शायद शूट नहीं करता. थैंक यू. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप कि वो बिग पिक्चर वाला जो सिनेरियो है वो हर बार एप्लीकेबल नहीं हो पाता, स्पेशली इन सच सिचुएशन. और सर मतलब सीरियसली बोलूं तो ऐसा नहीं है कि मतलब ओनली एट वॉर फ्रंट, दो दैट इज द मोस्ट क्रूशियल ऑफ ऑल, दैट्स ट्रू. लेकिन बहुत बार सर हम हमारी पर्सनल लाइफ में भी चीजें देखते हैं या
करते हैं तो हमें लगता है कि हमें हमेशा हर बार हर चीज पूरी रिवील नहीं कर सकते। जैसे घर में किसी को कोई बीमार है बहुत ज्यादा, या डॉक्टर है किसी को कंसल्ट कर रहा है, तो वो उसके घर वालों को बुला के बताता है। अगर चीज बहुत सीरियस है तो पेशेंट को जनरली नहीं बताया जाता, क्योंकि तो जहाँ पे चीजें बहुत सेंसिटिव हैं, डेफिनेटली यू विल हैव टू कीप अ कवर ऑन देम, और बहुत पार्शली आपको चीजों को और बहुत वाइजली, बहुत डिप्लोमेटिकली यू विल हैव टू हैंडल, व्हिच आई एम श्योर most of the time you will be encountering those situations. So yes, in that case you are not going to reveal the entire whole picture, लेकिन कहीं पे जहाँ पे अगर क्लाइंट जो रिस्पोंडेंट्स हैं या फिर आपके जो आर्मी मैन है या फॉलोअर्स हैं, वो अगर कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं, इन दैट केस आई थिंक देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेल देम द होल पिक्चर। क्योंकि जैसे मैंने आपको हेनरी फोर्ड के केस में बताया, दैट वाज अ प्रेस्टीज सिंबल कि अच्छा मेरे गोल फिक्स करने से एक कार बन रही है जाके। So, उन सिनेरियोज में अगर हम ये बताते हैं और क्लैरिटी होती है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पे थोड़ा डाइसी होता है सर, वहां पे क्लैरिटी कभी रह ही नहीं पाती। मतलब इवन यू डू नॉट नो दैट व्हाट नेक्स्ट वुड कम एंड व्हाट यू हैव टू डू इन दैट सिचुएशन। तो सच में इन दैट केस यू विल हैव टू लीव थिंग्स टू डेस्टिनी, और मे बी एट टाइम्स बहुत एकदम मोमेंटस डिसीजंस आपको लेके चीजों को फिनिश करना पड़ता है। I think Pramod sir, you were also about to say something. Did you raise hand? Yes, Pramod sir. Please go ahead. मैम गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. एक्चुअली में गोल जो है डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। Okay. यदि गोल हमारा शॉर्ट टर्म है तो फिर देन हमें जो है जो भी इन्वॉल्व है उसमें सभी को इन डिटेल में ब्रीफ करना होगा, बताना पड़ेगा, उसका पर्पज भी बताना पड़ेगा। ठीक है, यदि हमारा गोल लॉन्ग टर्म है, हमने जो है कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट कर रखा है कि इसका इम्पैक्ट ये पड़ना चाहिए, तो उसमें ब्रीफ जो है डिटेल में करने की जरूरत नहीं है सभी को। उसमें टाइम टू टाइम हमें जो है बाउंड टू बाउंड चलना होगा और सेट गोल, छोटे छोटे गोल सेट करना पड़ेंगे फिर बीच बीच में बाउंड टू बाउंड चल करके, और वो छोटे छोटे सेट करके गोल उनको फिर ब्रीफ करना होगा। जैसे मान लीजिए छोटा गोल हमने सेट कर दिया, उसमें फिर उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उनको हमें इन डिटेल में जो है उस गोल तक पहुंचने के लिए ब्रीफ करना होगा डिटेल में। ट्रू। इसलिए छोटे छोटे गोल सेट करके ही हम जो है बड़े गोल पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने लेकिन कहीं पे जो है डाउट की पोजीशन नहीं होना चाहिए। यदि गोल जो है हम छोटे छोटे गोल सेट करेंगे, उन गोल को फुल जो है ब्रीफिंग होगी, उसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसके पर्पस सेट होंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर कि लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको हम ब्रेकअप ही करेंगे अगर शॉर्ट टर्म गोल्स में, तभी हम उसे अटेन कर पाएंगे, क्योंकि वो बेबी स्टेप लेके वी विल बी इन अ पोजीशन टू फाइनली अटेन दैट गोल। ट्रू। तो वहां पे हमें उन्हें क्लैरिटी देनी पड़ेगी, लेकिन क्लैरिटी देना पड़ेगी। यस सर। और कभी कभी जैसे मैंने आपको कहा ना सर, अगर चीजें पॉजिटिव हैं सिचुएशन में, तो हम क्यों ना लॉन्ग टर्म गोल भी बताएं। जैसे मैं आपको मेरी सिचुएशन में बताती हूँ। आई एम अ प्रोफेसर and I am also a deputy director at Amity Business School. I am heading that institution. अब सर क्या होता है, हमारे मैनेजमेंट में ना रैंकिंग्स होती हैं, तो आई कीप ऑन फिलिंग दोज फॉर्म्स फॉर रैंकिंग, और मेरे लिए मेरे बी स्कूल की रैंकिंग लाना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे उसकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है। नाउ इन ऑर्डर टू अटेन दोज रैंकिंग बहुत सारे पैरामीटर है, तो वो मेरा एंड टर्म लॉन्ग टर्म गोल हो गया। नाउ आई हैव टू आस्क माई टीम मेंबर्स, मेरी फैकल्टी मेंबर्स को, कि आपको ये चीजें करनी। तो अब उन चीजों में आता है, जैसे आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं, या आपको कुछ CSR एक्टिविटीज करनी है, आपको कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं, आपको स्टूडेंट के साथ कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के वर्कशॉप्स करनी है। मतलब दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके बेस पे हमारा वो अटेन होता है रैंकिंग गोल। सो देन आई हैव टू डिवाइस दोज थिंग। यस सर, आपका हाँ यस प्लीज। मैम जैसे आपने एक एग्जांपल कोट किया था फोर्ड कंपनी का, तो वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं है वो उसको जो है बताना होगा कि हमारी क्या ब्रांडिंग होगी। जैसे उसने बोल दिया ब्लैक कलर है, हमें ब्लैक कलर ही जो है मार्केट में भेजना है, तो गोल वो लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल उसका हो सकता है कि पूरा जो है वर्ल्ड के अंदर छाना, ये बड़ा गोल उसका सेट हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत ही है उसका ब्रांड एस्टेब्लिश करना अपना। तो उसके बारे में उसने पूरा कंसेप्ट ब्रीफ किया कि हम क्यों ब्लैक ही क्यों रखना चाहते हैं, ब्लैक ही मार्केट में क्यों लाना चाहते हैं, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है उसका।
True, वो sir. उसने अपने उसको बताएगा। हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि उस समय उसको सेल्स को पुश करना था। लॉन्ग टर्म गोल है कि इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनानी। तो ब्रांड के बारे में जो उसका दिमाग में सोच थी कि हमें ब्लैक कार ही निकालना है, तो उसका उसने अपने जो कर्मचारी है उसका उसने कंसेप्ट बताया कि मैं ब्लैक ही क्यों चाहता हूँ, भाई नोट जो है वाइट या ब्लू। तो उसने ब्लैक का कंसेप्ट पूरा का पूरा अपने कर्मचारियों को समझाया। ट्रू सर। और फिर उसको कैसे एक्सपेंशन किया, वो उसका लॉन्ग टर्म गोल है। उसकी स्ट्रेटजी नहीं बताएगा वो कि हम मार्केट में कैसे ले जाएंगे। वो उसके लिए चुनिंदा लोग होंगे, उनको ही ब्रीफ करेगा वो डिटेल में। यस। I say something, ma'am? Please, sir. Please, sir. Yes, go ahead. Actually, in our case, yesterday also we had deliberated upon this. It is need to know basis. Everything cannot be told to under command. It is as per their work profile, what is to be communicated, because there has, of course, clarity has to be there, but at the same time, brevity should also be there. Brevity and clarity. True, true, sir. So therefore, full goal, we may not need to communicate. Yes. Moreover, as far as orders are concerned, I never justify the reasoning behind my orders. Justification is not given to under. Because if I have to justify, then I think that is not the right way. He must know what is to be done. Yes. And how it is to be done. That is it. True, true. सर वैसे हमारे केस में भाई जो है भाई कम लगता है। क्यों 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 पर्सन जो है हम लोगों के यहाँ, हाँ, if it is a command, sir, everybody have to follow. तो वो order है तो नहीं है। True, there is no why. करना है, बस जो है टारगेट सेट हो गया, करना है। True. तो अंडर कमांड को या किसी को क्वेश्चन रेज करने की जरूरत नहीं है। भाई कौन जाना है उस पहाड़ी पे? True, sir. उसको जरूरत नहीं है। बाकी करना कैसे है, पहुंचना कैसे है, कैसे पहुंचेंगे, वो सारी चीजें जो है, जैसे सर ने बताया हुआ है, कोई चीज है। यस सर, तो क्लैरिटी आपकी बहुत क्लियर है। लेकिन ऐसा हाँ कि जैसे जब आप ऑफिसर्स के साथ कोई डिस्कशन करते होंगे और एक आप बिल्कुल एक नया कोई रिक्रूट है जो बहुत ही जूनियर लेवल पे रिक्रूटेड है, उसको जब आप इंस्ट्रक्शंस बताते होंगे, तो मुझे लगता है कि वहां थोड़ा आपको बहुत मेटिक्यूलियस होना पड़ता है। मतलब इट हैपेंस आई थिंक इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि उस बंदे का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है एज कम्पेयर टू अ सीनियर पर्सन या पर्सन जिसका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वहां थोड़ा सा आपकी ब्रीफिंग में डिफरेंस आता होगा सर, इफ यू आर अग्रीइंग टू। रिक्रूट को रिक्रूट के लेवल की जिम्मेवारी दी जाती है, उसके कोई बड़ा काम नहीं कराना हमने। जी सर, इसलिए आपको वहां पे बहुत डिफाइंड लाइंस बोलनी पड़ती है कि मैम ही हैज बीन ट्रेन्ड फॉर 36 वीक्स, he has been trained for that purpose only. What is expected from him and how it is supposed to perform. Of course, when he joins battalion, the ground situation will differ from what is taught in the training. True. Because training is ideal. Yes. So with the passage of time, he learns. He is part of the team. He does not work in isolation or in seclusion. Yeah, he learns, sir, but he learns under the guidance of some leader. So that person guides him, gives clarity about his work. So there is hierarchy. Yes. A battalion is comprising of companies. Companies are comprising of platoons. Platoons are comprising of sections. A section comprises of 7 to 8 persons. It is authorized 11 persons, but 6 to 7 persons are present. That's how it is dealt. And he, as I said, we always carry out duties in pairs. There is buddy system. No single person is sent for any duty. This is the beauty of forces. Well taken. So he learns. That's how he learns. He does not go along with any new recruit. He goes with some senior. Somebody experienced. That's how he learns. That's how we learned. We were taught by our COs or our senior officers. When we joined battalion, there is on-the-job training. One goes for 6 months on-the-job training.
one officer, when he newly joins the unit, he undergoes 6 months on the job training. He performs duty right from constable to staff officer. That's how he learns. उससे बात हुई थी तुम्हारी? Sailing through every aspect of For 15 days, he performs duties of constable. Okay. That's An officer, he performs duty like that. For a month, he performs duty of a section commander, Havaldar. wow. That's how he rotate his job, and then he learn everything. He learns. So this is how it is done. Vipin sir and Neeraj sir. Neeraj sir, we'll begin with you. आपने पहले hand raise करा था, and then we'll come to Vipin sir. Yes, Neeraj sir. Yeah, thank you, ma'am. मैं रोतेला सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो सर बोल रहे थे कि शायद हमें बिग पिक्चर हर कहीं या उसी हिसाब से हम हर कहीं दे नहीं सकते हैं, और जो गिरी सर ने बोला, मैं थोड़ा आगे चलना चाहूँगा कि हर सिचुएशन में हम इस चीज़ को नहीं बोल पाएंगे कि हम बिग पिक्चर नहीं दे पाएंगे, और अगर हम वैसे चलेंगे तो हम बहुत रिजिड हो गए हैं, और अगर हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे आज, तो शायद टाइम हमें ओवर रन कर जाएगा। मेरे को ये लगता है कि हमें टाइम के साथ धीरे धीरे परिवर्तन अपने आप में लाना चाहिए, पहले अपने में लाना चाहिए, और शायद अंडर कमांड में भी ये चीज़ लाने की ज़रूरत मुझे लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जैसे पंजाब में जैसे कल घनश्याम सर ने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है हमारे को ड्रोन्स और ड्रग्स का जो इशू है उसको लेके। तो अगर हम कहीं ना कहीं अपने कांस्टेबल को ये नहीं बोलेंगे कि ड्रग्स पकड़ना कितना जरूरी है, या उसको बिग पिक्चर हम नहीं देने की कोशिश करेंगे, तो समझेगा नहीं उस इशू को कि हाँ इसका ओवरऑल जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है कितना बुरा हो सकता है। कल को वो ड्रग अंदर जाके, चाहे बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे जाके उससे घर में भी पहुंच सकते हैं, उससे घर को भी नुकसान कर सकता है। तो समाज के लिए कितना वो है, तो उसकी सीरियसनेस लाने के लिए मुझे लगता है हमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज़ वेरी करेगी, कहीं हमें क्लैरिटी की जरूरत पड़ सकती है, कहीं उसका क्लैरिटी की जरूरत ना पड़े। बट अगर हम इसी बात पे रहेंगे कि नहीं नहीं हम ऐसे ही हैं और हायरार्की ही है, हमें बिल्कुल वैसे ही रहना है और 2-2 की ही बात करनी है, नीड टू नो पे ही रहना है, तो मेरे को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध रहे हैं और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। टाइम हमें आने वाले समय में टाइम हमें पीछे छोड़ के जाएगा, और छोड़ भी रहा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू मैम। Good, great perspective from your side. Ma'am, one more thing. Yes, sir. Sir, एक मिनट में विपिन सर का hand raise है. May I please allow him first, and then we'll come to you, Ashwani sir. विपिन sir, please. नीरज ने मेरी बात लगभग पूरी कर दी। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि गिरी सर से मैं थोड़ा सा उस पे वेरी करता हूँ कि हम जो है जस्ट उसको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। The time has changed now. Earlier it used to happen कि आपने किसी जॉनी को या for that purpose अपने अंडर कमांड को बोला कि आप ये काम कर दो, अगले फॉर एग्जांपल आपने बोला यहाँ गड्ढा कर दो, शाम में बोले यार इसको भर दो। Those were the days they will not ask any question कि सर क्यों करवाया था। Now the time has come, they will ask the question कि सर आपने ये करवाया था, फिर जब ये बंद ही करवाना था तो क्यों करवाया। You will have to justify. So जो बिगर गोल है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, ये अभी ओपन एंडेड ये नहीं चल सकता। The time has changed and we will also have to change accordingly. That was. Thank you. Really glad to know about that human concern coming into your minds as well, sir. A good sign. Yes, Ashwani sir, over to you, sir. Ma'am, gaining clarity is important if you understand in the way of level of officers you are interacting. Say, Okay. I paint an example. We had a hierarchy organizational system like frontier headquarters, then DIG headquarters, and then battalions. So government of India has got a very big picture regarding the relationship with Bangladesh. So IG knows the big picture
and DIG also knows that big picture. ठीक है नहीं? And there can be two different scenarios also. We had already worked, the scenario has changed. The relationship scenario has changed. Initially, we had certain other policies, especially it's an example with Bangladesh. Government of India has a policy, certain policies to deal with Bangladesh. Now that government policy has changed and that has to be implemented. Battalion level pe niche section, platoon and companies were directed to respond as per previous policy. Yes. You understand that? True. Now battalion commandant know that. So when these things come, the clarity from frontier headquarters to all DIGs should be briefed, and from DIGs to battalion commandant should be properly briefed. Here, the gaining clarity is very important. Now, once the commandant comes to know what is required from the battalion, he can pass the directions and set the goals with clear direction to their subunits and give them clarity on that. This is, I just want to say, the clarity at different level should be maintained. True. And to whatever extent if it is not harmful for the larger purpose, then I think it should be given, and it is always much advisable and seeked upon if we are giving a clarity to whatever extent we can. Very, very well contributed, sir. That's true. And with a perfect example कि कैसे वो policy change हुई, सच में उसके बाद तो temperament में change आना ही पड़ेगा, मतलब the way you are dealing with people. So that's a perfect example for this. Moving forward, this we've already discussed, wherein you need to think upon a goal that you have narrated to your team, and how many people in your team exactly agree to the goal, and they were buying the thought the way you have put it across. So this is a question which I've asked in the previous batches as well. And I know there's a structured answer to it, because wahi sir wali baat ki matlab there is no question of why also at time in your organization, the culture that you are breathing into. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि गोल एग्जैक्टली समझ ना आए बंदे को. द वे यू आर डिफाइनिंग इट इज सो मच स्टेप बाय स्टेप दैट people do agree and understand that. So most of the time it comes from 81 to 100%, but still if there is a different view, please, I would like to hear that. Ma'am, if you allow. Yes, sir, please. Before we proceed further, my name is Sujay. Okay, sir. Good morning, sir. Views pouring in are very interesting. But what I feel, in our organization, our goals, aims, and objectives are very clear and very well defined. To achieve those goals, aims, and objectives, we are given required training. So we are well trained as well. But under a given situation, whether an individual is going to contribute or excel up to the level he is expected to, it will depend on the level of his conviction and commitment towards the goal or the objective or the aims which have been set for him. So unless and until he is having that level of conviction and commitment towards the organization, the aim, objective, and the goal, which is tasked to achieve or attain, those things are impossible. Yeah, it will vary from person to person depending upon his level of conviction. Yes, level and commitment as well. Commitment as well. Sir, यहाँ पे ना agreement की बात वैसे हो रही थी, मतलब if you can just go through the question once, think about a goal that you have for your team. Now think how many people in your team agree with the goal exactly the way you have put it. तो सर वो agreement, commitment है, conviction है, obviously वो तब आएगा जब आपका agreement है. It will depend, ma'am. In BSF, we just cannot think this way. Yes, I know. Because our targets, goals, and aims, objectives, they are well defined. Well defined, true. Many times it happens that we are given aims, objectives, or goals by the higher headquarters. We are not there to decide what kind of goal I am going to pursue, what aim I have to achieve, and what objective I need to push our men to achieve. So we are at times, or rather many times, we are the followers, even though we are commandant, but we are followers. We are following the orders of higher headquarters. Our DG, Director General, is sitting in Delhi. If he passes an order, then that becomes our aim.
and we become the followers. We are basically the executive commanders. Yes. We have been given tools as men. Those men are trained, but those men we can push only if they have the sense of conviction, they have the sense of commitment, or rather a sense of commitment to achieve the orders given by the worthy DG of the force. This is all what, in fact, was coming in my mind. Yes, yes, sir. At that level, there is no question of disagreement. It's obviously, जैसे आपने कहा कि वो order है, तो वो आपका aim भी बन जाता है. You have to follow that. But sir, at certain level, higher authority level, वहाँ पे कहीं पे मतलब agreement की बात जरूर होती होगी. मतलब as you told कि कुछ लोग मिलके वो policy या उस strategy को decide करते हैं, which is then conveyed to the lower levels, and then it becomes an order or a command, and people have to follow that. But while you're devising those policies, you have certain people जहाँ पे brainstorming भी होती है, जहाँ पे शायद उनके different aspects discuss होते होंगे, आप लोग करते होंगे, मतलब जब भी आप, because you're leading the team, तो कहीं कोई course of action लेना है, तो does it happen that way कि there is a group of seniors officials जो मिलके ये चीजें decide करते हैं, then there is a person who's disagreeing to one thought, फिर दूसरे का भी thought आता है, तो वो brainstorming वाला aspect किसी level पे तो होता होगा सर? Of course, it happens at BSF headquarters level, our frontier headquarters, sector headquarters levels. Even at battalion headquarters, we have our team of officers. We go through this kind of a rigor. We go through the brainstorming sessions, and we come to a conclusion or unanimous decision that this should be the path we have to follow. This should be the course of action. We decide. But eventually, when a particular kind of an operation is to be executed on the ground, we never worry that aim, goal, or objective. It is to be disseminated down to the level of the constable who is going to be there on the ground to execute the orders. So this is the difference between the corporate and the force. Yes. और फोर्स में जहां तक मैं देखती हूँ सर, वर्टिकल लेवल पे you do not have that agreement disagreement situation, but yet at we cannot afford that. We cannot afford that in operational scenario, ma'am. If we start discussing with our men whether they should enter the house or not, and if we start honoring their advices or their wishes and will, then we are going to be giving birth to failures, nothing else. So that happens only at horizontal level. In most of the corporates also, sir, it is that the strategic decisions are taken by the board members. So then it is conveyed down. So that is how exactly things happen otherwise also. But हाँ, जो आपके यहाँ rigidness है, that is not followed in the corporate world. That's true. क्योंकि वहाँ पे temperament of work is different. The kind of people that are there, that is also very different. So basically, you are living in a democratic kind of setup. You are following all the democratic values in corporate world. But some of the democratic values, they are basically suppressed in our organizations. Because that is required because of the nature of work that you are dealing with. So in the face of the bullet, you cannot afford to listen to everyone because you are the commander on the ground. You have to take decision, taking into account the larger picture. Yes. What is the ultimate aim you intend to achieve? So all the commanders, they generally think of the larger goal, not of the petty issues. And an individual, he may not be very comfortable in entering into a room while launch of an operation. But he needs to be pushed. You have to enter and you will enter. Because on his back, there is another person kept as reserve. The moment he enters, he will gain time to enter, launch, and disseminate or nullify the individual who is hiding there as aggressor. So in our parlance, we cannot afford that. I feel corporate is more rigid than us. At times, I also feel, sir, what you are feeling. Yes. Because nowadays, these people, they are under more stress than what we are. Yes, we are considerate to our men. In most of the management philosophies, basically, they have evolved, emanated from the forces only, sir.
True, sir. Exactly. But now we are being rather दीपाली जी, इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, मैं बड़ा हम्बल सा सबमिशन है, जो आर्मी या ग्लोबल जितने भी फोर्सेस है, लीड फोर्सेस है, उसमें देखेंगे व्हाट एवर मैनेजमेंट पॉलिसीज दे हैड इवॉल्व over the years with their experiences, now they are being copied by all the business houses, business schools, even MET probably they have also borrowed or taken some of the philosophy from their own way. Now we the core personnel, we are being taught, it is a kind of refresher course for us. We might would have forgotten lot many things during the course of performance of our duties. It is not only about forgetting, sir. It's about like when there is a equal platform wherein we have exchange of ideas. तो हमेशा thought और regenerate होते हैं नहीं, and then you get a new fresh perspective about things. Yes, yes. Maybe yes. that change the outlook towards viewing a particular thing. जैसे Yes, मुझे yes. खुद को यहाँ पे सर गिरी सर और नगेन सर की perspective में थोड़ा difference दिखा, and then I could relate it कि हाँ मतलब human temperament भी कहीं ना कहीं role play करता है. Which is हमारे यहाँ मैम बेसिकली ना टेम्परामेंट वेरीज फ्रॉम द it is varies because the individual he is exposed to different kind of work scenarios. Giri sir most probably if would have been in most of the times in J&K, he will have a different kind of perspective. If I have remained most of the times in Bengal, then I will have a different kind of perspective. If someone has spent most of his time in Jammu and Kashmir and Rajasthan or Gujarat, he will have a different kind of perspective because demography changes, border scenario changes, problems and situation change. So individual never remains the same. Yeah. If you talk to two different commanders, you will find or get two different kind of perspectives. You will never have unanimous kind of view. Thank you, ma'am. Welcome, sir. Nagendra, sir, you raised your hand. मैडम इसमें जो आपका ये सिचुएशन है कि हाउ मेनी पीपल इन योर टीम एग्री विद द गोल एक्जेक्टली द वे यू पुट इन, इसमें मैडम सबसे पहले तो हमारे पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, वी डोंट हैव एनी टूल वेयर वी नो कि कितने परसेंटेज लोग हमसे एग्री हुए कि नहीं हुए. उसका बेसिक जो रीजन है कि हमारे यहाँ टास्किंग होती है एंड टास्क आर बीन मेंट टू बी कंप्लीटेड irrespective of whether somebody likes it or not, number one. Number two, हमारे पास में मैकेनिज्म तो है कि हम पूछते हैं कि कोई शक या सवाल, ना हम एंटिसिपेट करते हैं कोई शक सवाल पूछे और ना वो बोलता है कि मैं कुछ शक सवाल पूछूं, इवन तो वी कीप ऑन एनकरेजिंग कि कुछ करें. बट जब वहां से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो वी अज्यूम प्रिज्यूम कि 100% एग्री विद देम. अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक कमांडेंट में गया यूनिट में, आई स्टार्टेड रनिंग एंड एवरीबडी नोज कि सीओ साहब को दौड़ना बहुत पसंद है तो पूरी बटालियन दौड़ने लग जाती है. इफ दे नो कि कमांडेंट सिंग्स वेल एंड ये लाइक सिंगिंग तो पूरी बटालियन गाने लग जाती है. नाउ हाउ आई कैन नो कि एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बिकॉज ग्राउंड में तो वो करके दिखा रहे हैं जो मैं चाह रहा हूँ एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन दैट फील्ड. मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स का जो सिस्टम है, कल्चर है, वहां पे ये जो एग्री करना और या डिसएग्री करना, उसका परसेंटेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं पिछले 3 साल से इस बटालियन में हूँ, मेरा सिर्फ एक पॉइंट हर एक कंपनी में रहता है. मैं कहता हूँ आपके पास में रोल कॉल रजिस्टर है, नॉट ए सिंगल मैंने कभी देखा है जहां उसने लिखा हो कि किसी जवान ने एक पॉइंट प्रोजेक्ट किया है. और जब मैं उनसे पूछता हूं तो 10 अपनी कमियां बताते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे को ये परेशानी है. लेकिन जब 1-to-1 उनसे पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं बताते. सपोज सम सीनियर अथॉरिटी केम, डीआईजी आते हैं, आईजी आते हैं और पूछते हैं हाँ भी कोई परेशानी वगैरह है, तो कुछ परसुएशन के बाद में वो बोलेगा ये प्रॉब्लम है. तो जब उनसे पूछा जाता है कि ये चीज तो आपको डेली रोल कॉल हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है, आप क्यों नहीं बताते हैं, तो साइलेंट मोड में चले जाते हैं. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट तो है, अब ये रिलेवेंट है कि नहीं है फोर्स में, बट हमारे पास में टूल नहीं है ये जानने का कि वेदर हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल एग्री और डिसएग्री विथ मी. बट फैक्ट रिमेन्स कि जो भी कमांडर चाहता है ऑपरेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली,
whatever way वो चाहता है, ग्राउंड में चीजें हो जाती हैं और दिखता है कि ये सबने इंटरेस्ट के साथ में किया और इंटरेस्ट के साथ करते भी हैं. They mold themselves with the requirement. और जहां मैं वहां पे गिरीश सर की बात पे आता हूँ, because we are trained to like that only. तो फिर इसमें जो परसेंटेज जो है मैटर करता नहीं है, क्योंकि जब टास्किंग हो जाती है तो 100% जो है एग्री हो जाते हैं उस पर. सही बात है सर, ट्रेंड भी वैसे होते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी ऐसा है कि इसी तरह की चीज प्रमोट होते वो देख रहे हैं चारों तरफ, तो फिर that is how they maybe sell. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes. I want to add something. बिल्कुल I sir. have a different take here. Disagreement, agreement खूब होते हैं forces में भी, depend करता है कि what is the level where the things are being discussed, where the goals are being discussed. For example, if you are holding a force commander level conference, so every nitty gritty is discussed. Everybody is given a chance. They discuss everything. There are disagreements. There are discords also. And then the matter is referred to the committee, a board, to decide. So it shows that there are disagreements, but it cannot be quantified like you have projected, 20 to 40%, 41 to 60%. Similarly, the previous speakers were expressing कि अब एक जवान है, उसको ऑपरेशन में जाना है, तो उसको क्लैरिटी तो दी ही जाती है, उसको पूरा ब्रीफिंग दी जाती है. What will be the risks? How you have to proceed? What is terrain like? What is the sensitivity involved? What is the profile of the Naxals? What are the influences of the Naxals? The terrorists or the miscreants or criminals? What? It varies as per the nature of the border here. तो वहां तो क्लैरिटी बिल्कुल दी ही जाती है और उसको फुल पिक्चर भी दिया जाता है, उसको ये भी डे टू डे ब्रीफिंग दी जाती है एवरी डे कि व्हाट इज द सिनेरियो लाइक, हाउ मेनी नक्सल्स आर likely to infiltrate, how many groups are operating in this particular region. तो वो बताया जाता है, गोल का उसको पिक्चर दिया जाता है. ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता है. अगर नहीं दिया जाएगा तो द रिजल्ट वुड बी डिजास्ट्रस. उसको पता ही नहीं है कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, तो वो फिर हाउ विल ही प्रोसीड, हाउ विल ही एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स. तो ये डिफरेंट लेवल पे अच्छा, जवान के मन में भी डिसएग्रीमेंट होता है, बट ही कांट अफोर्ड टू एक्सप्रेस हिज डिसएग्रीमेंट बिकॉज द ऑपरेशनल गोल्स हैव टू बी अचीव्ड एट एनी कॉस्ट. देयर आर नो इफ्स एंड बट्स. तो ये मैटर करता है मैम कि गोल्स कैसे हैं और कहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, कहाँ पे ब्रीफ किए जा रहे हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच सर. दैट इज राइटली सेड कि कंटिंजेंट टू सिचुएशन होता है, जैसे नगेन सर ने कहा कि वो बांग्लादेश वाला सिचुएशन था वेयर इन इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, तो वहां क्लैरिटी अपन नहीं दे सकते थे. लेकिन जैसे कुमार सर ने कहा कि वो नेट फ्लाइट एरिया में जा रहा है, डेफिनेटली इन दैट केस यू विल बी ब्रीफिंग हिम वेरी वेल. क्लैरिटी बहुत हाईएस्ट लेवल पे होगी. मुझे लगता नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा कहीं और क्लियर डिफाइंड गोल्स या इंस्ट्रक्शंस होते होंगे, बिकॉज दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो डेफिनेटली यू हैव मच प्रिसाइज. यस सर. लेट मी एक्सप्लेन. जी सर. मैम मैं अंतर्यामी सर की बात को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा विद एग्जांपल्स. से मैम अ पर्टिकुलर स्टेट में नक्सल प्रॉब्लम आई एंड नक्सल प्रॉब्लम को मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टेट में नक्सल प्रॉब्लम अराइज हुई. ए मीटिंग इज हेल्ड इन MHA कि वहां पे कौन से फोर्स को भेजना है. These all deliberations, agreement, disagreement, and everything is discussed in MHA meeting. Okay, now they had decided that BSF has to be inducted in this area, phase 1. You understand that? अब MHA का ये डिसीजन हमारे लिए हुक्म है BSF के लिए कि हमें नक्सल एरिया में जाना है. We are very clear. This is task about that. अब FHQ में एक मीटिंग होती है, हमारे फोर्स हेडक्वार्टर में मीटिंग होती है. ओके, हमें टास्क मिल गया है कि हमें फलाने स्टेट में 15 बटालियंस भेजनी है. दिस इज टास्क गिवन, तो वी आर वेरी क्लियर अबाउट. नाउ द टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड. FHQ के ऑप्स ब्रांच में डिस्कशन होगा एट दैट लेवल, उस हॉरिजेंटल में
ठीक है नहीं, जितने भी ऑफिसर बैठेंगे, कितनी बटालियन हमें किस फ्रंटियर से निकालनी, ठीक है नहीं, उसमें एग्रीमेंट भी होगा, डिसएग्रीमेंट भी होगा, सारी चीजें होंगी, सबके पॉइंट ऑफ व्यू ले जाएंगे उस मीटिंग में, यू अंडरस्टैंड दैट। एंड उसके बाद फाइनल हुआ कि ओके, ईस्टर्न फ्रंटियर से 7 बटालियंस निकाली जाएंगी और वेस्टर्न फ्रंटियर से 5 बटालियंस निकाली जाएंगी। नाउ दिस इज एन ऑर्डर फॉर द ईस्टर्न फ्रंटियर कि 7 बटालियन आपने देनी है, वेस्टर्न फ्रंटियर के लिए 5 बटालियन आपने देनी। नाउ दिस इज clear order for those frontiers. Now that frontier will decide. That command, I just forget one command, Eastern Command. Western Command. Now Eastern Command will set, the command will set all the exercises are done, agreement, disagreement, clarity, what the policy is there. उस level में ये सारी चीजें होंगी, and they decided finally कि this battalion, this battalion, this battalion, this battalion has to go in next areas. And now when those battalions are decided, it is order for them, very clear order for the battalions. Now battalion commander will propose his plan कि मैंने किस तरीके से जाना है, कैसे कहाँ जाना है, ये प्लान अपने लेवल में करके वो आगे अप्रूवल के लिए once it's approved, ये ऑर्डर उन कंपनियों के लिए हो। अब उसके बाद जब एरिया में इंडक्ट हो गए बटालियन, अब बटालियन में एक जगह पे COB स्टैब्लिश, the battalion commandant will sit with his staff officer and discuss all these things, agreement, disagreement, clarity, everything is cleared, and बोला कि ये वाली कंपनी आगे जाएगी और ये वाली कंपनी पीछे जाएगी. Now these are the orders for that company and other companies. सारे companies के लिए order हो. So this is how the things work in BSF, and everything is taken care of, but at different horizontals, and the clarity is in verticals. That's all. Clarity is in vertical, sir, and discussion is at horizontal level. That's how. एक sentence. जैसे वो नीचे जाता है तो वो question खत्म हो जाता है, मतलब about discussion and all. That becomes a hard order as it moves. Yeah. Through the vertical. Madam, senior most boss is always right. True, sir. Whatever decision, he take decision. That's all. अगर एक लाइन में मैं बोलूँ एक सेंटेंस में, तो हमें बेसिकली ट्रेनिंग से ही ऑलराउंडर बनाया जाता है और हमारे नेचर में डाल दिया जाता है एडाप्टिव, ताकि किसी भी सिचुएशन को जो है हम एडाप्ट कर लें। ये क्रक्स है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक सर। गिरी सर ने भी इनिशियली यही चीज एम्फसाइज करी कि वी आर ट्रेन्ड इन दैट वेज, और कैसे आप अलग अलग एरियाज के लिए आपको डिफाइंड टाइम पीरियड तक आपको वो एक्सपोजर दिया जाता है, तो इट गेट्स इनटू द ब्लड। तो आई एम वेरी श्योर कि वो ट्रेनिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है आगे की सारी जर्नी के लिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डिलीवरिंग रिजल्ट, हमने गेनिंग क्लैरिटी की बात करी थी इससे पहले, और वहां पे हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव आए अबाउट किन सिनेरियोज में बहुत क्लियर चीजें होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, हाउ इट इज चेंजिंग फ्रॉम लेवल टू लेवल, हाउ इट इज चेंजिंग फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड हाउ इट इज चेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बिकॉज अल्टीमेटली इवेंचुअली वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर्स, तो और सिचुएशन जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो दैट इज हाउ वी गॉट एन इनसाइट अबाउट गेनिंग क्लैरिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू मेजर इंडिकेटर्स। अगेन मेजर इंडिकेटर्स जो है सर, यहाँ पे हम दो तरह के इंडिकेटर्स की बात करेंगे, लैग एंड लीड इंडिकेटर, एंड वील सी कि क्या वो राइटली ट्रैक्ड है हर समय या नहीं। So moving forward towards lag and leak indicators, ये एक बहुत interesting वाला portion है इस workshop का। So I hope yes, Giri sir, do you want to say something? There was a thumbs up hand. Actually, Mr. Ashwini was asking for a break, so I did thumbs up to that. Okay. So I just forgot and I just got carried away in the flow क्योंकि इतने अच्छे contribution थे आपके. So definitely, sir, we'll I'll just ask Tanvi and. Dipali madam, we can go for a short break right now. Then I guess we can resume back at 10:50. Okay, fine. Yeah. That would be perfect. Okay. So we'll meet at 10:50. Thank you so much.
मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा कहाँ स्पेंड होता है, क्या गोल कम्युनिकेशन हम ज्यादा कर रहे होते हैं या प्लानिंग हमें ज्यादा टाइम टेकिंग हो रही होती है, और मे बी वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन रिमूविंग बॉटलनेक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि अगर हम बॉटलनेक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो मे बी हमारी प्लानिंग थोड़ी वीकर है. सो दिस परसेंटेज वी नीड टू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि हम किस चीज में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स और डेवलपिंग टीम्स और असेसिंग प्रोग्रेस. सो आई वुड रियली लाइक टू गेट सम इनसाइट फ्रॉम यू पीपल कि आप मुझे बताएं कि सर ज्यादा टाइम आपका किस चीज में स्पेंड होता है जब आप एक गोल के लिए कुछ इनिशिएट करते हो. जो आपने अभी हमारा वही गोल जो हम उसकी बात कर रहे थे, ऑल्टीट्यूड वाला जो गोल था जहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना था उस ऑल्टीट्यूड पे, तो मेजॉरिटी टाइम सर आप किस पे देते हैं, इसमें से किस एस्पेक्ट पे? मैम मैं दिस एस्पेक्ट मतलब हमारी सबसे ज्यादा टाइम लगती है प्लानिंग में. प्लानिंग, और वो स्ट्रांग हो गई तो वैसे भी बाकी सब चीज कवर हो गई, क्योंकि सर आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला कोई इशू है ही नहीं, बीच के वाला नहीं होता, स्टेक होल्डर वाला नहीं है, राइट? डेवलपिंग टीम इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड मच, दैट्स ट्रू, एंड दिस इज a very correct answer. I hope the entire cohort will agree to this ki planning is the only thing. The thumb rule is that 1/3 of the available time should be for the recce and planning. This is the thumb. और सर if I guess it right, let me just guess, शायद सबसे कम टाइम आपको डेवलपिंग टीम में करना पड़ता होगा उस समय, क्योंकि आपकी ऑलरेडी ट्रेनिंग बहुत साउंड और स्ट्रॉन्ग होती है ना? शायद दैट वुड बी द लीस्ट टाइम स्पेंट थिंग. देन सर बैटल प्रोसीजर भी बता दें सर. जी सर, क्या चीज? बैटल प्रोसीजर भी बता दें सर. टाइम अरे मित्र रहने दो, बैटल प्रोसीजर एक अलग लेक्चर है. बट वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट. ये जो मैडम लास्ट में था ना, अभी बैक स्लाइड साइमल्टेनियस लास्ट स्लाइड में क्या था? ये था सर बॉटल. ये डेवलपिंग टीम जो है ना, हाँ, ये डेवलपिंग टीम करते करते और काम भी खत्म हो जाता है, टीम बन भी जाती है और पूरी होती नहीं है, और काम भी हो जाता है, टास्क भी पूरा हो जाता है. और ये सर डे 1 से आपके शुरू हो जाता है, मतलब ट्रेनिंग एंड ऑल यू आर गिविंग ऑलरेडी टू योर, इसलिए ऐसा कि सबसे कम आप वहां स्पेंड करते हैं. देन व्हाट इज योर टीम मीटिंग फोकस? लेट्स स्किप दिस पार्ट, क्योंकि वही हमने जो पीछे में डिस्कस करा था, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सर ये जो ग्रिड है ना, ये बताता है कि व्हाट इज योर टीम रिदम. अगेन इट इज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दैट हाउ ऑफन डू यू थिंक स्ट्रैटेजी, कितनी ड्यूरेशन होता है और व्हेन. And as you all rightly agreed to one point कि planning आपके सबसे ज्यादा important और crucial area होता है, तो planning के time पे आप rhythm कैसे बनाते हैं कि कितना frequently आपको अपनी strategy define करने के लिए meet करना पड़ता है. What are your lead indicators? How do you smoothen your interdependency, क्योंकि linked होते हैं लोग. How do you remove the bottleneck? And how do you recognize the achievements? So for now, though we are not doing this team rhythm, but this instrument helps us in setting up the time कि हम किस में कितना time दे रहे हैं और कितना often दे रहे हैं, and we can introspect कि कहीं क्या ज़्यादा time देने की ज़रूरत है. जैसे अभी नरेंद्र सर ने initially इसी सेशन में बोला था कि times are changing now, it is very much required कि हम उन लोगों का भी aspect सुने जिन्हें हम हमेशा ऑर्डर देते आए हैं. तो आई मीन मे बी दैट इज नीड ऑफ द आवर. कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा टाइम इसमें भी स्पेंड होना चाहिए, या वो रेपो बिल्ड करने में. पर मैंने खैर सुना है सर आप लोगों के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि वो टफेस्ट ऑफ द टफ सिचुएशन में साथ रहे हुए होते हैं, तो अपने आप टाइम के साथ वो रेपो इतनी स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाती है दैट कनेक्ट वी कैन सी इन दिस these sessions as well. And plus एमिटी में भी बहुत सारे लोग आर रिटायर्ड पर्सोनल फ्रॉम these armed forces, so I have seen them personally also कि उनके पुराने कोई बैचमेट या कहीं कोई मिलते हैं तो they are like on top of cloud 9 पे होते हैं वो. तो that is very strong, क्योंकि आप बहुत harsh situation में होते हैं. तो this is just an instrument to introspect कि कहाँ पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे आप कम कर रहे हैं जहाँ पे आपको और करना चाहिए, if at all कोई पॉलिसी. देन ये रिफ्लेक्शन शीट है सर, जिसमें हम उसी पुराने वाले रिदम की बात कर रहे हैं, वेयर इन वी हैव आइडेंटिफाइड कि अगर हम बहुत ज्यादा टाइम स्ट्रैटेजी प्लानिंग में देते हैं, जो कि आपके केस में होता है, तो इज इट कि उसकी वजह से हमारा
मे बी डिले ना हो रही हो चीजें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है। अगर स्ट्रैटेजी बहुत लंबे टाइम तक हम सोचते चले गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दो आप लोगों का सब बहुत प्री वेल डिफाइंड होता है कि आप स्ट्रैटेजी का भी एक लिमिटेड टाइम होता है, बट जैसे सर ने कहा कि ट्रेनिंग करते करते तो पूरा सब निकल गया, हो भी गया और खत्म भी हो गया। हमारे यहाँ एक चीज है, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं कि हम प्लानिंग करते रहते हैं, साथ में उनको पता रहता है कि कब काम शुरू करना है, तो ऑटोमेटिकली काम शुरू भी हो जाता है, इसलिए टाइमली फिनिश हो जाता है। एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा यहाँ पे काम आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। Well said, sir. So this was reflection sheet, and talking about the organization culture, what can you do on everyday basis to strengthen team culture, behavior, to be more result oriented? So sir, as we all know that it's already a proven and established fact कि आपके यहाँ पे टीम कल्चर बहुत स्ट्रांग है, और एक जो बहुत रिफ्लेक्टिव पॉइंट निकल के आता है जो मैं भी ऑन द सर्फेस करके आपको बता सकती हूँ, मुझे लगता है शायद वो बॉन्डिंग बहुत हाई इसलिए रहती है क्योंकि आप बहुत टफ सिचुएशन पे यू आर वर्किंग टुगेदर, है ना। कोई वॉर हो रहा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पे आप जिन लोगों के साथ एक बार काम कर लिए, मुझे नहीं लगता मतलब दे आर मोर देन फैमिली टू यू देन, क्योंकि वो वहां पे आपके साथ हैं। इज देयर एनी अदर पॉइंट व्हिच यू वुड लाइक टू पुट अप, जो बता सकता है कि टीम कल्चर क्यों स्ट्रेंथन बहुत ज्यादा हो जाता है, व्हाई देयर इज अ वेरी पॉजिटिव कल्चर इन बीएसएफ, क्या रीजंस हैं उसके, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग व्हिच आई कैन वेरी वेल मेक आउट? क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है ना सर, आप तो बहुत हेट्रोजेनस है अदरवाइज। यस सर। The worse the scenario, the better the bonding. Only in the worst scenarios, the subjects like esprit de corps or comradeship can be seen, and those are always cherished throughout the life. So we all, this forum, have gone through those phases, not once or twice, many a times. It is war culture. Yes. Yes. And as yesterday also I was saying, it is an officer-oriented force. Officers lead from the front. They lead the troops. They are with the troops. So that's how bonding is made. Those whom we have worked with. सर शायद एक फैक्टर होगा ट्रस्ट वाला, मुझे जो लगता है कि मतलब Trust has to be there. Without trust, nothing can happen. So that is a very strong bonding in the team. और सर जो जिस तरह से आपने कहा कि there is no question of why, और subordinates बस सुनते हैं आपके ऑर्डर and then it becomes a command for them and they follow that. तो वो सच में When I am with them, there is no question of why. Yes. मैडम, इसमें जो है एज ए कंपनी कमांडर जब हम अपनी सर्विस की शुरुआत करते हैं ना, तो उनके साथ हमें एटलीस्ट 4 से 5 साल, कभी कभी 6 साल, किसी को 7 साल भी मौका मिलता है। तो उसमें 7 साल के दौरान जिस कंडीशन में भी वो रहते हैं और जहां भी वो रहते हैं उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, उसके साथ हम 24 आवर्स रहते हैं। जो चीज भी वो फेस करते हैं वो हम भी फेस करते हैं। जो भी कठिनाई हो, दिक्कतें हो, परेशानियां हैं, वो जितना वो मन की फेस करते हैं उतना हमें भी जो है फेस करना पड़ता है। तो एक बॉन्डिंग जो है 4-5 साल के अंदर वो मतलब कि जुड़ जाती है। वो हमारे साथ एक दूसरे से हम जुड़ जाते हैं और वो हमारा जो भी अंडर कमांड है वो समझता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे साहब से या जो भी उनसे हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे किसी भी तरह की बातें हो, वो अच्छी तरह से हमें गाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बॉन्डिंग जो है लगभग ऑलमोस्ट 4-5 साल 6 साल तक रहती है और उसके बाद फिर थ्रू आउट जो है सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती है, वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से जो है वो चीजें जो है जुड़ती जाती है और भी चीजें। Thank you so much, Arun sir, for that wonderful insight. Dipali ma'am, I'm so sorry to intercept, but I think we have to bring the session to an end now. I would just like to brief a little bit about adapting. Sure. That's the only thing which I would like to conclude with. तो सर ये लास्ट हमारा पैरामीटर था जहाँ पे हमने अडेप्टेशन की बात करने वाले थे, but I'll just brief you about this thing. So adapting the feedback which is generated throughout the journey and making iterative changes in the goal, that is very much required. और आपने बहुत अच्छे से सर ये बताया, अभी अरुण सर ने लास्ट सबमिट करा था जहाँ पे उन्होंने कहा कि 4-5 साल में आप रहते रहते इतना ज्यादा अडेप्ट कर लेते हैं लोगों के साथ कि उनकी लाइक्स डिसलाइक आपको पता होती हैं एंड आपको भी बहुत चीजें उनकी नहीं पसंद होती हैं, दैट ऑल्सो यू ट्राई टू
you get adapted and those things become okay for you. So that is what is evaluated in the last parameter of this grid, wherein we are talking about the agility जो आपकी टीम में, how agile they are, how flexible they are. और अगर उनके अंदर high scope of flexibility है, again you can deliver better results, great result if they are agile enough and adaptable enough, जो definitely is a trademark of BSF personnel. So here is there are few statements जो बाद में जाके आप कभी time मिले सर तो देख सकते हैं, wherein you can tick in one of the option based on the statement, and हर statement के लिए एक marks associated है. In the end you can calculate your score and get to know कि आपका total score क्या आया. If you are somewhere above 30, that means the organization is highly agile and adaptable, and if you are less than 30 तो less agile and adaptable है. So it's an interesting thing to do, वो आप देख सकते हैं करके. And these are few of the ways, 5 ways through which आप अपनी agility, organization की agility को बढ़ा सकते हैं, team की agility को बढ़ा सकते हैं, by focusing on assignment, giving them vision and strategy, increasing interdependence, action oriented things need to be narrated, and a collaborative leader you need to be. So that was the entire grid of how you can deliver best of the results. And with that, I'll sign off. And thank you so much for being such a patient audience and listening to me and equally contributing so interestingly to the entire thing. For Z Kit bomb, so I'll always remember. So thank you so much, all of you. It was really, really interesting. Really nice. Thank you. Thank you so much, Dr. Dipali. Thank you for that very highly interactive session. And I'm sorry I had to cut it short because we have other sessions lined up as well. But the insights were so interesting and it had to be carried over. So thank you so much, ma'am, for the session. Sirs, gentlemen, we will take a 10-minute tea break right now. आप लोग थोड़ा चाय पी लीजिए, थोड़ा coffee पी लीजिए. We'll take some time before we move on with our next session, giving effective feedback. So I think we can resume back at 12:40. Soumya, good morning. Yes, sir. Good morning, Gurinder sir. I have some operational commitment now, so I will not be attending afternoon session. I will try to contact in my vehicle. Okay, sir. If the connection is good. Okay. Okay, sir. I will try try my best. Sure, in sure. vehicle, but it is urgent. I have to be there. Okay, noted. I'll ask the team to take note of this. Sure, sure. Thank you. Yeah. So, sirs, we'll resume back at 12:40. Please enjoy your tea. Yes, sir. Good afternoon. Okay. Okay, sir. ये जो आपके प्रीडिसेसर हैं विशाल सिंह, डीपी सिंह, सुप्रिया भगत सिंह, इनके फोटो का है? फोटो लगा रखा है सर हमने। कैमरा घुमाइए। कैमरा घुमा दे। ना रहने दीजिए। एक से तो रूबरू डेली हो ही रहे। अरे सबका फोटो लगा दिया, माला किसी पे नहीं चढ़ा है। अरे माला मत चढ़ाइए। नहीं, आजकल विशाल बाबू बहुत परेशान है, सब जो है सो उनके सामने में राजीव जी आगे बेस्ट कमांडेंट बोले बहुत परेशान। आ जाओ, पड़ोसी सर म्यूट है आपका, सर म्यूट है। ए अशोक तुम मत सुनो ये सब बात, तुम कहाँ आ गए बीच में? संजय चाय पी लो, संजय सर, अशोक चाय पी लो। अरे साला बिस्कुट भी खा चाय पी लिया सर, खाली हो गया सर, देखो काफी पी ली सर, खाली हो गया सर। हाँ साला अच्छा ये हाईली टेक्निकल हो गया बे। कभी चाय दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा, पीछे फेंसिंग दिख रहा है, साला गजब ढा रखा है, न्यू डिजाइन फेंसिंग। भाई हम भी लोगों को देख करके थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं यार। सारे भी हो रखे हैं। देखो अंतर्यामी जी बांग्लादेशी जो है आके हाइड्रोलिक जैक लगा के न्यू डिजाइन फेंस उठा देता है,
गेट खोल देता जैसे फाड़ दिया। Afternoon, sir. Good afternoon. Welcome back. Time is up. Good afternoon, Sanjay sir. Good afternoon, Antarayami sir. Ajay sir, very nice background. Yeah. Thank you. But This is your the coffee mug hide हो जा रहा है background के साथ, दिख नहीं पा रहा है चाहे अभी बीच में hide हो जा रहा है background के साथ. Okay. आपका inspiration क्या है ये background का? Yeah, this is a newly designed fence. This is a newly designed. अच्छा, okay. It's looking good, sir, on the background. Thank you. We'll start off with our new session, sir, gentlemen. हमारा जो new session है, it is on giving effective feedback. It is going to be taken by our very own Dr. Kirti Bala. Our इस session में, sirs, it is under the 7 talents of a leader के अंदर हमारा जो set direction वाला जो talent था, this session is aligned with that. In this session हमारा ये मुद्दा है कि you being senior leaders of the BSF, we discuss together through आप लोग के narratives पे, आप लोग के insights से, what you understand by feedback, whether it is in the context of providing feedback from your leadership position or you receiving feedback from the higher ups as well, what the feedback culture is at BSF. And we'll also explore a very interesting model called the STAR model to feedback, tool that I hope gives you new insights. So I won't take much of my ma'am's time. Dr. Kirti, welcome, ma'am, to the session. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, everyone. Welcome again after this tea break, and I was there in the last session as well. Such interesting deliberations, and then again, such interesting chats. I heard a few, I'm sorry, but I was setting up the device and I could. So, but yes, I was really overwhelmed with the energy, so that is wonderful. So welcome again. Last time बहुत ज़्यादा interactions नहीं हुआ पाया था. I guess today we'll have enough time to have lots of deliberations. So let's begin. Thank you, Soumyadev sir, for just introducing the session, briefing it up for me. And we are just talking about this giving effective feedback. So that's one interesting session. Achha, to begin with, how many of you think that effective feedback is important? कितने आप में से कितने लोगों को लगता है कि this is something which actually plays some major role? And it has become an intrinsic part of every organization, be it private sector or government sector. And even we are being sought feedback of every new equipment, every new items which are being procured. Apart from that, there are so many events or functions. We are being sought the feedback, and it gives the organizer a certain amount of insight in how their products, how their events, how their functions have progressed. So this is a very important factor in any organization. That's all, ma'am. बिल्कुल सर, थैंक यू अंतर्यामी सर, और बहुत जरूरी है, और सिर्फ ये कि फीडबैक देना और उसके आफ्टर इफेक्ट्स होना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जी सर. Regarding the giving feedback and obtaining feedback, ये बहुत जरूरी है मैडम. किसी भी वर्क का प्रोग्रेस वर्क किस हिसाब से हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, और क्या हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए बहुत जरूरी है. तो जी सर, बिल्कुल सर, जानना है क्यों? अगर जब सामने वाला पर्सन किसी भी प्रोजेक्ट पे एक्शन ले रहा है, काम कर रहा है, तो उससे ये अवेयर कराना कि हाँ, ये आपका पेस ठीक है, ये आप डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. एज पर द प्लानिंग, एज पर द वो मतलब आपकी प्लानिंग के हिसाब से आपका जो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके डिजाइन के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके थॉट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सारी चीजों का फीडबैक मिलने से उस पर थोड़ा सा ये मतलब ये पता चलता है कि नहीं हमारी प्लानिंग, हमारी एग्जीक्यूशन मतलब प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है. बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर, सिर्फ यही कि काम का प्लानिंग क्या, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं कि अगर अपन फीडबैक दे रहे हैं तो सामने वाला पर्सन जो है वो मोटिवेट होगा, मोरल अप होगा, या फिर अगर
now he'll get direction कि अच्छा मुझे यहाँ मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, अब इस तरीके से काम करेंगे, अगर मुझे फीडबैक मिला है तो अब मुझे थोड़ा सा अपना पेस चेंज करना चाहिए, तो इस तरह से मैं काम करूंगा तो शायद काम ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा हो पाएगा। क्या ऐसे भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं फीडबैक से? Dr. Kirti, good afternoon. Good afternoon, Bipin sir. In fact, giving or obtaining feedback is very integral part of any job schedule. It is as important for the present ongoing project, and at the same time, the lesson learned or on the basis of feedback received, you plan for a better implementation of similar kind of projects in days to come. So obtaining and giving feedback is very important. Definitely, sir, definitely. And both these aspects are important, obtaining and giving, and post that, what are the after effects? So that's very, very important. So with that, let's start with the session. So this is the flow of this session. So we'll be here for around 120 minutes. So we would begin with managing behaviors, different type of behaviors that we have. What comes in our way, I mean, when we start talking about feedbacks, how we obtain or deliver feedback. So what are the hurdles that we face? Setting up the context, and we'll be talking about strength and formality metrics. There's a metrics by Harvard Business Review, and what they talk about how feedbacks should be delivered. We would then be talking about STAR approach. That's a very interesting approach. We would definitely discuss that in detail. And then there's this a la carte, which talks about different feedback strategies. And then we'll talk, some few pointers about how we can develop this culture of feedback and looking ahead an action plan. So that's how in the course of this session, we would proceed. Now, to begin the session with, I'll want you to ponder, think for a moment, and then just share your thoughts about what type of leader you are. So when you manage a team, so do you give them a lot of information, or do you give them very little information? And at the same time, when we're talking about the team, do they typically keep speaking, tell you lots of things, or just quietly listen and then engage in their tasks? So what happens when we manage, when we start managing, your troops or your under commands? So what is the general behavior? Anyone? As per it is need to know basis, because as in force, all information cannot be passed to all members. So need to know basis, so we pass the informations. Yes. So that and then yes. So that is in terms of instructions. So instructions cannot be passed on, but when they are with whatsoever limited instructions they have based on the severity of, or maybe the task that they are assigned with, but when they are assigning or when they're working on that particular task, do you really share or keep sharing information or keep sharing updates or feedback with them? Yes, ma'am. There is a continuous vice versa flow of feedback and information is there. Otherwise, it is not possible to get the work done in smooth fashion. All right, right. And anybody else? What is the response of the team? Do they listen and follow, or do they actually share their own inputs or their own thought processes on what you have told them to? If you allow, ma'am, may I? Definitely, sir. Needed, sir. Yes, please. जो पहला आपका प्रश्न है, do you give them a lot of information or too little information? मैं एक एग्जांपल के साथ में बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर। आजकल ये सोशल मीडिया का वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रुप्स है जो टारगेट बन रहे हैं। तो एजुकेशन के एंगल से इनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जी। तो एग्जांपल है ये, इस एग्जांपल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंफॉर्मेशन देने पे। मोबाइल आप यूज ऑफ मोबाइल और फ्रॉड से बचें, इसके बारे में मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप्स को दी जा रही है। जी। And when you come to the second question, do they typically speak a lot and engage or stay quiet and listen? तो इसमें है they stay quiet and listen. They don't engage much. जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपस में जरूर बात कर रहे होंगे। But when it is between me and him, me and them, तो
बहुत कम एंगेज कर पाते हैं। Okay. So ये कम engage करने का reason क्या होता है? Level of formality or the discipline that you maintain in BSF, or is it that they only follow what is directed to them? They don't, show their inquisitiveness. मे बी फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है कई जगह पे, हर जगह पे मतलब इनफॉर्मल नहीं है हम। मे बी इट्स माय पर्सनल व्यू, बट हाँ ये एक रीजन हो सकता है। अगर मैं देखता हूँ तो एक ये रीजन हो सकता है। और जो ओकेजन्स है जहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं है तो वहाँ पे ये वाली बात नहीं होती है, वहाँ पे बातें कुछ और होती हैं। देयर आर प्लेसेस वेयर वी आर नॉट फॉर्मल, बट देन ओवर देयर दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट फ्लोइंग ओवर देयर। बट हाँ एक इंस्टांस की बात कर रहा था। बिल्कुल 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 सर। चलिए सर, एक छोटा सा मैट्रिक्स है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। सो जब हम लीडरशिप की बात कर रहे होते हैं सर, जब हम फीडबैक कल्चर की बात कर रहे होते हैं और हम बताते हैं कि हाँ हमें एक अपने अंडर कमांड्स के साथ, अपनी टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है विच मैटर। So there are these two axes wherein one talks about the high energy, wherein we are talking about the strength aspect, the participation of the, the under commands, and your role is how much of information that you provide. So jab ye first wala quadrant hai wherein the other person is high on energy and you're providing more information, that means we are having this participation of you as well as the person who is receiving the feedback. मैं feedback के aspect पे बात कर रही हूँ सर, because see जब हम लोग ये बात करते हैं कि effective feedback जरूरी है, efficacy कहाँ से आएगी? Efficacy आएगी सर जब हम उन्हें constructive feedback provide करेंगे। सामने वाले person को हमने बता दिया कि this is how you need to perform. Now everybody has their own level of understanding, everybody has their own preconceived notions or judgment to different information that's passed on to them. So if you're giving information, then they are able to know what exactly they need to do. Okay, so if the participation is on the both end, so maybe अगर कोई ऐसा event है जिसमें हम बहुत सारी crucial information नहीं दे सकते, but the task which is assigned to them, उसके बारे में उन्हें डिटेल बता रहे हैं and how they are performing, उनको डिटेल स्टेप वाइज बता रहे हैं कि this is to be done, this is not to be done, so they become more participative. और ऐसे ही हम अगर इंफॉर्मेशन कम दे रहे हैं और वो अपनी एनर्जी से काम कर रहा है सामने वाला, तो इट इज नॉन डायरेक्टिव, सो दे देन आर फ्री कि अच्छा दिस इज ऑन माय ओन इनपुट एंड आई यूज माय विट्स एंड सेंसेस एंड आई डू व्हाटएवर आई डीम इज राइट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वी डेवलप दैट कल्चर कि हाँ एक जैसे हम बिल्डिंग रिलेशनशिप में बात कर रहे थे कि रेलेवेंस चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक शेयर्ड गोल्स होने चाहिए, शेयर्ड मोटो होना चाहिए। सो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, और फीडबैक भी उसी के बाद आता है। सो इफ फीडबैक सर अगर ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन फीडबैक से डर रहा है, दे आर समवेयर नर्वस अबाउट कि अरे पता नहीं कैसा सुनने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा, सो दैट इज समवेयर नॉट सो एनकरेजिंग. What encourages the person to follow is that, okay, I am going to learn something new. Okay, I'm being observed and I'm going to be taught from my seniors. So when you are a leader at a leadership position, you want to act as the role model for your troops, for your under commands. So जब हम लोग feedback दे रहे हैं, so we have to be very, very cautious about how much information we provide and what is the energy level of the participant. और इसी में अगर अपन ये वाला third content देते हैं कि हम तो बहुत सारी information provide कर रहे हैं, but they are लो ऑन एनर्जी, तो ये सिर्फ डायरेक्टिव होता है कि हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एंड दे फॉलो. एंड ऑफ कोर्स आई अग्री कि जब हम कमांड्स फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो डायरेक्टिव मोड पर चली जाती है. सो दैट डिपेंड्स. एंड द फोर्थ अप्रोच इज व्हेन दे आर ऑन लो ऑन एनर्जी एंड यू आर प्रोवाइडिंग लेस इंफॉर्मेशन, तो इट्स लाइक लीव देम अलोन, जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं. तो इस तरह का कुछ एक मैट्रिक्स सा क्रिएट हो जाता है जब हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं. So when we are acting as a leader for a team, when we are acting for a leader for our battalion maybe, तो हमारा हर एक इंडिविजुअल का लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट होता है. हर एक इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेता है कि अच्छा मेरे अंडर ये एक पूरा ट्रूप है, एक पूरा बटालियन है, तो मैं इस बटालियन को लीड कैसे करूंगा. मे भी होता है ना सर, when we were gaining experience, when we were climbing the ladder, तो बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं, अरे यार दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग,
or maybe no, I would not want to work under that leader again. That might happen at times. Corporates में तो बहुत बार हो जाता है. So that depends on what sort of leadership you have. So with that, sir, again, I would like to move on to the next slide. Now, again, I would like to like you to focus on कि आपका leadership style कैसा रहता है जब आप लोग अपने अंडर कमांड्स को हैंडल कर रहे होते हैं और क्या उसके रीजंस रहते हैं, सर वो भी मैं जानना चाहूंगी, प्लीज. Over to you. Madam, you are rightly said that leaders always, if doesn't respond the feedback, then there will not be result as desired. So there is a continuous response to feedback is very much essential. Just I am quoting on an example. It will take on it is only 2 lines only. Right, sir. Just to maintenance border fence, we are switching to one process, another process, conventional process, other process. So we have certain ideas to how to clean it without investing anything with our own resources. Then we initiate one process, and firstly we take one experiment at battalion headquarters, and we found that that process is depreciates something. So then firstly we associate welders, then we associate one carpenters with him. And now I found that that process is quite impressive. It is because of that we taken feedback from the welder. So its feedback is a continuous process, and the participations with that person is essential if the desired goals to be attained. That's what I feel. Yes, sir, because participation नहीं होगा तो we would never know कि हमें किस डायरेक्शन में कितने एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कितने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं, या जो हम काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, सर, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस द टास्क इज डन, बिकॉज देयर इज अनदर टास्क लाइंड अप. हम एक ही टास्क कंप्लीट करके तो वहाँ ओवर नहीं हो पाए कि चलो हमें ये टास्क असाइंड है, इसके लिए हमने फीडबैक ले लिया एंड दिस डन. So there are multiple people, multiple resources, manpower, human brains working on that particular task. So when that task is done, when that task is completed, you move on to the another task. तो अगर एक टास्क पे हमने इफेक्टिवली फीडबैक डिलीवर किया, एक मैकेनिज्म डेवलप किया, हमने समझा कि क्या सही हुआ, क्या नहीं सही हुआ, कितने चीजों पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन कौन से एस्पेक्ट पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो अगला टास्क बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो फीडबैक अगर अपन डिफाइन करने लगे, सर फीडबैक क्या है? एनीवन प्लीज. कैसे हम डिफाइन करेंगे कि दिस इज व्हाट वी टर्म एज फीडबैक, ये चीजें होती है और फीडबैक क्यों जरूरी है? हम उसकी बात करें अगर फीडबैक की, जी सर. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द टास्क. एग्जैक्टली. है ना मैम? यस सर. सो आवर टास्क इज वेरी स्पेसिफिक. यस. इट इज वेल डिफाइंड. यस. Firstly, to maintain sanctity of international boundary. Right. ठीक है? Right. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी ड्यूटीज का बड़ा सेट पैटर्न है. जी. So it is compulsion, I would say, that we have to perform like this. जी. Because you will also get a glimpse of the type of duties we perform. Definitely. Now, with the passage of time, seeing the challenges and the threats, border fencing came up. जी sir. The complete border is fenced. जी sir. Fencing came up. It's an obstacle. जी sir. Obstacle, delaying obstacle, जी sir. which would impose a delay of, say, a couple of minutes. Right sir. More than that. And the dynamics of border change with the area. जी sir. They are area specific intricacies and dynamics. Right. But one thing is sure, border fencing is there. We have to guard the border. Fence obstacle has to be dominated. This is the basic principle. It has to be dominated by observation as well as fire. Right sir. So it is manpower intensive job. Yes. Right, ma'am? Right sir. So there is no escape from participation. Yes. It is compulsion, as I said. So manpower has to be engaged in those. And it is a routine. It is mechanical now, I would say. More of a mechanics than any other thing. So
जी सर. Personal leadership style, and always everybody does his best. Yes. And force is also adaptive. Yes. From that point of view. They adapt to the leadership style. But everyone is delivering. It is not that I am delivering, other one is not delivering, or other one is delivering, I am not delivering. This is not the case. Right. Because upbringing is same. Working environment is same. Few challenges and entry cases differ, and force adapts to those accordingly. Right, sir. तो सर यहाँ एक जी सर आप कंप्लीट करें. Now, like directive, you had mentioned. जी. Information, less energy. जी sir. But in our case, I slightly disagree. Without energy, force cannot function. Definitely, sir. You would agree. नहीं sir. Committed for 12 hours, minimum 12 hours on duty, cannot be said to be without energy. नहीं सर, यहाँ एनर्जी से मेरा एस्पेक्ट था कि जब आप ये फीडबैक का एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो हाउ एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन इज. Feedback could be in the form of cross checking. Yes sir. Isn't it? Yes sir. Because naturally there are directives which are passed to the battalions. Right. From higher formations. जी sir. They will come in the form of directives. जी. There cannot be suggestions. Right. Then it will not be a force. Right. Before issuing any directives, comment is obtained from the lower field formations. Right. That we propose this change, any deviations, or this SOP is coming up, any suggestions, any deletions or additions, suggest. We suggest accordingly, they are incorporated or deleted, and they come to right for implementation. Right. So we have different tools into our hands. We have different mechanisms for obtaining feedback and checking whether it is being implemented or not. And simultaneously, it is a continuous process, everyday process. Right, sir. The commandant is discussing everyday strategy with his company commanders, those who are directly responsible for border guarding, with his staff officers who are at his disposal for giving feedback or suggestions. It is also a good old saying that everybody in the battalion except the commandant knows how to command the unit. Right. But the biggest irony is that it is the commandant who commands. So, lighter side. So therefore, we have this mechanism, as other officers also, Mr. Jafri also brought up. It is. Thank you, Virendra sir, and agreed, sir, very much agreed. But sir, यहाँ एक छोटा सा मेरा पॉइंटर है कि जब हम लोग मैन पावर को यूज कर रहे होते हैं, मैन पावर किसी भी टास्क में परफॉर्म कर रही होती है, आपने बात की सर कि हमें ऑब्स्टिकल से डील करना होता है, एंड द एंटायर ट्रूप अडेप्ट्स. सो अडेप्टेशन का भी एक प्रोसीजर होता है, अगर हमको सारी डिलीवरिंग्स करनी होती है तो उसका भी टाइमलाइन होता है, एंड वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स. बट फिर भी सर, इन सारे एस्पेक्ट्स के बाद में भी अगर अपन बात करते हैं कि एक टास्क पूरा हो गया, आपने मैनिंग की बात करी, मैनिंग हो गई, आफ्टर दैट कुछ ऐसे होते हैं इंडिविजुअल्स विच आउटशाइन, कि बाकी अगर इसी काम पर अगर 200 लोग डिप्यूट थे या 20 लोग डिप्यूट थे, तो 20 में से 2 या 4 ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, या 1 या 2 ऐसे होंगे कि जिन्हें डायरेक्शंस प्रॉपर मिली सबके साथ में, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई, शायद अंडरस्टैंडिंग में भी चूक हो गई. एनर्जी की बात नहीं है, एनर्जी ऑफ कोर्स अग्रीड सर, फोर्सेस से ज्यादा एनर्जी कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है. बट यहाँ एनर्जी है जब हम लोग डायरेक्शंस ले रहे हैं, तो एक वो कंफर्ट लेवल क्रिएट करने की कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो आई एम एबल टू आस्क, या फिर जब मैं अपना काम कर रही हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू असेस कि वेयर आई एम गोइंग राइट और वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्वेश्चन मोड पर आता हूँ. हर बार फीडबैक से फॉर्मल होना जरूरी नहीं है. आई अग्री. अगर आप लोग अभी जैसे सर ने बात करी थी कि नहीं, हमारे पास इनफॉर्मल मैटर्स भी होते हैं जब हम टैप करते हैं, और अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन भी सर आप जो टी ब्रेक था उसमें सुन रही थी, तो छोटी छोटी चीजें होती है. डोंट वी जस्ट गो एंड टैप ऑन द शोल्डर ऑफ अ कमांडर, अरे वाह बहुत शाबाश, बहुत शानदार किया. तो ये भी एक फैक्टर होता है सर, और ये फीडबैक के तो तरीके हैं कि हाँ, अगर किसी पर्सन ने थोड़ा सा अलग काम किया है तो उसे थोड़ा सा मोटिवेट और कर दो, मॉरल बूस्ट हो जाएगा. अगली बार जब वो पर्सन काम करेगा तो बोलेगा हाँ यार, मेरे बॉस ने अप्रिशिएट किया था, नाउ आई कैन डेफिनेटली वर्क इन द सेम वे. तो वहाँ चीजें काम हो रही है. जैसे नगेंद्र सर कह रहे हैं कि feedback can be immediate, it can be after the task completes, and finally long after the task completes. Definitely.
और तभी तो पर्सन अपनी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करेगा। फीडबैक का मोटिव ये होता है कि हम फ्यूचर के लिए एक इफेक्टिव ट्रूथ को रेडी कर सकें। इट्स नॉट द मोटिव कि हम जो अभी टास्क कर रहे हैं उसी को कंप्लीट करके छोड़ दें। फीडबैक हैज टू बी डेवलप्ड as a mechanism which is effective for the future as well. So we are actually working on the manpower, on the emotional state of our undercommands, on the the psychological thought processes that works side by side, कि जब फ्यूचर में वो टास्क करे ऑन दी फर्दर टास्क असाइंड हम लोग डिवाइस कर सके कि अच्छा when that person knew कि हाँ ये aspects was the key factor, this aspects were something जहाँ मुझे और ब्रशअप की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है, तो I would be doing that. So वहाँ ये mechanism जरूरी है. So feedback is not limited to what the task assigned at the moment. It is also something which would help you once the task is completed, और या फिर similar task 4 साल बाद किसी person ने करा, तो वो फीडबैक काम दे जाएगा कि अच्छा उस वक्त मैंने इस तरीके से काम किया था, मुझसे एक गलती हुई, या फिर उस वक्त मैंने काम किया था मुझे बड़ी तारीफ हुई, चलो वही तरीका वापस से अपनाते हैं। सो वहाँ फीडबैक है जो बहुत हेल्प करता है। आई गेस यू ऑल अग्री विद दिस आइडिया। If yes, give me a thumbs up, please. If no, I am open to questions and your suggestions, please. इसमें एक और चीज है जी सर, नगेंद्र सर, नगेंद्र सर। इसमें जो इमीडिएट फीडबैक है, इट शुड बी टाइमली आल्सो। ऐसा नहीं अगर इमीडिएट जो फीडबैक आपने देना है वो अगर आप लॉन्ग आफ्टर दैट टास्क हैज बीन डन तो सब कोई यूज नहीं रहता जी। हाँ, तो ऐसा होता है ना, आपने उस वक्त तो कुछ फीडबैक दिया नहीं कि हम अगर ऐसा कर ले तो ज्यादा ठीक है, लेकिन जब ब्लंडर हो गया तो आप बोलने की नहीं, अगर हमने ऐसा करना चाहिए था, तो टाइमली फीडबैक इज आल्सो इम्पोर्टेंट। Agreed, sir. Agreed, and that's very important. Time बीतने के बाद तो कुछ भी नहीं है, so it has to be very very timely. It has to be done in very very carefully. और सर ऐसा नहीं होता ना कि we only give feedback on results. एक साइकोलॉजिस्ट है कैरल ड्वेक, वो ये कहते हैं एफर्ट्स पे फीडबैक देना चाहिए कि कितने कंसिस्टेंट एफर्ट थे, कितना पर्सन ने हार्डवर्क किया, रिजल्ट चाहे जो भी हो, मे बी फेलियर बट एफर्ट्स वर ऑनेस्ट। तो जब हम एफर्ट्स पे फीडबैक देते हैं ना, मोटिवेट बहुत होता है सामने वाला पर्सन। यस सर। मैम इसी पे आज एक छोटा सा इंसिडेंट जो हमारी बटालियन में रात हुआ है। जरूर सर। रात नहीं, आज सुबह मॉर्निंग में ही हुआ, 4 बजे के आसपास। एक टास्क दिया गया था कंपनी कमांडर को, इस जनरल इलाके में जी कुछ इंसिडेंट हो सकता है। जी सर। उसने पार्टी जो है रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी करी, दूसरी पार्टी जो है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी करी। जी सर। उसी इलाके में पुलिस की पार्टी भी 2:30 बजे पेट्रोलिंग करके चली गई। जी सर। लेकिन जो हमारे कंपनी कमांडर ने जो इंफॉर्मेशन ऊपर से मिली थी, जो टास्क मिला था, वही इस इलाके में इतने बजे आज हो सकता है। जी। लगभग 4 बजे हमें एक बहुत भारी अचीवमेंट हुआ। अगर वो पार्टी 4 बजे से पहले वहां से चली जाती तो हमारा अचीवमेंट नहीं हो पाता। इस चीज का फीडबैक मैंने कंपनी कमांडर से लिया, भाई ये कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ है, कैसे कैसे आपका अचीवमेंट हुआ है, आप लोग कब थे, कौन कौन पार्टी थी, कैसे कैसे थी। कुछ नहीं बोला जी, 2 आदमी हम इस बीओपी के थे, 2 आदमी इस बीओपी के थे, और एक काउंटर पार्ट से ऐसे ऐसे कोई चीज आया, उसने ड्रॉ किया तो ये हमें धम की आवाज सुनाई दी, तो वो अचीवमेंट हुआ। जी सर। ये अचीवमेंट, इस चीज को कंफर्म करने के लिए डीआईजी ने मुझसे पूछा, भाई ये अचीवमेंट कैसे कैसे हुआ, टास्क तो आप लोगों को दिया गया था। तो उन्होंने फीडबैक एक चीज, यानी कि जो कंपनी कमांडर ने मुझे बताई, जो जवान ने मुझे बताया, मैंने वो डीआईजी को बताया। डीआईजी ने फिर दोबारा कंफर्म किया अपने सोर्स से, तो फीडबैक मिलने से डीआईजी बहुत खुश हुआ। और एक स्टेबल रिवार्ड के लिए उन्होंने बोला, भाई इनका नाम जो है डीजीसीआर आईजीसीसी के लिए भिजवाओ आज ही। तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं जस्ट इसी काम के लिए बताना चाह रहा था। तो कांग्रेचुलेशंस ऑन द अचीवमेंट दो। और हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है ये चीजें टाइमली होना, और एक अवार्ड देना सामने वाला पर्सन, उन्होंने एफर्ट्स किए, जब इसको एक थोड़ा सा एफर्ट्स को एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है ना, तो फिर मोरल बड़ा हाई हो जाता है कि अच्छा। एक मैम आपकी जानकारी के लिए, बाकी हम बीएसएफ वाले जानते हैं, जो हमने सामान पकड़ा है 25 करोड़ का है, और जो कल पकड़ा था वही 25 करोड़ का था, यानी कि 2 दिन में जो है 50 करोड़ का इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हुआ। ये यानी कि सर ने बताया, जीडी सर ने बताया, सभी कमांडेंट काम करते हैं, सभी जगह ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन मेरा इलाका थोड़ा फर्टाइल है ज्यादा। इस इलाके में
कम्युनिकेशन के साधन बड़े नजदीक हैं, सामान उठाना मार्केट बिल्कुल नजदीक है, रेलवे स्टेशन बिल्कुल नजदीक है। तो मेरे इलाके में थोड़ी सी समस्या ज्यादा होती है, इसलिए सबने बताया सभी काम करते हैं, लेकिन किसी का इलाका ज्यादा फर्टाइल होता है, कुछ के इलाके में उग्रवादी ज्यादा है, कुछ में कम है। जिसके में ज्यादा होगा उसका ज्यादा अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट और सर आइडेंटिफिकेशन ना कि हाँ किसी ने काम किया है, सही पर्सन ने काम किया, उसको प्रेज मिल जाएगी, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, तो टीम हाई स्पिरिटेड रहती है, वो बहुत जरूरी है। एंड जैसे प्रमोद सर कह रहे हैं कि हाँ इट शुड बी इन ट्रू सेंस ऑफ कोर्स। feedback which is not true is of no use, even it's something which is detrimental. कि morale भी down करता है, spirits भी down करता है, excuse me, और पूरी टीम के लिए is not good. So that's very very important. So with that, let's move on. So what comes? Ma'am, ma'am, if you allow, I'm Sujit. Of course, Sujit sir, definitely sir. एक मतलब पर्सनल टेक है, बेसिकली आप जो स्टाइल्स की बात कर रही है ना, विल यू काइंडली गो टू द प्रीवियस स्लाइड, This one sir? yes. I guess this नहीं after this slide. Okay sir. I guess think of a leadership style that you would like to focus on. Basically we are following a confluence of all these styles. Okay. It is a kind of confluence, I would say. Basically, we are the followers of Chetwood motto. So what? Have you heard about it? Sir, I would want to know. No, what is that, sir? No, Giri sir, he may help me out. Okay. Chetwood, basically, he was Field Marshal. His full name was Philip Walhouse Chetwood. He was from British Army, and he was Chief of the General Staff in India from in the year 1928. Okay. And he remained the Commander-in-Chief in India in 1930. We follow the motto which he made for all of us. And the motto says, the safety, honor, and welfare of country comes first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of the men who come. Your own ease, comfort. Sujit sir, I'm sorry, but you're not audible. You can see the chat. In the chat, in the chat box, I have already written it, the motto. I'm just uploading it. Oh, even it's not. Yes. But yes, I definitely have heard of this. Now it's there, sir. Yes, your own ease, comfort, and safety comes last, always, and every time. Definitely, sir. I've heard it. Yes. So yes. if you see this motto, you will find that we are the followers of this motto, and hence we are following the confluence of all of these styles. So at times we are performing as a non-directive, as a participative, as a directive, or at times we leave the men at their own. Yes. And agreed, sir. Thank you, sir, Sujit sir, for bringing this up. That's very important. I am sorry I missed on this, because when we give feedback, when we talk about the leadership style, it always depends on the situation and the person that we are giving feedback to. Every situation. But most of the times, most of the BSF officers, they are participative. They are participative. Most of the times. Right. They play with the men, they live with the men, they cry with them, they laugh with them, they lead their lives with them. Yes, that's where, you know, we feel that the close connect, the strong bond that we have. Definitely. And but we are the followers of Chetwood motto. Yes. I never, I was really sorry, I'm feeling bad about it, but I was not aware of this term, Chetwood, but yes, I'm definitely aware of this motto, and that's something which talks about the spirit of BSF, yes. So that's amazing. And yes, when it comes to leadership style, every single time it depends on what situation you are into, that decides what sort of leadership style you choose, and that has to be very thoughtful process. Kab kya karna theek rahega. So that again calls for the leadership skills that one has. कि इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करा जाएगा, इस सिचुएशन को अपन डायरेक्टिव रखते हैं या नॉन डायरेक्टिव रखते हैं, या फिर सिचुएशन में चलो पार्टिसिपेटिव हो जाता है, या फिर there are certain situations and leave them alone, leave them to their own judgments. So that's very important, and that's a very careful thought process that goes along. Thank you, sir, for bringing this up. I guess now we can move on.
So what comes in a way, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस की तरह से काम करते हैं कि फीडबैक नहीं दे पाते हम लोग कभी, क्या ऐसे सिचुएशंस हैं? क्या 100% टाइम will you kindly repeat yourself? What will come in the wow? What will come in the way of giving or effective feedback, giving or receiving, and it goes both ways of feedback. ये क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम इफेक्टिव फीडबैक या फिर फीडबैक नहीं दे पाते, मतलब एक हिंड्रेंस की तरह से काम करता है कि नहीं फीडबैक देना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, क्या ऐसा कुछ होता है कि नहीं दिया फीडबैक, टास्क हो गया फिर भी नहीं दिया? किसको नहीं देना? मतलब बीइंग अ लीडर, अगर आप अंडर कमांड्स को फीडबैक दे रहे हैं, क्या 100% टाइम यू गिव फीडबैक या कभी-कभी ऐसी सिचुएशन है कि नहीं फीडबैक के बिना नहीं, चलो आगे चलते हैं? Fear of success. Fear of unsuccess. Fear of unsuccess कि सामने वाला पर्सन आई गेस मे बी अपने नेगेटिव फीडबैक को सुन के बुरा मान जाएगा, क्या ऐसे फैक्टर्स है? ओके, यस, दैट मे बी वन थिंग। उसके अलावा कोई और रीजन? मैडम, हम अपने यहाँ इसको फीडबैक नहीं कहते हैं, वी कॉल इट डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग, ओके। हाँ, फीडबैक आप किसको देते हैं? जो आपका सुपीरियर होता है, isn't it? जिसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। So feedback is to anybody. अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं, feedback if we are asked for, we are asked for. Yes. Otherwise, it is not obligatory on all of us to give feedback to them, whom we are commanding. The feedback we are answerable. Yes, sir. We are answerable for their lives. Yes, sir. Their successes. Definitely. We are answerable to our organization, our commanders. Yes, yes. But we are not responsible and we are not supposed to give feedback to our subordinates. But of course, when an operation comes to conclusion, then we give debrief them. Mr. Sujit, but you can opt the feedback, you can ask the feedback. That's what exactly in I'm general telling, administration. We give feedback to our superiors, we give feedback to our organization head, but we are not giving feedback to our subordinates. Rather, we debrief them. Yes. When an operation comes to an end, we debrief them. What will happen good and what all went bad. Basically, in the civil administration, it is required, I think, not in our forces, but in the civil administration, this required from the level strata of the organization also. जो सुजीत बोल रहे हैं वो इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ फीडबैक। जब आप उसको बता रहे हैं क्या कमी है, क्या अच्छा हुआ, दैट इज आल्सो ए फीडबैक। वी आर यूजिंग डिफरेंट टर्म्स बट इट इज ए फॉर्म ऑफ feedback, I think. Yes, sir. We are taking feedback, but we are not, as commanders, we are not giving feedback to them. So in general sense, what I'm talking about is feedback is something that you tell the other person, whosoever it is, maybe your colleague, maybe your under commands, maybe your senior. Seniors ke liye we have to be a little careful. So you're using this term debrief, and here and we use that term feedback. Feedback is something that you tell that this has happened, and these are the areas where further work or further deliberations are required. So that is a very careful after what you can say analysis that you provide to them. Okay, once something is achieved, so the target is set, it's achieved, it's done, task is accomplished. Now you give them, now you tell them that this is what happened, this is what you did, this is how you did better, this is how you need to improve, this is what positive sides of it, this is what were the negative inputs that I could observe. So that is feedback. So after, maybe it's debriefing in the forces, you call it debriefing, but here we use this common term feedback. So maybe if superiors are asking about what happened, so we tell them this is what happened. Or maybe when my superior is telling me, okay, how I performed in the task that I'm assigned with, so that's also feedback. So for example, I'm taking this session, एक बहुत general से term पे बात कर रही हूँ, I'm taking this session and then I ask कि अच्छा session कैसा रहा. So what you tell me is the feedback for me. So being colleagues, being under commands or superiors, किसी भी तरह से relationship में maintain कर रहे हैं. So informing the other person is delivering a feedback to that person. और उसके लिए एक agreement ये होना कि yes, I'm very accepting
कि आप जो feedback बोल रहे हैं, I'm going to use that in a very constructive manner. I'm going to learn from that. Feedback is important. So that's very important. So maybe there in forces you call it debriefing. कि अच्छा आप अंडर कमांड्स को debrief करते हैं कि this was the task और आपने ऐसे ऐसे किया, this was good and this was not good. So maybe we are having this term which is I'm in total agreement with you, definitely. ma'am. I'm Yes, in sir. total agreement. We are using two different terminologies, but we are on the same page. We are on the same page. Agreed, sir. Agreed. Yes. Thank चलिए you. sir, with that move on. Ma'am, जी कुछ ऐसे छोटे फैक्टर्स ma'am, होते हैं क्या regarding कई this, बार. Yeah, yes sir. Pramod sir. What comes in the way when we are not able to give proper feedback? जी. The challenges are it basically I would request to please keep yourself on mute. Yes. That becomes very convenient for everybody. Thank you. Yes, sir. Okay. There are cases when you are not ready to give feedback. It basically depends on the person. If some behavior of the person, if some senior officer is not behaving properly, not so receptive, then it is a challenge to give him feedback. Yes. That's one thing. Second thing is that when the person who's supposed to give the feedback don't possess the good communication skills, then he is also not able to give a proper feedback. And this happens sometimes in our cases. When we just go and the senior person is not very receptive and his behavior is not conducive, then you just restrain yourself and don't give him feedback. This is the challenges. Yes, sir. Agreed, sir. And when you debrief your subordinates, I mean, I'm using this term debriefing now because for us, we use feedback in both ways. So when you debrief your subordinates, are there any challenges that we have to face? Say if your behavior is not good, they will not give you any feedback. Yes. And your communication skill is not good, you are not able to give proper feedback. It's all depends person to person. Yes. Agreed, sir. And of course, there are multiple ways. कई बार हम time restraints भी होते हैं, efforts लग जाते हैं. Like communication is one thing which takes efforts. और कई बार ऐसा होता है, okay, the other person might get annoyed, we might rub them off, so let's leave it. So ये सारे factors होते हैं, and we have to actually see that कि हम इन factors को थोड़ा सा resolve कर ले, so that we are able to give effective feedback. So here I'm using, we would actually be able to debrief our under command. So that's more convenient term for both of us. So now there are two situations I would like to take out for some moment and understand. So it is in one way debriefing your under commands. So one is, imagine that we will be leaders in the digital space in 5 years and fully connect with our customers. You will be leading an exciting exploration in this space. And the other way is, you have been successful insight-led marketer. Use the strength of yours to build our digital presence and getting to really connect with your customer. So when we tell our under commands or when we tell our subordinates or teammates, so what sort of feedback or debriefing is better? Which one you prefer, sir? A or B? Let's call the first one A and the second one is B. So which one would you prefer, A or B? Anybody? You can write your response in the chat box as well. These are two scenarios which are given or talking about the same situation. So which one is more information providing? Which one would you prefer? The second one. Second one. Yes, sir. And so why so? What is the difference means why would you prefer the second one? What would be the results? I believe the second one will help me two-way communication. Yes. Probably that is what I'm getting. So that is always better. Definitely, sir. A two-way communication plus the other person would also be aware about what are the aspects, kahan kis strength ki baat kariye, what are the deliberations. So all these aspects are being covered up. So this entire session is about when we give feedback, when we debrief. So that is something which are going to come up in another, I guess, some time and a few slides.
तो जहाँ हम लोग जब फीडबैक करते हैं, how much information we can provide them, how much insight we are providing them for their own thought processes, so which is very important. So let's just skip this part and now let's talk about why do you think feedback is important? I'm talking about why do you think debriefing is important? Debriefing, अगर हम under commands को feedback दे रहे हैं या debrief कर रहे हैं, so why is it important? I'm talking about in context of under commands when you debrief them once they have accomplished or they have worked on a task. And then we are debriefing them. Why do you think that's important? No, it's very important. Even the successful missions, which we will be calling or we call, will have many flaws to address in next missions. So it is important, whatever small or big we are achieving or we are losing, we should debrief properly. We should earmark where we have faltered, what we need to improve. So that way it becomes very important that feedback or debriefing is most important factor in our missions. So we talk about what are the future scopes of improvement. So that's very, very rightly said, sir. Thank you. And sir, what are the reasons? Feedback से क्या benefit होता है? To know both strong points and shortcomings. Definitely, yes, sir. You come to know about your strengths. You come to know about your limitations. Yes, sir. You come to know about the resources. Yes. That could not cope up with the requirement, so that you can improve upon in the future. So this basically gives you an insight into the complete operation which you undertook. So it gives insight into the complete operation. So that's very rightly said. So the person gets to know कि कौन सी strength थी, कौन सी weaknesses थी, what are the areas where the person has to work, what are the areas wherein we can use our strengths or the positive points for future. So that's very, very important, sir. Definitely, sir. Thank you. And sir, what other things? तो हम लोग ना यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं या सिविल फैक्टर्स होते हैं उसमें मोटिवेशन के लिए भी बड़ा फीडबैक इंपॉर्टेंट मानते हैं. तो क्या फोर्सेस में भी ये चीज इम्प्लाई होती है? बिकॉज आई नो फोर्सेस आर समथिंग वेयर इन पीपल आर हाईली मोटिवेटेड टू परफॉर्म एनी टास्क दे आर असाइन्ड विद, बट स्टिल क्या फॉर फर्दर मोटिवेशन और मोरल बूस्टिंग के लिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी कीप ऑन डीब्रीफिंग देम अबाउट देयर पॉजिटिव थिंग्स? Naturally, it's very important. So yes, so it's it is very much essential. So we should take feedback and we should implement positive feedback from our under command also. Just I am giving you one instance. Once I landed in this location, I found that one constructed stage being occupying right in the middle of the playing ground, and it gives hindrance to play football and to draw athletics tracks. Then I gave a suggestion that it should be dismantled immediately. But that person with whom we work, we call under command, or those other colleagues, they were a little bit upset over my ideas. Well, no, these are the stages where we perform different type of events, and this can be used for Sainik Sambalan and other activities like raising the. Then I told them that once in a blue moon, in a year, we will do this thing. So yeah, this interest for our regular games activities. Then I thought that, okay, we do some alternatives. So we made alternatives. We started creating welding in our empty, our welders are there. So we're creating alternative stages over there. And they were very happy. But at that time, those stages in compartmental form, 3 feet by 3 feet form, then again that our ops requirement required that we have to create it few OP tower on border. Then we use all 12 3 by 3 pieces and we then amalgamate on OP towers. And thereafter we thought that other alternatives. Then the Mali, who are gardeners, they suggested that we can create a stage of mud, clay, and we have to plant grass on that. That is a very excellent ideas. We work on that. Then we then that those has been infrastructure been again reshaped, and after reshaping the stages, that all grids, we then dismantle that stages, that cemented stages, and our aim was achieved. So feedback is a two-way process, multi-way process, and it is also beneficiary to the system. And now all are in same happy mood, all are enjoying this playground. That's all.
Definitely, so definitely, it's a wonderful way to generate ideas. With that example, I could get that. So yes, agreed, sir. And like sir has written that it builds mutual trust. And again, this has written and promotes has written that quality improvement, easy to assess actual position. Definitely, sir, that's wonderfully said. So with that, we break for lunch for a while. So Amidhir sir, I guess that's time. Yes, whether the given task is going in the right direction, definitely, sir, we get to know with this the help of the feedback. So having done that, having talked about the feedback mechanism, now once we resume the session post lunch, I guess Amidhir sir would be able to direct us more. We would then be talking about what kind of feedback mechanism we need to have, the different strategies, a STAR approach, which is wonderful. And then we would also be talking about different kind of sandwiches to talk about feedback. So Amidhir sir, over to you, I guess. Yes, thank you so much, Dr. Kirti. We will resume, sirs, for post-lunch, of course, with this session. We will resume at 3 o'clock, and I hope you have an amazing lunch. So see you all at 3. Thank you so much. Completely. That is not a report of any incident and all. Am I right? Right, sir. Agreed. Yes. So that report means on any subject, you are carrying a research, you are collecting data, and after that, the codification of the data and the final conclusion of that. That I think meaning here of the report. Okay. So great, sir. And most of you like Rajesh sir, Supriya sir, Mansingh sir, Ashok Singh sir has said B. Nagendra sir said though B, but I tend to say A needs improvement. So why is it that you tend to say A? Nagendra sir. Generally, you may say out of frustration or out of irritation, suppose not report, but whatever something comes before me, I tend to say so. Will you ever learn the skills? I was waiting for this, put in so much of years of service and still you are doing the basic elementary mistakes. Right. Agreed, sir. But sir, एक चीज मैं समझती हूँ सर, ये हो जाता है तो जब हम बात कर रहे थे ना what comes in way starting में कि what comes in way of giving effective feedback, तो ये चीजें आ जाती है में इतना तो पता होना चाहिए, इतना सभी अवेयरनेस नहीं है क्या, कितना मैं कितने इनपुट्स दूं. I mean, I am not somebody who can do everything. ये भी चीजें आती है. पर जब हम अगर ऐसा फीडबैक देते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है परफॉर्मेंस पे? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस कि अगर आपने कह दिया है कि इस तरह सा हुआ है, ऑब्वियसली दिस आल्सो इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन हु इज कंप्लीटिंग सर्टेन टास्क. सो हर बार गिविंग सच फीडबैक, इज इट समथिंग व्हिच वुड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस? इफ यस, हाउ? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? अगर नेगेटिव होगा तो कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पॉजिटिव होगा तो क्या ये फीडबैक ऐसा नहीं है जो कि थोड़ा डीमोटिवेट कर दे? व्हाट इज योर इनपुट, व्हाटएवर यू थिंक सर? अगर हम ए बोलेंगे तो एक बार में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, अगर बी बोलेंगे तो एक बार में नहीं होगी, कई बार टाइम लगाना पड़ेगा. Agreed, sir. Forces में I guess this is Fauci way of doing things. Agreed, sir. Understood. Of course, it's the Fauci way of doing things. Corporates में ऐसा नहीं होता है. ऐसा होता है ना, बंदा बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से. So that is not something which happens here. But अगर इसको अलग तरीके से देखा जाए, सोचा जाए सर, तो अगर आप सामने वाले को रीजन बता दें कि क्या कमी है. जी सर. मैडम, नेगेटिव फीडबैक इज आल्सो एंटरटेन. यस. क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो टाइमली उसको सुधारा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है. बिल्कुल. तो नेगेटिव अगर कोई फीडबैक है और उस कोई भी जो टास्किंग दिया गया किसी भी पार्टी को, उसको करने में कोई दिक्कतें आ रही, तकलीफ आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, जी. सारी चीजें भी जो है हमें सुननी चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए. बिल्कुल. ठीक है सर, इसको एक बार यहीं छोड़ते हैं. विल कम बैक ऑन इट. ये जो डिस्कशन है, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट वेरी पॉजिटिवली ऑन द डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव. एक बार इसको छोड़ के एक नेक्स्ट 2 स्लाइड्स देखते हैं, फिर हम इस पे वापस आएंगे. सो दिस इज येट अनदर एग्जांपल. यस,
एक ऐसा भी परफॉर्मेंस है कि बहुत अच्छा किसी ने काम कर दिया है एंड वी आर गिविंग देम फीडबैक लाइक द रिपोर्ट व्हिच यू मेड यस्टरडे इज आउट ऑफ वर्ड, समथिंग आई हैव नेवर सीन, और एल्स the report which you gave me was well formatted, had well researched data, and carried the apt message for the board of directors to take key decisions. Keep up and good work. Keep up the good work. So which one is better, sir? I'm talking about something that would positively impact your performance. दोनों अच्छी है, पॉजिटिव है, कौन सी बेहतर है इसमें से? हम दे रहे हैं फीडबैक सर, जो कि इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर फोकस, जहाँ पे की स्किल्स को हाईलाइट करना है, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना है, एम्पावर करना है, फ्यूचर रेडी बनाना है सामने वाले को, तो कौन सा फीडबैक बेटर रहेगा सर? इसमें भी ठीक रहेगा, so that he should know his good things also. जी सर. So and he would also come to know that his qualities are being recognized. डेफिनेटली विजेंद्र सर, मैं आपसे फिर से विजेंद्र से पूछना चाहूंगी, क्यों ऐसा पॉजिटिव जब सामने वाले ने किया तो उसको की स्किल्स हम बता रहे हैं, पर वही बंदे ने अगर नेगेटिव करा तो हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं एक बार में डांटो कि वो सही हो जाए, ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखिए नेगेटिव, जैसे मिस्टर अजय ने बोला, नेगेटिव चीजें बताने, उसको साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या करना है इसमें। खाली उसको यही नहीं बताते कि ये गलत है, हम उसको यही बताते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सर, और वही चीज है जो कि फीडबैक को कंप्लीट करती है, बिकॉज फीडबैक का पर्पस ये नहीं हो रहा है कि हम सामने वाले को डिमोटिवेट कर दे या सामने वाले को और मोटिवेट कर दे। फीडबैक पर्पस ये होता है कि उसे एग्जैक्टली पता होगा कि अगर उसने कुछ भी टास्क परफॉर्म किया है, अच्छे तरीके से करा है या नॉट सो गुड वे में करा है, तो उसे पता हो कि व्हाट वर द गुड पॉइंटर्स एंड व्हाट वर द नॉट सो गुड पॉइंटर्स, द एरियाज वेयर इन दैट नीड्स टू इम्प्रूव। और यहाँ पर सर हमारे पास रोल प्ले करता है स्टार अप्रोच। एक स्टार मॉडल, अगेन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिसर्च में मॉडल थोड़ा सा प्रिस्क्राइब हुआ था, एंड दे सेड दैट व्हेन वी गिव फीडबैक, सो हमारा मेथड क्या रहना चाहिए? वी कंसिडर द सिचुएशन एंड द टास्क, कि कौन सा ऐसा टास्क था व्हेन द अदर पर्सन वाज परफॉर्मिंग, क्या सिचुएशन थी, किस तरह का टास्क उसको असाइन किया हुआ था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे, उस टास्क के साथ में व्हाट एक्शन दैट पर्सन टेक, कि उस सिचुएशन में उस टास्क को लेकर सामने वाले पर्सन ने कौन से स्टेप्स लिए, क्या एक्शन था, क्या मोड, क्या मेथडोलॉजी थी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद क्या रिजल्ट रहा। तो जब हम फीडबैक दे रहे हैं, वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर मॉडल एंड दिस मॉडल बिकम्स वेरी हैंडी। जब हम लोग फीडबैक देते वक्त पर्सन को पूरा सिचुएशन एक उसके सामने ड्रॉ करके रखते हैं, देयरइन वी अस्यूम कि अगर हम फीडबैक दे रहे हैं, सामने वाला पूरी सिचुएशन को कंसिडर कर पाए किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्प्रूव कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को। अब जब मैंने परफॉर्म किया एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट टास्क, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बुरा होगा, somebody else अगर मुझे उस पे थोड़ा सा फोकस करवा पाता है या कुछ उस पे हाईलाइट कर पाता है, तो आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू इम्प्रूव। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, और एक छोटा सा केसलेट है, देखते हैं हाउ वी कैन डील विद दिस यूजिंग दिस स्टार अप्रोच। The caselet is that you are a client relation manager of a marketing company. Arun is a new employee in your team and he was assigned a proposal for a leading client. You had sent him some suggestions and changes in the proposal. However, Arun did not make any changes and did not send you an appropriate proposal. Therefore, you could not accept the proposal since he has not sent, and eventually you had to make the proposal on your own with the help of another team member. You want to carry a session giving feedback to Arun. How would you carry the session using this star model? Star model again, situation, task बताएंगे, action पे बात करेंगे, result पे बात करेंगे. I'll again show this star model to you. तो इन सारे factors पे बात करेंगे. ये अगर situation इस सारे factor को देते हुए अगर अपने को feedback देना है सर, how would we give? किस तरह से अपन word करेंगे? क्या अगर अपन one to one face to face conversation रख रहे हैं अरुण के साथ में, तो what feedback, what suggestions we would give as a leader, as a boss? देखिए, in our organization we have a different culture. Sir. Basically, CEO is a father figure for any new entrant. Right, sir. Any new officer coming, like when we were young, whenever the commandant would come for border visit, he would also call us to the BOP which he will be visiting, and when he will take round, we will also follow him. From new entrant, certainly we don't accept that he will be a perfectionist. Right. And naturally, there is different way of teaching things.
he will be nurtured. तो वो मैं बिल्कुल ही पूछ रही कि जो वो नर्चरिंग वाला मैं फेज बता है, रहा हूँ आपको कि उसको बड़े आराम से समझाया जाए, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं इसको, जी पहली जी बार ध्यान रखना। हाँ, इस तरह से एक दो बार करेगा फिर समझाएंगे वैसे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, उनको दूसरे तरीके से बताया जाए। जी आपने नए की बात करी तो नए को मैंने बता दिया, उसको स्ट्रेट अवे डांटे डूटेंगे नहीं, उसको आराम से समझाया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग करके आया है, अभी नया है, ट्रेनिंग और ग्राउंड में फर्क है। बिल्कुल। So he will be first made comfortable to adjust in the battalion atmosphere. Right, sir. Battalion functioning. Right, sir. So that's how we function. बिल्कुल सर, that's one functionality, क्योंकि अगेन हमें वो नर्चरिंग वाले फेज पर ही फीडबैक की जरूरत ज्यादा पड़ती है। Of course, at any stage of our career we require feedback. जब हम कोई काम कर रहे हैं, फीडबैक हमें हेल्प करता है, वो we cannot deny that. I guess we all agree to that. But उस नर्चरिंग फेज में कुछ न्यू रिक्रूट आया है, उसे थोड़ी सी एक्सपीरियंस वाले लेवल पे जाने के लिए जब हम उसको समझा रहे होते हैं, तो क्या अप्रोच रहता है, हाउ डू वी वर्ड इट? अंग्रेजी समझ में नहीं आई कि ये कैसे लिखते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं लेटर, कैसे मैसेज, तो समझाया गया। तो सर कैसे समझाया गया? देखिए वही मैं बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में हमने एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर रोतेला हैज मेंशन्ड। जी सर। जैसे मैंने कोई चिट्ठी लिखता था तो कमांडेंट ने बुलाया कि भाई उसमें लाल रंग से गोले खिंच जाते थे। जी। Then he will call me in his office, he will show me कि देखो ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, never use first person in official language, it should be in third person. Right. समझ में नहीं आया, एक दो बार नहीं आया, फिर दोबारा बुलाया, बोला ऐसे नहीं, अरे बताया है तेरे को ऐसे लिखना है, समझ में नहीं आया, फिर हाँ जी आ गया समझ में। Like this how you teach him. बिल्कुल, exactly, and that is what Ratula sir has said. Call him to my office, show him his report, tell him shortcomings, and then show him the final report made by me. Advise him to be careful. Of course, that's the best कि आपने situation बताया है, आपने बताया कि क्या उसने गलतियां करी थी, कैसे उसको improvement किया जा सकता है, और future action क्या होगा. So of course that is something कि हम situation acknowledge कर रहे हैं, identify कर रहे हैं उसने जो काम किया खराब नहीं किया है, मेहनत करी है, बट थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अब हाईलाइट करेंगे ये कौन से एरियाज है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सो ऑफ कोर्स अगर अपन इसी चीज को वर्ड करते हैं तो अ काइंड ऑफ फीडबैक माइट बी, दिस इज रिगार्डिंग द प्रपोजल आई सेंट यू लास्ट वीक व्हेन आई शेयर्ड द प्रपोजल फॉर करेक्शन, बिकॉज करेक्शन के लिए बोला और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड सम क्वेरीज देयर वाज नो रिवर्ट फ्रॉम योर एंड, हेंस आई कुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल. If you had displayed proactiveness and ownership, then we would have closed the loop for the proposal well before the deadline. आपकी क्या कमियां रही थी, आपने वो highlight कर दिया है. Your proactiveness and ownership about the work at hand is expected in future, and I'm sure this will help you get the work done. So एक strict warning भी उसे मिल गई है. So that is how feedback is given. अब सर इसी चीज को एक और सिनेरियो में देखता है, guess this is more relatable with feedback. तो अगर I'm sorry, ऐसा कुछ अपना सिचुएशन होता है, सो हाउ इन सच सिचुएशन व्हाट डू यू डू? सो यू आर आई एम सॉरी, दिस चैट बॉक्स इज समवेयर क्रिएटिंग हर्डल, आई एम जस्ट ओके. सो you are a commandant at Kalyani, manning the international border of frontier South Bengal. Harish, an assistant commandant reporting to you, has received an important inside information that he wishes to share over a one-on-one conversation due to sensitivity of the matter. He shares information of terrorists who have recently entered the city of Kolkata from his inside sources. The terrorists are reportedly planning an attack at the base at Kolkata. Harish managed to be patient in the situation and shared this information responsibly and in a timely manner, due to which timely action could take place. You want to share the feedback to Harish. Now, how would you carry out the session? Using the star model again, because सामने वाले person ने काम किया है, now you need to give them a feedback. Because again, feedback किसी भी exceptional task के लिए अगर हम दे रहे हैं, so we are not talking about the routine roll calls or routine day-to-day debriefing things. We are talking about किसी ने कुछ अगर exceptional किया है, बहुत अच्छा किया है, now we are giving them feedback. Now we are giving them feedback in the form of appreciation maybe. So how would you conduct this session with it? Anyway. And I would like to hear the words, assuming that Mr. Harish is just right there in front of you. What
conversation would you have with him? Anyone, sir? क्या कहना चाहेंगे कि हरीश आपकी टीम से हैं एंड ही परफॉर्म समथिंग, सर ने अभी मॉर्निंग में एग्जांपल दिया था कि आज सुबह ही कुछ एक्सेप्शनल सा अचीवमेंट मिला है. सो हाउ वुड यू गिव फीडबैक, व्हाट वर्ड्स, व्हाट पैटर्न यू वुड फॉलो स्टार अप्रोच के हिसाब से अगर अपन बात करना चाहें तो? हमारे यहाँ मैम क्या है, इनफॉर्मल ज्यादा इस मामले में फॉलो करते हैं. जी जी. पहले तो जब उसने इन्फॉर्मेशन दी तभी उसको पैट दे देंगे कि भाई बहुत अच्छे, ऐसे ही बताया करो समझ. बिल्कुल. आगे जो एक्शन हुआ, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन पे एक्शन हुआ है तो उसको साथ साथ उसके केस भेजेंगे रिवॉर्ड के लिए. उस दैट्स हाउ वी अप्रिशिएट द गुड वर्क डन. बिल्कुल बिल्कुल. एंड सर दैट इज टर्म्ड एज पब्लिक अप्रिसिएशन, कि हम पूरा फॉर्मेलिटी के साथ में पूरी उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करके ओपनली वी आर अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन. So that's public appreciation and that's the best way of giving feedback. Amazing, sir. And Ratalas has written that appreciate him directly, then narrate the incident in Sainik Sammelan for Commander Conference. Will recommend him for reward from higher up. Definitely, sir. That's something which is very very important. So क्या कहीं हम ये चीज मिस कर रहे हैं कि हरीश को भी बता पाए कि क्यों उसको इतनी तारीफ मिल रही है? अगर उसने कोई टास्क किया, उसे लगा हाँ इस तरीके से करना चाहिए, तो क्या हम उसे उसकी अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करके बताते हैं, या अगर नहीं तो क्यों नहीं बताएंगे, तो क्या उससे कुछ बेनिफिट होगा? Can you repeat, madam? माय क्वेश्चन सर इज, कोई भी इंडिविजुअल जब अपना कोई टास्क करता है तो एक सेल्फ अवेयरनेस, अपनी खुद की स्ट्रेंथ की होना, क्या ये बेनिफिशियल होता है? हरीश ने काम किया, उसे अप्रिसिएशन तो मिला, पर क्या एक्सेप्शनल उसने स्किल्स पोर्ट्रे की, क्या हम उसे उस चीज में अपडेट करते कि ये चीज तुमने बहुत अच्छी की इस पूरे काम में? ऑफ कोर्स तुमने पूरा बताया, लेकिन ये जो पर्टिकुलर टैक्टिक जो तुमने अपनाई ना, ये बहुत शानदार थी, इसको आगे भी मेंटेन रखना. क्या वो एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक हम देते हैं? यस डेफिनेटली. जी सर. बिल्कुल देते हैं, पर्सनलाइज बिल्कुल देते हैं सर. ऐसा क्यों, मतलब क्या बेनिफिट रहता है, क्या कुछ स्पेसिफिक इम्पैक्ट आता है उसका? बिल्कुल इंकरेजमेंट मिलता है उसको फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए. जी मैम इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा. जी सर. एक स्पेशल कोई भी अचीवमेंट होता है, पहले तो उसका फीड जो मैसेज है, सूचना है, जी बटालियन हेडक्वार्टर में आएगी, बटालियन हेडक्वार्टर से हायर हेडक्वार्टर से दिल्ली तक जाएगी, डीजी बीएसएफ तक. जी सर. तो जो फिर वो नीचे से पता करते हैं कि ये ऑपरेशन हुआ है, इसमें कितना कंपनी कमांडर का रोल है, कितना जवानों का रोल है. जी सर. फिर वो अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, भाई ये जो ऑपरेशन हुआ है ये बहुत एक्सीलेंट हुआ है. ये बात पहुंचती जिस जो लास्ट जवान ने ऑपरेशन किया है, जिस कंपनी कमांडर के अंडर में ऑपरेशन हुआ है, उस तक वो जो है कॉम्प्लीमेंट पहुंचना शुरू हो जाते हैं. जी बिल्कुल. और उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जो मैंने काम किया है, इसको मैं यानी कमांडेंट भी और कंपनी कमांडर भी रोल कॉल में, एक शाम को रोल कॉल होती है, सुबह होती जी है, जी जी. उसमें जो है प्रॉपर बताया जाता है ये जो हमने आज काम किया है, अचीवमेंट किया है, हायर हेडक्वार्टर ने, सीओ साहब ने, डीआईजी साहब ने, सबने अप्रिशिएट किया, सबको बधाई दे दी. साथ में हायर हेडक्वार्टर से ये भी ऑर्डर आ जाता है बहुत बार कि इनका जो है डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन कार्ड या अवार्ड के लिए नाम भेजा जाए तुरंत. ये हमारे कई केसों में, बहुत सारे केसों में ऐसा होता है, तो उसको डायरेक्ट पता लगता रहता है, एक बधाई, दो बधाई. फिर जो है एक छोटे मोटे न्यूज चैनल पे भी आ जाता है. जी सर. जो वीक डेली के न्यूज़पेपर है, दोपहर बाद निकलने वाला, दोपहर के बाद निकलने वाला, उसमें भी ये छोटी छोटी खबरें आ जाती है. जी सर. तो उसका और हौसला बढ़ जाता है, भाई मेरी खबर आई है, जो हमने इस इलाके में ऑपरेशन किया था उसकी सूचना के लिए. बहुत सारे साधन है जिससे उसका मोरल काफी हाई होता है, और जो काम करेगा तो उसका काम करने का तरीका और ज्यादा बेहतर होगा. बिल्कुल बिल्कुल सर. सो एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जब मल्टीपल लेयर्स में उसके पास फीडबैक आता है, एंड
That motivates. That's amazing, sir. So with that, let's move on. Now, again, ये चीज पे बात हो गई है. Now this is a la carte. We've had lunch enough, but again, I'm offering you different kind of sandwiches. This is the classic sandwich. तो क्यों लगता है ऐसे जब मैं फीडबैक की बात कर रही हूँ तो क्लासिक सैंडविच की बात क्यों कर रही हूँ? एनी आइडिया? चलिए, सर जब हम लोग फीडबैक देते हैं इट्स नॉट ऑलवेज ऑन दी गुडी साइड. फीडबैक बहुत बार नेगेटिव टास्क के लिए भी होता है. जैसे अभी हरीश ने रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई थी, उस अरुण ने, तो उसका भी फीडबैक था, नेगेटिव था. तो अगर हमने सिर्फ ये कह दिया, वापस से सर उसी पॉइंट पे जा रही हूँ कि बहुत ही लाउजी रिपोर्ट है, तो पर्सन के डीमोटिवेट होने का भी बहुत एक डर उसमें रहता है. कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, कई बार आगे फ्यूचर के लिए एक फियर सा माइंड में स्टैब्लिश हो जाता है. सो एक डायरेक्ट फीडबैक हर बार देना ठीक नहीं है. ऑफ कोर्स आई एग्री सर कि हम लोग हर बार फ्लावरी फीडबैक नहीं दे सकते, बहुत बार ब्लंटली बताना पड़ता है. और वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे सामने वाला पर्सन परफॉर्म कर रहा है, कितना लेवल ऑफ सिंसियरिटी डिमांडेड थी, क्या सिचुएशन है, कितना टाइम दे पा रहे हैं, क्या रिलेशन हम मेंटेन कर रहे हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग सिचुएशंस के पे हमारा फीडबैक देने का तरीका भी अलग अलग होता है. तो जब हम फीडबैक देते हैं ना सर, हमें ये ध्यान रखना होता है कि सामने वाला डीमोटिवेट भी नहीं हो, उसे अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी पता हो, उसे पता हो कि उसको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसे ये पता हो कि उसका सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखा जा रहा, उसके पॉजिटिव चीजों पर भी नजर है. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने गलतियां की, उसने बहुत कुछ अच्छा भी किया है और वो भी एक्नॉलेज हो रहा है. तो थोड़ा सा और एडवांस इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो सामने वाला पर्सन, ऑफ कोर्स सारी चीजें वो सॉर्ट हो जाएगी. सो ये सारी चीजों को कवर अप करते हुए जब हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड फीडबैक दे रहे हैं, अगर अपन डीब्रीफिंग बात करते हैं सर, वो मैं जितना समझती हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग रोल कॉल्स पे बात हो रहा है, बट अदर देन दैट जब हम इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल भी फीडबैक दे रहे हैं, इंडिविजुअल को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं, और नॉट जस्ट फ्रॉम बॉस और या भी आप लोगों से अपने अंडर कमांड्स को जाता है, विद इन अंडर कमांड्स, विद इन द पर्सन ऑफ सेम हायरार्की एज वेल, जब एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं कि हाँ ये अच्छा था और इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर ले. तो यहाँ सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविच टेक्निक्स बताई हुई हैं, जो सैंडविच टेक्निक्स हेल्प करती है कि अच्छा ये वाली तरीके से अगर अपन सामने वाले पर्सन को उसका फीडबैक देंगे ना, तो वो उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा. इनफैक्ट the person would be able to bear whatsoever heavy feedback we are offering. तो जब यहाँ पर सर हमने ये वाली बात की थी ना, ये लाउजी रिपोर्ट वाली, such a lousy report, will you ever learn the report? और इसका ये जो debriefing था सेकंड बी पार्ट की रिपोर्ट which you made yesterday needs some more relevant data and formatting. So why don't you do it again? तो ये सर एक तरीका है फीडबैक देने का. हम बात सेम ही कर रहे हैं बट इस तरीके से कर रहे हैं कि सामने वाला बहुत हर्ट नहीं हो जाए इससे, या बहुत डीमोटिवेट नहीं हो जाए. ऐसा तो नहीं हो कि हमारे फीडबैक से मोरल डाउन हो रहा है. तो एक जो फर्स्ट टेक्निक है सर, ये है क्लासिक सैंडविच टेक्निक. तो बड़ा मतलब ऊपर थोड़ा सा फर्म पार्ट होता है, फिर सॉफ्ट सा मीट अंदर इनसाइड होता है, देन अगेन दी फर्म लेयरिंग. तो इसका सर सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस बात करते हैं कि क्या अच्छा था, फीडबैक दिया कि नहीं इतना सब कुछ अच्छा था पर ये थोड़ा सा एस्पेक्ट ऐसा है जो नेगेटिव रह गया. आप फिर उसके बाद फिर से, पर ये सारी चीजें भी अच्छी थी. तो एक लेयरिंग हम क्रिएट कर देते हैं. लेयरिंग में प्लस जो स्टार्टिंग एंड एंड जो होता है वो बहुत फोकस्ड होता है, स्ट्रेंथ पे फोकस्ड होता है, उसके पॉजिटिव टॉक्स पे फोकस होता है. इन बिटवीन वी जस्ट स्लाइड दी नेगेटिव फीडबैक कि बस थोड़ा सा ये है, इसमें इंप्रूवमेंट कर लो. तो द पर्सन इज एबल टू एडजस्ट. अच्छा ठीक है, कुछ गलतियां रह गई, मैं सुधार लूंगा, बाकी तो आगे पीछे सारा ऊपर नीचे सही था, बीच वाला जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो गलत रह गया, आई विल बी एबल टू वर्क ऑन इट. सो दैट इज द फर्स्ट टेक्निक, क्लासिक फीडबैक टेक्निक, क्लासिक सैंडविच टेक्निक. अब सर एक छोटा सा केसलेट है, फटाफट से एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शायद इसी अप्रोच को लेते हुए ये अपने को हेल्प कर जाएगा. It says you are managing a team. Preeti is one of your team members. Preeti had led a brainstorming meeting for an important project. Habitually, Preeti does not circulate the agenda prior to the meetings. She leads, which ends up in extra time needed for the building context at start by you. You have pointed that out to her many times. After one such meeting, you want to tell her to be more organized.
How will you use the classic sandwich technique to do this? Classic sandwich means positive first, बीच में थोड़ा सा negative डाल दिया, then again positive. So कैसे करेंगे? How would you be giving such feedback to Preeti? Anyone, please. कैसे प्रीति को हेल्प करेंगे हम कि अब और ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, सब कुछ अच्छा कर रहा है पर ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, क्लासिक सैंडविच मेथड से कैसे करेंगे सर? बाय इशूइंग एडवाइस, यस सर, बस एडवाइस तो मानसिंह सर ऐसा नहीं होगा कि अपन डायरेक्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट एडवाइजरी दे रहे हैं, तो पर्सन ऐसा नहीं होगा कि अच्छा सारा अच्छा काम छूट गया। मैम एडवाइस में बताएंगे ना, एडवाइस में बताएंगे कि आपने क्या क्या कमी की है, क्या आपको करना चाहिए था। जी सर। अदरवाइज अगर उसको मतलब डिस्करेज करना हो तो सीधा वार्निंग देंगे। बिल्कुल 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 सर। और वही क्लासिक सैंडविच टेक्निक, एडवाइस देना मतलब उसे बताना कि हाँ प्रीति मतलब बहुत अच्छे से सेशन ले रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अगर एडवाइजरी अगर अपन क्या कहते हैं इसको एजेंडास फॉरवर्ड कर देंगे तो देखो ये सही हो जाएगा ना। तो ठीक है जी सर। हमारे यहाँ एक होता है कि सबको बोला जाता है कि पेन और पेपर रखें, दूसरा चेकलिस्ट रखें। जी सर। प्रीति को बोलेंगे कि आप अपना एक चेकलिस्ट रखिए और उसमें टिक करते जाइए कि क्या क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आप करेक्ट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल जरूर सर, वो तो जरूरी है, चेकलिस्ट में अगेन हेल्पफुल। लेकिन इसमें ये है ना कि इसमें ये है कि यू हैव पॉइंटेड आउट दैट आउट टू हर मेनी टाइम्स, वो अक्सर वो कैसा करते हैं तो उसको एडवाइस तो देना बनेगा। सर बात ये ना हमें क्लासिक सैंडविच टेक्निक से देना है, मतलब डिमोटिवेट भी नहीं हो जाए पर्सन, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हाइड नहीं हो, उसको भी अपन हाईलाइट कर दे क्योंकि बाकी सारा काम तो वो अच्छा कर रही है, पर उसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी सरका दे कि भाई इस एस्पेक्ट पे तो काम करना ही करना है। नागेंद्र से कह रहा है विल चेक व्हाट हर बेसिक प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल गिविंग फीडबैक। जब तक हम वी डोंट यू नो वेयर देयर शूज विल नेवर नो। So if you want to become a good manager, you will have to know what they're going through. That's very important. I guess forces में तो बहुत जरूरी है because you live their life. So I guess वो वाला issue आप लोग को कभी नहीं आता होगा because you actually live with them. You know what is the situation they are facing. So of course, but again at the same time बहुत सारे personal issues हो रहे होते हैं, family issues हो रहे होते हैं जो हमें जानना जरूरी होता है. And that is where creating bonding or strong relationship plays a role. और उनको ध्यान रखते हुए हम feedback देते हैं. बट ओके सर, यस राइटली सेड, अग्रीड, बेसिक प्रॉब्लम चेक करना इज जरूरी। तो और क्या तरीका होगा सर, कुछ और इनपुट्स इसमें देना चाहेंगे क्लासिक सैंडविच टेक्निक से? अच्छा सर एक बात बताएं, फोर्सेस के एस्पेक्ट पर भी मैं पूछना चाह रही थी, क्या क्लासिक सैंडविच टेक्निक फोर्सेस में काम देती है कि अच्छा बताया, नेगेटिव बताया, फिर अच्छा बता दिया? क्या ऐसा लगता है कि फोर्सेस में हम ये यूज करेंगे तो बेनिफिट होंगे? Yes madam, it is not a one day affair, it is a day to day affair. So it is always better that this technique should be useful, and we are using it. You're using it. Great, sir. All right, sir. In that case, let's move on to the other phase, that is open-faced sandwich. Open-faced sandwiches, you have almost bombarded the person with what negatives that person has. Openly उसे platter में serve किया है, and then by the end of the meeting, you tell them कि नहीं, ये सारी चीजें अच्छी भी है, you've covered it up with nice fluffy bread, कि हाँ नहीं बहुत सारा गड़बड़ था but अब अच्छा भी है. So by the time the meeting is over, the person is coming out and that person starts thinking कि नहीं चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा तो है, वो जो थोड़ा सा खराब था उसे improve कर लेंगे. So that is this open-faced sandwich technique wherein you give the person feedback first, and फिर जब क्लोज हो रहा होता है फीडबैक का तो उसको उसकी स्ट्रेंथ की भी याद दिला देते हैं. भी ऐसा नहीं है कि आपको एक नेगेटिव फीडबैक मिला है तो सब कुछ नेगेटिव है, आप पॉजिटिव में बहुत सारा काम कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ इट इज डन. सर एक और अगेन क्विक केसलेट देख लेते हैं इस सिचुएशन में, एंड दैट इज वन ऑफ योर टीममेट्स Anuj consistently arrives late for work. As luck would have it, Anuj is one awesome employee and you have been late in taking actual lateness because you don't want to risk losing him. Unfortunately, now other employees are complaining that Anuj is getting special treatment. You realize that you can't stall any longer without risking your reputation as a leader. It's time to take some direct action. How can you use the open-faced sandwich technique to do this? ऐसा तो हमारे फोर्सेस में भी हो सकता है, कोई पर्सन बहुत अच्छा है स्पेसिफिकली बट गलतियां तो सब करता है,
मैम हमारे यहाँ कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है। जी सर। काम चलता है सबके बिना। Agreed, sir. Agreed. Nobody, and discipline is the backbone of the force. Timing is sticking to timing is very important. If one cannot value time, he is worthless. Agreed. He will not be tolerated at all. Yes. So that's the scenario of the forces. I agree. But Yes, corporates may. And it has to be like this. Yes. Then only we can thrive. Yes. Agreed. Otherwise, ma'am, it is not possible to run the forces and get the task accomplished. Of course. But So sir, no compromise on this issue. तो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। Agreed, sir. नहीं होगा। Agreed, sir. होना भी नहीं चाहिए। I personally believe that if you don't value time, you don't बैंक value में जाते anything. हैं और बैंक वाला अगर अपनी सीट पे हमें नहीं मिलता 9:30 बजे, तो हम कितना उसको कोसते हैं कि देखो ये बैठा नहीं है। पर सर ये तो कल्चर है जो कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट सब जगह मिलता है कि लोगों को टाइम पे लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता। We cannot Agreed. afford at all. Yes. But at the same time, there cannot be ifs and buts in this. yes. And at the same time, we I was not saying like that, but yeah, we Indians have this very strong reputation. अच्छा टाइम तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा। Because ये तो मैम बेसिक से हमें सिखाया जाता है कि टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना ही पहुंचना है। बिल्कुल। टाइम पे नहीं पहुंचना, टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना है। तो अगर किसी ऐसे पर्सन ने ऐसी छोटी मोटी गलती कर दी है, मतलब टाइम की गलती बहुत बड़ा मान रहे हैं आप, तो मान लीजिए ये गलती हो गई किसी से। And it is repetitive. Family it is reason. repetitive. It is not once or twice. It is repeating. He is repeating. So Yes. he is habitual offender. So what action? Such person cannot be spared, madam. He has to be punished. Disciplinary action will be taken. So is it that strict disciplinary action और या फिर कुछ warning भी issue होती है? No warnings, madam. Strict action. Fired, madam. Oh, that is No other option. सर इसमें पहले कभी उसको कुछ बोला ही नहीं गया, तो फर्स्ट टाइम है तो पहली बार में ही आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे क्या? हाँ वीरेंद्र सर, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कुछ तो वार्निंग इशू करते होंगे। पहले तो आपको सर समझाना ही पड़ेगा, पहली बार तो समझाएंगे। कितनी बार तो करने नहीं देंगे ना, पहली बार में समझाया ही नहीं गया। पहले इसमें वर्ड जो यूज हो रहा है कंसिस्टेंटली वर्ड यूज हो रहा है। चलेगी नहीं कंसिस्टेंटली अराइव्स लेट। जो कंसिस्टेंट है उसको कंसिस्टेंट दिखा। सर इसको पहले कभी समझाया भी तो नहीं ना, इसको तो सोचा कि इसके बिना कंपनी चलेगी नहीं। If not fired, he has to be taken on task. तो सर एक ओपन सैंडविच नहीं दे सकते क्या उसे? कि मतलब ओपन सैंडविच में मैडम उसको एक स्कोप मिलता है लास्ट में कि अगली बार में मेरी गलती शायद माफ हो जाएगी। अच्छा। And such excuses cannot be permitted. अच्छा सर, एक बार मैं यहाँ पूछती हूँ, अब टाइम वाला फैक्टर को हटा देता है और भी गलतियां होती होंगी सर, मतलब ये टाइम वाला एग्जांपल तो शायद ये रॉन्गली आ गया यहाँ नहीं आना चाहिए। हमारे में फिट नहीं बैठता ये टाइम वाला। अग्रीड सर तो इसको रिप्लेस करते हैं। We have a very special law. जी सर। We have special law, BSF Act and rule. Even absence from leave is also absence without leave is also very serious offense. Yes sir. So in civil parlance, they can be petty excuses, but in our case, these are serious offenses. Yes, sir. So that is why the culture is different. Working culture. Sir. Agreed. तो सर ऐसा करते हैं, ये टाइम वाला एग्जाम्पल हटाते हैं और ये मानते हैं कि ये कुछ और फॉल्ट हो गई होगी, तो मे बी टाइम पे नहीं आने की जगह चलिए आप मान लेते हैं कि एजेंडा ही नहीं सर्कुलेट, तो आप प्रीति वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या ओपन सैंडविच हेल्प करता है? लेयरिंग नहीं कर जनरली मैडम, जहाँ कंसिस्टेंसी आप बता रहे हैं वो किसी भी केस में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बिल्कुल। रिपीटेडली परफॉर्मिंग द सेम मिस्टेक। जी। डिफरेंट व्यूज। मेरे अलग व्यू है अपना। रमेश सर। जी सर। हाँ, इसमें बीएसएफ में क्या होता है मैम कि हम लोग में अगर इन केस कोई बंदा अगर कोई गलती करता है तो हम लोग रादर से एक तो कभी कभी लेवल देखा जाता है कि वो किस लेवल का है, अगर कांस्टेबल रैंक में है या एसओ लेवल में है या अफसर लेवल में है, तो जिस रैंक में है उस लेवल के हिसाब से उसको जो है क्लोज डोर में उसको एडवाइस कर देते हैं कि भाई इस तरह की गलतियां हैं, आप उसको ना करें। अगर कोई प्राइज वर्दी वर्क है तो दैट विल जो है उसमें एक अच्छे फोरम में उसको जो है लाते हैं। अगर वो हैबिचुअल है गलती, मतलब
बार बार कर ही रहा है, तो उसको पनिशमेंट देने का हमारे अंदर जो प्रावधान है उसमें भी पूछा जाता है कि आर यू एग्री, जिससे मान लीजिए छुट्टी से लेट आया है या कोई ऐसी कोई गलती किया है, तो पनिशमेंट देने से पहले एज ए कमांडेंट, एज ए वी आर वर्किंग एज ए जज, नॉट एज ए कमांडेंट, एट दैट टाइम वी वेयर वर्किंग एज ए जज, कि हम इसको जो पनिशमेंट दे रहे हैं इसका इफेक्ट इसके परिवार पर भी पड़ता है और इसके और दूसरे फाइनेंशियल भी पड़ेगा और उसके सोशल इफेक्ट भी पड़ता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूछते भी हैं कि क्या अपनी गलती मानते हो, और वो हम लोग को भी पता है, हैबिचुअल है वो, उसके बावजूद भी हम लोग अगर सजा भी देते हैं तो मिनिमम की तरफ जाते हैं। जी 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 जी। एक एग्जाम्पलरी तभी देते हैं जब वो हम ये लगता है कि अब इसके बिना एक काम नहीं चल पाएगा, तो इन दैट केस जो है हम उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वी कंसीडर इन ए लीनिएंट व्यू, और उसको जो है उसके हर पहलू को ध्यान में रखते हैं, उसको जो है मौका देते हैं कि आगे से इन फ्यूचर आप जो सुधर जाए या इस तरह के अपने में इम्प्रूवमेंट लाएं। तो हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा सा दूसरे डिफरेंट टाइप का है। मैम अग्रीड रमेश सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक चीज है, बट यही मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि एक जो पूरा फेज होता है ये समझने का कि पर्सन के सिचुएशन से गुजर रहा है, पर्सन को समझाने का क्लोज डोर पे भी, पनिशमेंट से पहले सिचुएशन को जज करने का, वो सारा एक प्रोसेस होता है। और सारे प्रोसेस को मैं समझती हूँ कि हम फीडबैक के अंदर देंगे कि भाई आज तुम लेट आए हो, तीसरी बार मैं देख रहा हूँ कि तुम लेट आए हो, क्यों लेट आ रहे हो, ऐसा क्या रीजन है, देखो लेट नहीं आओ नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। रमेश सर, आई गेस यू वुड अग्री विद मी। ये पूरा प्रोसेस से हम उसे कांस्टेंट फीडबैक ही तो दे रहे हैं, व्हाट एल्स आर वी डूइंग? हम उसे लगातार बता रहे हैं, चाहे वो एडवाइजरी की फॉर्म में हो, चाहे वो सजेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो वार्निंग की फॉर्म में हो, पर हम इसमें जो आप बता रहे हैं पनिशमेंट लास्ट विकल्प है, वो उससे पहले जो स्थितियां होती है, परिस्थितियां होती है, उसको एज ए मतलब वर्बल उसको एडवाइस देना या उसको और भी जो चीजें हैं उसको बताना, वो सब कुछ होता है। हमारे लोअर लेवल पर होता है, सीएचएम भी बोलते हैं, बीएचएम बोलता है, और भी लोग बोलते हैं। ये तो पनिशमेंट अल्टीमेटली अगर देखा है तो पनिशमेंट कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जी। और वो जो चीज हम लोग, लेकिन इसका इट डजंट मीन्स कि अगर किसी को कोई फोड़ा हो रहा है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन न करे, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तो अगर उसका ऑपरेशन किया उसका फोड़ा सही नहीं होगा। तो ये जो चीज है एज ए कमांडर, एज ए कमांडेंट जो है वी हैव टू डू इट। बिल्कुल सर, वो ऑपरेशन करने से पहले उसे मेडिसिन देकर कुछ ऑइंटमेंट लगा के ठीक करने की भी तो कोशिश की जाती है, और वही तो है फीडबैक। सर यही थोड़ा यही ऑपरेशन का तरीका सर कॉर्पोरेट में भी है। And there are other issues in this scenario. जी सर। Suppose we have 2 employees. जी सर। One coming at 9 punctually, right. Another coming at 10. The first person who comes at 9 till evening, he doesn't do even one task. Yes. Other person coming at 10. Yes. Before 1 o'clock, he completes around 10 tasks. Yes. Whom do you prefer? Agreed. There are many situations. And that is why we say situation play a major role. Yeah. Yes. Because we are task oriented. It's not he should come at 9 and sit and go agreed. back. Agreed. Very agreed, sir. And this So is something the situation where you are. sector. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैं भी मोहन सर से सहमत हूँ मैम। इसमें भी ये केवल ये लिखा है कि वो लेट आता है, ये कहीं नहीं लिखा है कि वो काम नहीं करता है। उसके लिए मेंशन है कि he is one awesome employee. He's awesome. तो उसको तो हमको लूज नहीं करना है ना? तो अमेजिंग, उसके बाकी काम तो सब ठीक है। ऐसी सिचुएशन मैम हमारे यहाँ हम लोग रोज डील करते हैं। जितने ऑलमोस्ट सारे मुझसे सीनियर हैं, सबका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है जी। 10-20 बंदे इस टाइप के होते ही होते हैं और उनको हम कहीं न कहीं लगा करके रखते हैं। अल्टीमेटली हम अगर देखें तो उनसे हम काम ले ही लेते हैं। पर वो काम लेने से पहले सर उनको ये बताते भी तो होंगे हम? नहीं, वो बताते हैं, वो तो बताते हैं, उनको पूरा भरपूर मौका मिलता है, टाइम टू टाइम उनको बताते रहते हैं। और वही तो फीडबैक है। फीडबैक और है क्या? फीडबैक यही तो है। Never let the things reach to that extent that these become habit. Yes. और सर ये जब हैबिट फॉर्म हो जाती है ना, तो स्ट्रिक्ट एक्शन पनिशमेंट तो कॉर्पोरेट में भी है, फायर कर दिया जाता है। Corporate is more stringent than our organization. I agree.
At times, yes, sir. We have emotions. We deal with emotions. Yes. But in corporate, they don't have such emotions or Agreed, empathy, sir, very whatever agreed. you say. Agreed, sir. Very much agree, because we in corporates ये family culture follow नहीं होता है. There's strict mechanical relationship most of the time, and of course people are working towards building relationship, और इसीलिए management जितनी trainings होती है, we keep on delivering lectures on building relationship, feedback culture, because ये जरूरी है. Machines are not working. It's human brain, human emotion, a man, a human being, a human soul is working. So without empathy, without emotions, without personal connect, nobody can survive and sustain. तो रमेश ने कहा कि जी सर, हम देखते हैं कि उसको कोई नुकसान होगा तो उसकी फैमिली को भी उसको सफर करना पड़ेगा. बिल्कुल. So we also take note of this thing as well. But still, if somebody is incorrigible, then there is no way out, because discipline has to be maintained. Agreed. Yes, yes sir, yes sir. And of course that's very important. और इसीलिए सर हम लोग फीडबैक की इम्पोर्टेंस जानते हैं कि सामने वाले पर्सन को जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी कि कहाँ गलतियां हो रही है, कौन सी गलतियां उसकी ऑब्जर्व की जा रही हैं, वो अपने आप को सुधार नहीं पाएगा. तो जैसे अभी नगेंद्र सर ने मैसेज किया, जस्ट टेल हिम दैट इज लेट रिपोर्टिंग माइट कॉस्ट हिम लॉस्ट एडवांटेज ऑफ द अदर क्वालिटीज. ऑफ कोर्स सामने वाले पर्सन को आप अवेयर नहीं करेंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि उसकी इन गलतियों की वजह से उसे क्या नुकसान हो सकता है, तो वो नहीं सुधरेगा. यही तो सर फीडबैक है. फीडबैक का रीजन क्या है? फीडबैक सर एक ऐसा फोकस्ड कॉन्वर्सेशन है जो कि ये बताता है कि आप जो भी पर्सन है वो और एम्पावर होगा अपनी स्किल के साथ में, फ्यूचर के लिए और अपनी स्ट्रेंथ के साथ में रेडी होगा, अपनी स्पेसिफिक जो स्ट्रेंथ है उन पे वो फोकस करेगा, जिससे उसका भी बेनिफिट हो और टीम का भी बेनिफिट हो. तो दैट इज फीडबैक. तो हर एस्पेक्ट है जहाँ एक इंडिविजुअल गलत जा रहा है, जहाँ इंडिविजुअल कुछ गलतियां कर रहा है, कुछ बहुत एक्सेप्शनल कर दिया है, उसको उसे एक्नॉलेज करना है. तो जब हम उसे अवेयर करा रहे होते हैं, वो हम उसे फीडबैक दे रहे होते हैं. सो इट्स समथिंग व्हिच इज प्रायर स्टेप टू एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट. ऐसा नहीं है ना कि हम लोग डायरेक्टली शूट कर देते हैं. नो, वी गिव वार्निंग्स, वी गिव मल्टीपल वार्निंग्स, वी कीप देम टेलिंग कि व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड देन ओनली वो तो एक लास्ट एक्शन है कि फाइनल पनिशमेंट मिल रही है. और ये फीडबैक देने का तरीका क्या क्या हो सकता है, उसी पर हम बात कर रहे हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ये है कि गलती छोटी है, बहुत सारी चीजें अच्छी है, 10 से 1 में उसने 10 टास्क कंप्लीट कर दिया है, तो हम इस पर्सन को यूज नहीं करेंगे, बहुत ऑसम एम्प्लॉई है, तो सैंडविच फॉर्म में फीडबैक दे देते हैं. रिपीटेडली गलतियां कर रही है तो फिर नहीं, उसको थोड़ा सा ओपन फेस सैंडविच दो कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है, चाहे कितना भी अच्छा तुम काम कर रहे हो, बट अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी आगे. तो दैट इज एन ओपन फेस सैंडविच कि अब तुम अवेयर हो जाओ. अब मैं मीठी मीठी बातें या गुडी गुडी थिंग के साथ में तुमसे बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट इन कंडीशन टू डू दैट. तुम्हारे तो रिपीटेटिव गलतियां हो रही है. तो दैट इज ओपन फीडबैक. हर सिचुएशन पे हमको अलग तरह का सैंडविच देना होगा सर, कि अभी वो वाला सैंडविच नहीं काम करेगा तुम पे, नाउ आई नीड टू गिव यू, ऑफर you this sandwich. So that is where these techniques of delivering sandwich or maybe delivering feedback, helps. I guess we agree. Give me a thumbs up if we do. Good afternoon, ma'am. Thank you, sir. Good afternoon. जी सर. ये इसका मतलब ये नहीं कि काम अच्छा करता है और डेली लेट आए. फोर्सेज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो काम अच्छा कर रहा है, इसका मतलब ही इज टेकिंग लिवरेज, कि उसका जब मन आया तब काम कर रहा है. ये सेकेंडरी चीज है. बिल्कुल. डिसिप्लिन इज द प्रायोरिटी. जब तक आदमी डिसिप्लिन नहीं है, काम की कोई वैल्यू नहीं है. काम करे, अगर 10 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, काम अच्छा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने विम्स एंड फेंसेस पे फोर्सेस को चलाएगा. अग्रीड सर, अग्रीड नहीं करता इस पे, क्योंकि अगर लेट आ रहा है, इनडिसिप्लिन्ड है, तो उसकी यहाँ पे कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. बिल्कुल सर, और उसकी रिक्वायरमेंट होनी भी नहीं चाहिए, एंड दैट इज व्हाई स्ट्रिक्ट वार्निंग्स आर गिवन. जी सर. तो ये मैडम जो सुरेश ने बोला, शासनी ने, आई एम टोटली एग्री कि काम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो है डिसिप्लिन को भूल जाओ, टाइमिंग को भूल जाओ. टाइमिंग एंड डिसिप्लिन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. काम इज मतलब सेकेंडरी एंड थर्ड प्रायोरिटी. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अग्रीड, अग्रीड सर. एंड नॉट इन फोर्सेस सर, एनीवेयर. आप अगर एक वर्क फोर्स के साथ करो, 10 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, सब लोग पूरा टाइम दे रहे हैं, तो दिस इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू गिव एंटायर टाइम. अब कई बार फैमिली इश्यूज होता है, कई बार कुछ ट्रैफिक वाला इश्यूज हो जाता है, कोई भी इशू, एक पर्सन गलत लेट आ रहा है, वंस इट कैन बी टॉलरेटेड, सेकेंड इट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लासिक सैंडविच,
कि अच्छा है पर गलत आ रहे हो, लेट आ रहे हो, अब सुधार लो। थर्ड, अगर रिपीटेड हो रहा है तो फिर तो स्ट्रिक्ट वार्निंग की जरूरत है ही है, फिर फायरिंग का सिचुएशन आता है सर। और सर यहीं पर एक ये वाला ये जो नेक्स्ट सैंडविच है ना, पैलियो डाइट, मीट दे दो, स्ट्रिक्ट सैंडविच दे दो, कोई पॉजिटिव गुडी गुडी थिंग नहीं। रिपीटेड है, गलतियां कर रहा है तो बी वेरी फर्म, उसको अपफ्रंट होके बताना है कि ये गलतियां कर रहे हैं, दैट इज अनदर वे। तो जैसे ही हम ये बातचीत करते हैं, नहीं द पर्सन इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपफ्रंट उससे ये मैसेज जाना चाहिए, एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ फीडबैक, very straightforward upfront feedback that no, this cannot be tolerated. That is one way, the paleo diet, which is very very important. So हम लोग हमेशा goody things में wrap करके नहीं offer कर सकते हैं feedback. We have to be upfront, we have to be telling the person that no, this is not correct, and that's the upfront feedback. और उसके बाद situation of course punishment की तो आती है. So this is another feedback way. So such example I guess हम लोग इस पे बहुत discussion कर चुके हैं. paleo diet टाइम वाला एक अगर फैक्टर आता है तो डेफिनेटली विल बी गिविंग देम अ पैलियो डाइट, एंड दैट्स वन इम्पोर्टेंट फैक्टर। स्ट्रिक्ट अपफ्रंट फीडबैक देना जरूरी होता है। एंड द लास्ट वन इज अनट्रेडिशनल रैप। तो सर ये लेयरिंग जो दिख रही है ना, इट्स लाइक कुछ अच्छा बोला, कुछ नेगेटिव बता दिया, फिर कुछ अच्छा बोला, फिर कुछ नेगेटिव बता दिया। सो दिस इज इन अ सिचुएशन वेयर इन थोड़ा सा क्रिटिकल सा मैटर है, वार्निंग्स दे चुके हैं, अब तो हमें पनिशमेंट भी देना होगा, या फिर सामने वाला पर्सन एक्सेप्शनली वेल है पर कुछ कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो कि अनइंटेंशनल है, अनअवेयर्ड वे में करी हुई है, तो हम उसे अनट्रेडिशनल रैप में सिचुएशन फॉलो करते हैं। एक इसका सर एक तरीका ये होता है कि हम वी इनिशिएट स्ट्रेंथ फोकस कॉन्वर्सेशन, स्टार्ट करते हैं कि क्या अच्छा है, फिर उसके बाद में हम उसे फीडबैक दे रहे होते हैं, फिर से हम स्ट्रेंथ फोकस कॉन्वर्सेशन पे आ रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा सा गलती हुआ पर तुमने वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उस वाले सिचुएशन में तुम्हारे जो डिसीजन लिया था या तुमने जो स्टेप लिया था वो बहुत समझदार था, पर फिर उसे फीडबैक दे दिया कि लेकिन उसमें तो ये गलती भी थी, अगर इसको ऐसे करते तो शायद ज्यादा सही हो जाता, और फिर उसे क्लोजर में, पर देखो ओवरऑल तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, सो इस तरीके से काम करना होगा। सो दैट इज द क्लासिक, दिस इज अनट्रेडिशनल रैप, दिस इज नॉट क्लासिक सैंडविच, दिस इज द अनट्रेडिशनल रैप। जी सर, जी वीरेंद्र सर। Ma'am, it reminds me of a case. We long time back we received a decision from an honorable court. जी सर। Actually, one in other organization, one constable he was dismissed by holding inquiry for some act. So he approached honorable High Court, and in that the honorable court held that the punishment was just. And ma'am, you know what the honorable judge gave the remark? He said कि आप मस्तक पे अशोक धारण करते हैं, आपसे ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अग्रीड। और वो जी, तो इसलिए कुछ ऐसे जो फोर्स कल्चर जो है उसमें कुछ चीजें बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होती। अग्रीड, यस अग्रीड सर, अग्रीड। और वही कल्चर अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट अवेयरनेस डिलीवर करना जरूरी है, और इसीलिए हम समझते हैं कि एक फीडबैक कल्चर, एक मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी होता है। तो चाहे हम कोई सा भी फीडबैक फॉर्मेट प्रेफर करें, एक फीडबैक कल्चर बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फीडबैक कल्चर हेल्प करता है कांस्टेंट अवेयरनेस में। तो जैसे ही वीरेंद्र सर अपन बात कर रहे थे ना, नर्चरिंग वाला फेज की रिक्रूट आया है, फोर्स में आया है, उसने ज्वाइन कर लिया है, अब उसे एक्सपीरियंस लेवल तक लाने के लिए लगातार पॉलिशिंग की, ब्रशिंग की, नर्चरिंग की जरूरत है। तो ये नर्चरिंग वाले फेज में सर फीडबैक बड़ा काम आता है, क्योंकि हम जैसे ही हम ये कहते हैं कि नहीं ये आचरण एक्सेप्टेबल नहीं है फोर्सेस से, अग्रीड सर, पर वो एक आचरण डेवलप होने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। जब ज्वाइन कर रहे हैं ट्रेनिंग करके, तब वो आचरण डेवलप नहीं है, तब वो बिहेवियर डेवलप नहीं है। जब वो फोर्सेस ज्वाइन कर लेता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी नर्चरिंग होती है, उसकी पेरेंटिंग होती है फोर्स में, एज एन किड इज नर्चर्ड इन द फैमिली, वैसे ही फोर्स में न्यू रिक्रूट नर्चर होता है। तो उस पूरे ट्रेनिंग में हम उसे कांस्टेंट फीडबैक के साथ में कांस्टेंट वार्निंग, कांस्टेंट अपडेट्स, कांस्टेंट मेकिंग देम अवेयर
कि हाँ यहाँ सही है, यहाँ गलत है, ये और सही करना है, इस पे और वर्क करने की जरूरत है, ये काम बहुत बढ़िया है, इसको कंटिन्यू करो, नहीं नहीं ये सही नहीं कर रहे हो, ये तो हमारे फोर्सेस में नहीं होता, तुम कैसे कर रहे हो, ये इस कल्चर को सूट नहीं करता है, तुमको इस कल्चर में ढलना है। ये नर्चरिंग वाले फेज में सर बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस गेन कर लिया उसके बाद में ऑफ कोर्स हम लोग स्ट्रिक्ट वार्निंग्स पे काम कर रहे हैं, पर जब तक वो नर्चरिंग चल रही है तब तक हमें फीडबैक की बहुत जरूरत है। और एक कल्चर डेवलप करना, चाहे फोर्सेस की भी बात कर रही हूँ तो इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। चाहे I mean, हमारे in our कमांडेंट्स में force, जी madam, in सर our force, there is a layout system for every entry. जी सर We nurture them. We also Yes. nurture through 6 months process Right. while we are planted as an officer in the battalion. So it is existing, it is proven, and it also have own impacts. Of course sir, so if it's proven, I guess it's on the basis of different feedbacks. Agreed sir? Supriya sir? Yes मैम जी सर जी सर हमारे यहाँ मोर देन 90% काम हमेशा टीम वर्क में होता है, चाहे टीम में 2 ही लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे जो भी टास्क होता है हमेशा टीम बेस्ड होता है। जी सर जी। और ये इस फोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें एक्सपीरियंस लोग, कम एक्सपीरियंस वाले और बिल्कुल नए लोग भी होते हैं, तो हमेशा ये जो है उनकी पॉलिसिंग चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। जी कई बार बोल करके, कई बार काम दिखा करके, कई बार डांट करके, कई बार प्यार से, तो नर्चरिंग तो हमेशा चलती रहती है। बिल्कुल सर, और वही नर्चरिंग तो फीडबैक कल्चर है। तो चाहे हमारे कमांडेंट्स हमें कर रहे होते हो या फिर हम जब बटालियन के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे सबॉर्डिनेट्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम फोर्स पे, वो हमें फीडबैक दे रहे हैं। नर्चरिंग लगातार चल रही है और नर्चरिंग फीडबैक से ही चल रही है सर। अग्रीड आई गेस कि हम लोग सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही है, अब इसको और इम्प्रूव करो, एंड दैट इज द कल्चर विच इज डेवलप्ड। और अगर ये फोर्सेज में है तो सर वंडरफुल, एंड ऑफ कोर्स इस पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाई फोर्सेज आर फोर्सेज। वो फोर्स वहीं से आता है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है टास्क के लिए। तो एक जब एक नॉर्मल कॉमन नॉर्म पे, कॉमन टर्म्स पे हम लोग सब काम कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट क्रिएट्स फोर्स, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ फोर्सेस। सो अगर फीडबैक कल्चर की एक छोटी सी बात करिए, सो देन आई विल बी रैपिंग दिस सेशन अप, वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग द टाइम। कि एक तो एग्जाम्पल से लीड करना, वो भी तो हम एक फीडबैक दे रहे हैं कि हम उन्हें बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड ट्रस्ट का, कि अगर सामने वाले पर्सन ने गलती कर दी तो उसको, और हम गलती समझा रहे हैं तो वो डीमोटिवेट नहीं हो, उससे एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड ट्रस्ट की भाई हमें नर्चर करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए हमें बताया जा रहा है। तो अगर वो क्रिएट हो जाता है एक एनवायरनमेंट, तो दैट इज अमेजिंग। पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स, किसी ने अच्छा काम किया उसे जब तक टैप नहीं मिलेगी तो वो मोटिवेट नहीं होगा। जैसे आप बात कर रहे थे सर, रिवॉर्ड्स के लिए, उसके रिकग्निशंस के लिए, अवार्ड्स के लिए, मेडल्स के लिए उनका नाम आगे जाता है। तो यह पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स ही तो कर रहे हैं, और इसी से तो फीडबैक कल्चर डेवलप हो रहा है कि जब अपने सीनियर्स को बता रहे हैं कि हाँ दिस ये जो सूबेदार था या ये जो पर्सन था जिन्होंने काम किया, एक्सेप्शनल काम किया, तो इनको मेडल के लिए नाम आगे जा रहा है, इनको बधाइयाँ मिलनी शुरू हो रही है। तो हम पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। और जैसे ये रूटीन बन जाता है कि किसी खास मौके पे नहीं, रूटीन हर टास्क के बाद में, तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है एक फीडबैक कल्चर डेवलप करने में, जो अगर फोर्सेस में है तो बहुत ही बढ़िया बात है सर। I guess with this we approach the end of the session, and of course I do not have to talk about why do you think it's important to have a feedback culture, because forces already have it, so that is amazing. So just a few quick action plan जो कि आप ले सकते हैं कि अगर किस तरह का लीडरशिप स्टाइल आप, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसा लीडरशिप स्टाइल सही रहेगा, कब हम लोग स्टार फीडबैक किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि हम पूरे पर्सन को, सामने वाले अंडर कमांड जो है उनको बताएं कि क्या सिचुएशन में आपने क्या काम किया, उसका क्या रिजल्ट रहा, इसमें आपका क्या रोल रहा, आप क्या अच्छा कर सकते थे, आपने क्या अच्छा किया उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो या फिर उसको आप फॉलो कर सकते हो हमेशा, यू कैन कीप दैट अप। सो वो अप्रोच फॉलो करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक कल्चर क्रिएट करना, अगर ये ऑलरेडी है तो वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दिस, बट it's important that we keep maintaining that culture, that is very important. So every single time we are just leading somebody, we have to make sure that we are working towards maintaining this feedback culture. तो वो बहुत जरूरी है, और of course इसको promote करते रहना बहुत constantly important है। So we are done sir. Any insight that you are taking away sir, any kind of feedback, any questions that you are asked, otherwise Soumyadev and Tanvi, I'm done sir. So I would like to have your insight, cohort. Anybody, any I question? have a different view over this feedback system है। जी, hello.
Such To act as a manager, you require feedback from your troops or your followers. I'm sorry, sir. I really fail to hear your comment. Your voice is breaking. Can you please repeat or type in the chat box, sir? Madam, when you act as a manager, you may require the feedbacks from your followers and troops. Yes. But as a leader, you don't require require any feedback from your troops. You might not require, sir, but you have to deliver feedback. आपके I'll tell troops you why. अच्छा काम कैसे करें? जी sir. When Ford invented the first automobile, he never took any feedback from the masses because at the time they were traveling on the horse cart. जी sir. So one reporter asked Ford, "Did you take any feedback?" जी sir. And he said, "I did not take any feedback. If I had asked them the feedback, they would told me, we want a black horse, white horse, a red horse. That's the feedback they will give you." When Apple went for this laptop, he did not take the feedback. Steve Jobs did not take feedback from his followers. That was the first time he used graphical user interface. He never took feedback from his followers. But then, sir, his low management opposed this idea. Still, he did not follow their ideas. So at feedback times is not maybe required as a leader. as a leader, sir, but you have to deliver feedback. मैं नॉर्मल रोल कॉल्स की बात नहीं करी. जब आपके ट्रूप्स आपके अंडर कमांड्स परफॉर्म करते हैं, यू हैव टू डिलीवर फीडबैक. यू हैव टू टेल देम. अगर स्टीव जॉब्स की बात करें, उन्होंने अपना काम किया, एप्पल में काम किया, उन्होंने फीडबैक लिया नहीं, पर उन्होंने फीडबैक दिया तो कि दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क एंड दैट इज व्हाट व्हिच वुड हेल्प यू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी. ठीक है, किस तरीके से आपको अपना काम करना है, किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है, कौन से टास्क पे हमारा काम. बिकॉज लीडर इज समबडी हु डज नॉट हैव टू वर्क all the time. That is a person who actually make the other people work and they are leading them with examples. तो जब हम लोग किसी और को काम करवा रहे हैं तो काम करवाने के लिए भी तो we have to keep telling them. We have to nurture an environment wherein people listen to us, people follow what we have to say and they follow us in the right direction. So that is giving feedback. So I'm not talking about the day-to-day calls or the normal debriefings. I'm calling about a feedback, which is a very focused conversation which any two individuals have to highlight what next step can be taken up or what task can be followed if we want to keep pursuing the action or our strength, keep focusing on our strength in the right direction. तो सिर्फ लीडर फीडबैक ले नहीं रहे हैं, लीडर फीडबैक दे रहे हैं और वो ज्यादा चलता है सर. कि जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज अ लीडर, we give feedback to our under commands, we give feedback to the person who is working under us कि this is how we need to work. ये आपने अच्छा किया, इसको आपको improve करने की जरूरत है. ये ऐसा aspect है जहां you are not working in the right way, so you need to work on this. That is delivering feedback. So you don't even ask all the time, you also tell them, अगर मैं लीड कर रही हूँ तो मुझे काम करवाना है तो मुझे अपने अकॉर्डिंग काम करवाना है, तभी मैं सक्सेसफुल लीडर बनूंगी. तो उसके लिए we have to deliver feedback. I guess I have answered your question, Mohan sir. Yeah, correct. Thank you, sir. Thank you, sir. Any other feedback or insight? I think we can take the last question from Ashok sir, and then we'll wrap up the session, Dr. Kirti. Sure, sir. Ashok sir. मैम, हम एट ए टाइम कई बार डुअल रोल में होते हैं, कई बार सिंगल रोल में होते हैं. जब हम कमांडर के रोल में होते हैं तब फिर हमें फीडबैक लेने और देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. जब हम एज ए लीडर या मैनेजर के रोल में होते हैं तब जरूर फीडबैक लेते हैं और देते हैं और उसको करते हैं. मैक्सिमम टाइम हम इसी रोल में रहते हैं, मैनेजर या फिर लीडर के तौर पे. और अल्टीमेट एम हमारा होता है कि उसको जो है हम ऑपरेशन के तौर पे तैयार करें, मेंटली और फिजिकली वो उस लेवल पे आ जाए. जब हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, जब मैं एज ए कमांडर बिहेव कर रहा हूँ तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो हमारे सामने सिचुएशन है वो एक्ट कर सके. बिल्कुल बिल्कुल सर. और वही तो जब हम एज ए लीडर और मैनेजर काम कर रहे हैं तो हम कार्व कर रहे हैं एक वर्क फोर्स को कि जब मैं कमांडर के रोल पे जाऊंगा तो ये वर्क फोर्स मेरे काम तरीके से काम करेगी. तो वो भी तो हम एक नर्चर कर रहे हैं, एक तरीका कि एक ट्रूप को हम अपने अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए नर्चर कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए रेडी कर रहे हैं. कांस्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म से, इफेक्टिव फीडबैक से, कि हम हर बार उसको बता रहे कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो जैसे मैं कमांडेंट के रोल पे आऊंगा
वो मेरे अंडर कमांड्स बनेंगे और वो फॉलो करेंगे मेरे इंस्ट्रक्शन, क्योंकि पहले जब मैं लीडर और मैनेजमेंट के रोल पे थी तब मैंने उनमें वो सारी चीजें इनबिल्ट उनको उस चीज से मतलब अक्वेंट कर दिया है पूरी तरह से. I have given them all the requisite inputs which they require when they'll be the under commands. So of course, sir, agreed. Yes. I think with this, Dr. Kirti will wrap up your session. So I would like to thank you so much. I'd like to extend our gratitude on behalf of our commandants as well. Thank you, ma'am, for the wonderful session. session. Thank you so much, the entire cohort. It was amazing interacting and was learning for me as well. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Gentlemen, we will take a short break. Tea break le lete hain. We will resume again at 4:15. So until then, please enjoy a cup of tea, and we'll resume with our new session, channelizing stress. Post that. So let's see each other again at 4:15, sirs. Welcome back. Sorry, Nagendra sir, for cutting you off. I always feel very apologetic to cut your conversations because you are all catching up. But I'm sorry. We have to start with our next session. That is excellent feedback. Thank you, sir. So today, हमारा जो next session है, I am quite very excited, in fact, to introduce this session. This session is very much relevant to your context, to forces as well, and in general as well. It is a session on channelizing stress. This is something that, stress is something that we face very much personally and professionally. And as senior leaders like yourself, I'm sure that you have a lot to say on this because you're handling such huge amount of number of men under you. So in session mein hum, we'll discuss our perspectives on what stress is, sirs, and we'll discover through very interesting psychometrics our stress personalities, and we'll talk about certain tools and techniques that we can use to channelize stress, in fact. So to facilitate this session, I'm very glad and excited to introduce our very own Dr. Shikha Dubey. Ma'am has had more than 20 years of experience in academia, teaching multiple and various domains and disciplines, and she's very seasoned. Channelizing stress is her forte, and she's been conducting that session with multiple CMDP batches. So, ma'am, I won't take much of your time. Very good afternoon, Dr. Shikha. Good afternoon, Somdev, and Jai Hind and Namaskar to the entire cohort, the respected commandants over here. And the best part is that I have been catching you all off and on with other responsibilities of my department as well, which is going on. Sir, जैसे आप अपने work stations पे काम के साथ साथ ये आपका जो CLMDP का 2 हफ्ते का program है, you all are attending and you all are balancing it out. So let's have a good deliberation and discussion throughout the session of channelizing stress that I'll be taking. Give me a moment to share my screen with you all. Okay, so let me set up the sections of the chat box as well so that I'm able to see everybody's who are there typing in the chat box. Okay. I hope my screen is visible to all the participants. Yes, Dr. Just give me a thumbs up. Okay, thanks, Tanvi. Thank you. So for this upcoming session of channelizing stress, here we would be talking about some of the areas that we have been dealing in our daily life. How the journey of this 90 minutes workshop or session would look like. We would be talking about stress. It's nothing a new term that we all have dealt with very often, may it be our personal life or professional life. How do we actually perceive it? Is it something which is always negative, or it is something that could be generating some of the opportunities as well when we talk about stress level? Then we will be discussing the stressors at work. What kind of stress personality do we hold? So there would be many psychometric assessments wherein we would be trying to understand our stress level and also the stress personality that we have been holding it.
And then there would be a very interesting curve that has been, invented by one of our researcher who has been talking about between the performance and pressure curve, wherein there would be a different stages we would be discussing, may it be bore out, comfort, stretch, strain, or burnout. And then finally, we would be closing the session with some of our takeaways, wherein we would have already dwelt with our scientific assessments. So let's have a look on stress that we have been dealing. If I talk about current situation where our commandants are there and they have been dealing with it, एक टाइम ऐसा आता है सर जब हम used to हो जाते हैं, it becomes something that we deal with it on a daily basis. It is nothing which is new. And how we actually take that situation, are we actually responding to that situation that we are dealing, or we are reacting to that situation? So these are some of the things that we would be talking about in the entire session, and try to introspect and reflect in ourselves that actually where we stand today. Sir, agar hum stress ki baat kare, there has been a lot of study that we have been talking about. बहुत सारी स्टडीज अभी अगर हम पास्ट ईयर 2022 की बात करें, देयर हैज बीन अ स्टडी व्हिच सेज देयर हैज बीन अ गवर्नमेंट डेटा व्हिच हैज बीन शेयर्ड, और उन्होंने बताया है कि इन द मंथ ऑफ May 2022 द डेटा दैट वाज रिलीज्ड वाज सेइंग दैट 25 इंसिडेंट्स हैव बीन देयर वेयर द fratricides in CAF has been seen in the year of 2019 to 2021. Apart from that, there has been a figure that has been quoted around 345 suicide cases that has been there in the year 2017 to 2019, and which has been increasing. Moreover, same data that was shared with an elaborated number and figure, where 47,000 of the personals have been resigning, and some of them have sought voluntarily retirement from their services. These are some of the areas where we really need to think what kind of initiatives or such kind of changes in the policies have been made, and how the things are actually going around. All these things are somewhat culminating to a level of stress that we all have been dealing. And since you as our strength, where guarding our borders, are somewhat giving us that sound sleep, wherein you all are giving your sleepless nights a toll on your health, and you are guarding our nation. Moving ahead, yeah, Nagesh sir says, do we have any tool to measure our stress level? Yes, sir, we do have, and we will be doing that. So we will be understanding that what is our current stress level, और ये tool sir आप जब time to time use करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा अपनी present situation कि आप किस particular level पे lie करते हैं, whether it is high, moderate or low stress level. Regarding the data, I would like to say something. Firstly, 99% of the suicide cases are attributable to domestic stress, not work-related stress. Absolutely. Secondly, as far as voluntary retirement is concerned, it gives the avenue to a person to excel in his after post life also. One who is capable of doing things, who is capable of doing physical work after retirement, they opt for voluntary retirements. And 47,000, if you see the quantum of the force engaged or recruited, yes, our force only accounts for more than 265,000. So, very correct, sir. Work-related stress is less, more is other domestic or some other stress. And Absolutely. in addition to that, Yes, madam, that retirement age gone up. Previously it was 55 years, then 57 years, now 60 years. And
the work and culture of the work burden of constable to ASI, sub-inspector, they could not be fit enough or strong enough to sustain those type of activities, those type of duties. And there are many options due to as our economies are growing up. So they are getting better opportunities at outside, and BSF personnel, they're known for their dedications. And that's why maximum person are going for second innings, not that they are going for BRS, they're going for second innings. Absolutely, Supriya sir and Viren sir, thank you for putting it here. Because yes, this data is something which has been covering the entire Central Armed Forces. It is something which gives no clue about the bifurcation, whether the persons are somewhat facing difficulty in work-life balance, or it is purely domestic issues that they have been encountering, or it is something at their workplace that they have been facing, and probably how these things have been happening. But yes, may it be a professional or personal front, we have to balance out certain things. सर एक छोटी सी मेरे दिमाग में बात आई कि अगर हम देखें ना सर, हमें सुबह मॉर्निंग की अगर फ्लाइट पकड़नी है, we have to catch a flight at suppose 4 a.m. in the morning. Our preparation starts a day before, and maybe for my parents it starts even a weeks before, because they are not frequent travelers. और मेरे फादर को तो एक एक सामान लगाने में जुटाने में बड़ा टाइम लगता है, and then probably he will not be able to sleep even a day before, और पता लगा वो 10 बजे से उनकी ऐसी नाइट होगी कि वो उठेंगे, सोएंगे, नहाना धोना सब तैयार होना, and then probably he is under stress. तो सर अब ये तो एक छोटी सी बात होगी कि फ्लाइट पकड़नी है तो भी स्ट्रेस हो गया, और जब हम बात करते हैं अपनी फैमिली की या फैमिली से दूर जाके जॉब करने की, या इवन छोटे छोटे सर किड्स की अगर हम बात करें, उनको चाहे स्ट्रेस का टर्म नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तुरंत कह देंगे अरे मम्मा जरा वेट करो, अभी तो स्ट्रेस हो रहा है, कल मेरा टेस्ट है। तो सर ये हमारा एक बैग पहले ही तैयार रहता है, because 10 nights I have to spend on border away from headquarters. So I always keep one bag handy. 4 बजे है। परफेक्ट सर। वीरेंद्र सर, ये तो कहना चाहिए ना कि आप लोग तो यूज टू हो गए हैं, हम जैसे यूज टू नहीं होंगे तो हमें तो सर उसमें स्ट्रेस हो जाएगा। वाली बात है ना कि आप अपने आप को किस तरीके से सेल करते हैं, एक बड़ा माउंटेन है, यू हैव टू एट टाइम्स बिकम सी, कि आप वहां से रास्ता बना के अच्छे से पास हो जाएं। तो दैट इज वेरी फेयर इनफ सर। एंड getting back to our one of the situation that is there on the screen, एक सिचुएशन है सर जहां पर आपके पास आपका एक फोन कॉल रखा है या आपका एक वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर पे आपके पास ईमेल पॉपअप हो रहा है। अक्सर थोड़ी थोड़ी देर में आपके पास फोन कॉल आ रहा है, थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन में, या आपके पास मेल पॉपअप हो रहा है जहां पर रिमाइंडर ऑफ डेडलाइंस आ रही हैं फॉर सर्टेन टास्क। You are totally committed, I understand, sir. आपके यहाँ तो जीरो एरर वाला वो पॉलिसी फॉलो होता है, क्विक डिसीजन विथ मोर विजडम। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है सर जहां पर आप एक टास्क को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आपको पता है आपको डेडलाइंस हैं, आपको मीट करनी है, देयर इज नो अदर चॉइस, स्टिल यू आर बीइंग रिमाइंडेड। आई एम श्योर हो सकता है ये होता भी ना हो। तो सर अगर एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सो हाउ यू आर गोइंग टू फील इन दिस सिचुएशन? व्हाट विल बी योर कॉल? मैम, दिस इज रियलिटी ऑफ आवर लाइफस्टाइल। I'm Sujay. जी सर। During the start of our careers, we are given opportunity to perform duties of unit adjutant. He is basically the principal staff officer to the commandant, and he helps him, or rather assists him, in fulfilling all the operational and administrative tasks. So when an officer he is performing duties of adjutant, most of the times he remains on a tiptoes, attending very frequent calls, writing emails, sending replies, reports and returns, and most of the times he is deprived of sleep.
His early routine starts at 3:30 or 4 early in the morning until late evening, rather till late night. He remains committed with his desk. So we are habitual of leading this kind of a lifestyle. Barindra Giri sir, he will support my statement, or other officers also, they since have passed through the same phase of service life, they will also support what I am saying. So we are very much habitual of leading this kind of a lifestyle. Totally agree, Sujit sir, and Viren sir is also showing thumbs up. I could see. Very well said, sir, because I do understand it has been inculcated and imbibed in your daily task and routine, which you have become habitual of it. Sir, कई बार ऐसा होता है जब हम सिस्टम में आते ही हैं और इस तरीके की चीजों को हम फेस करते हैं, सर वो एक कहते हैं ना सर, टाइम के साथ, समय के साथ बहुत सारा बदलाव आता है, तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस आते हैं। कई सिचुएशन को हम डील करने के आदी नहीं होते, लेकिन ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम यू गेट अकस्टम टू दोस सिचुएशंस। आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन सर क्या हम उस अगर पास्ट में अपने देखें, जब ये इनिशियली स्टार्ट ऑफ हुआ था, आप इस सर्विस को ज्वाइन किया था आपने और इस तरीके की चीजें आपके सामने आई, तब उस टाइम उस मोमेंट पे आपका क्या फील था? हैव यू एवर फेल्ट एंशियस और इरिटेटेड और समथिंग वेयर कि अरे पता तो है, डेडलाइन है, हमें मीट करना है, आई एम अवेयर ऑफ, डेडिकेटेड हैं, ये तो सर्विस का एक कहते हैं ग्राउंड रूल है, योर डेडिकेशन एंड मीटिंग दोस डेडलाइंस। That was the time of real enjoyment, ma'am. That was the time of real enjoyment, I must tell you. Because most of the officers who remained as unit adjutant, they enjoyed the sense of authority and the sense of belongingness with the battalion. And the task which they were being assigned with rather, if they were able to fulfill or measure up to the expectations of his commandant and used to get a pat on the back. So that was a real moment of cheering. Great, we are still sir, released. We are still released. Right. Okay. Yes, Neeraj sir. मैम, मैं सुजीत सर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमने जब लाइव शुरू की थी लगभग 25 साल पहले, तो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही की थी। आज हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए हैं। आज हमें उतना प्रेशर नहीं है जितना उस वक्त रहता था, और हम टैकल कर लेते थे। लेकिन ये भी सच है कि जो आपने स्टेटमेंट शुरू में दी, सुसाइड्स के रेट्स बढ़ गए हैं, और जो स्ट्रेस लेवल है डिफरेंट वर्क रिलेटेड और पर्सनल जो स्ट्रेस लेवल है वो डेफिनेटली बड़ा है। वो क्योंकि शायद पूरे समाज में ही बड़ा है और हम समाज से अलग नहीं हैं। बेशक हम बोल रहे हैं कि हम बीएसएफ है, लेकिन बीएसएफ भी उसी समाज से आती है जिससे आप हैं या हम सब लोग हैं। तो वो इशू तो है ही है, और हमें ये भी मतलब सेंसिटाइज्ड हैं हम इस इशू पे कि एड्रेस करना है, और ये प्रेशर रहता ही है हमारे ऊपर कि सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा इंटरेक्शन लेवल बढ़ाओ। ये सारी चीज़ें, जैसे 3-4 दिन पिछले कुछ 2-3 दिन पहले कोई सेशन हुआ था जिसमें रमेश सर ने भी ये बोला था कि 2015 से कितना स्ट्रेस हमारे पे इस इशू पे आया था कि आप इस चीज़ को एड्रेस करो। एक सडनली सुसाइड रेट्स बढ़ना ज़्यादा हो गए थे बीएसएफ में, और फैट्रिसाइड भी बढ़ रहे थे। तो वो एक पहलू तो है ही है, बट हमारा जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, और जो हम बेशक ये बोल दें, मैं जैसे गिरी सर ने बोला कि 99% केसेस में ये हम जब कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की, तो ये निकलता है कि घर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम उसमें थी। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त सुसाइड किया, हो सकता है मोमेंटरी उस वक्त प्रेशर घर का रहा होगा, लेकिन हम पर्सनल जो प्रेशर है उसको अलग नहीं कर सकते। घर का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो यहाँ पे ऑफिस वाले फ्रंट पे, ऑपरेशनल फ्रंट पे जो कमिटमेंट है उसकी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कहने के लिए बोल सकता हूँ कि सुसाइड से जस्ट 1 मिनट पहले उसने घर बात की या घर से कॉल आई थी, उसने सुसाइड कर लिया, बट ही इज नॉट प्रोबेबली एबल टू टैकल सम सिचुएशन एट होम फ्रंट बिकॉज ऑफ हिज बीइंग अवे फ्रॉम होम। तो वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। हम भी अगर ये बोले कि इंटर रिलेटेड नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, तो शायद हम कभी एड्रेस नहीं कर पाएंगे इस इशू को। तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज टेक ऑन फ्रॉम दिस स्टेज कि हाउ डू वी एड्रेस दिस इशू। मैम, आपको एक पर्सपेक्टिव में और देना चाहूंगा। Further adding to what Neeraj has said, he is very correctly brought out the problem.
एक्चुअली हमारा जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट है और हमारे यहाँ जो सुसाइड्स है, फैक्ट्री साइट्स हैं, इनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। कुछ दिनों पहले मीडिया, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रखा था जिसमें जापान का प्रोबेबली एक छोटा सा वीडियो था। एक लड़की है, वो एक ट्रेन में अकेले सफर कर रही है और वीडियो फेक था या क्या था, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन वीडियो वाज कन्वेइंग कि वो अकेली लड़की एक स्कूल पर्टिकुलर जोन में था, वहां जाती थी, उसके लिए दैट ट्रेन वाज बीइंग रन। मतलब जापानीज जो गवर्नमेंट है, जापान की जो गवर्नमेंट है, उस ट्रेन को केवल इसलिए रन कर रही थी बिकॉज दे वर वरीड दैट दिस पर्टिकुलर गर्ल इज स्टडीइंग इन अ पर्टिकुलर स्कूल as she needs to be sent every day to attend her classes, so they were taking care of the independent child, that single child. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको हम कई बार देखते हैं कि वो अपने फैमिली फ्रंट पे परेशान था इसलिए कमिट कर लिया सुसाइड, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस बहुत था इसलिए उसको कोप अप नहीं कर पाया, सुसाइड कर लिया। कोई वीआरएस कर रहा है क्योंकि उसको बाहर में कहीं एनटीपीसी ने बहुत अच्छा जॉब ऑफर दे दिया, या भेल में कहीं बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, किसको में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चीजें हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में, दूसरे सर्विसेज में कोई अगर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेता, कोई अगर भेल में बैठा हुआ है, एनटीपीसी में बैठा हुआ है, वहां से रिटायरमेंट नहीं लेता, हमारे यहाँ ही क्यों लेता है? पहली बार सिंपल सा जवाब इसका यह है कि when organizations fail to take care of their men, their personnel are constrained to take solace somewhere else. They tend to leave that organization to find peace and find all those resources some other place to make themselves comfortable, their family members comfortable, their near and dear ones comfortable. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉब्लम यही हो रही है। अब जैसे आप इंडियन आर्मी का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर फैमिली फ्रंट पे कोई लैंड अकॉर्ड स्क्वाड है कहीं पे, उनके पास सैनिक कल्याण बोर्ड होता है। डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट का, ही इज हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। एक अगर वहां के सिपाही ने वहां से कोई एक चिट्ठी लिखी, वो डीएम के पास जाता है, दैट बिकम्स हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। अब उसने एक चिट्ठी लिखने के बाद अंदर से एक एश्योरेंस पा लिया कि अब उसके पास चला गया है और ये लैंड का जो मसला है स्टेट गवर्नमेंट दे विल टेक केयर ऑफ। हमारे यहाँ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट इज नॉट इन प्लेस। अगर किसी का कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया, उस पर अगर किसी को यहाँ पे कोई मदद चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कमिंग फॉर सपोर्ट। दो वी आर कमांडर्स, फील्ड कमांडर्स, वी आर ऑलवेज देयर विद देम, we are always ready to listen to them, but we don't have such a mechanism to address their personal discord issues. दूसरा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप कैरियर प्रोग्रेशन की बात करें, फाइनेंशियल जो एक प्रोग्रेशन की बात करें, उस एंगल को भी देखें तो आप देखेंगे वहां भी प्रॉब्लम है। अभी हमारे जितने भी यहाँ पे कमांडेंट देखेंगे आप, इनका प्रोफाइल बहुत हाई है, एज प्रोफाइल बहुत हाई है। इनको आज से 10 साल 15 साल पहले कमांडेंट बन जाना चाहिए था। अगर इसमें से किसी आदमी को, देखिए दिस इज ऑल ऑर्गेनाइजेशनल हिचेस, मैं पता नहीं ये प्लेटफॉर्म सही है आपसे डिस्कस करने के लिए या नहीं करने के लिए, लेकिन आपको एक होलिस्टिक वे देना बहुत जरूरी है ताकि आप जो कोर्स चला रहे हैं इसको आप राइट पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट कर पाए फ्यूचर कोर्सेज के लिए। क्योंकि आप अगर आज से 15 साल पहले कमांडेंट बन जाते हैं, आपका पे प्रोफाइल हाई होता, आपके पास लेंथ ऑफ सर्विस लंबी होती चीजों को मैनेज करने के लिए, आपकी सोशल कमिटमेंट का जो लोड आज की तारीख में है वो कमिटमेंट का लोड आपके पास कम होता, हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते, आप उन चीजों को एड्रेस कर पाते। लेकिन अगर आज आप मुझे बोलेंगे कि उसी जेल, उसी इंथुसियाज्म, उसी एनर्जी के साथ काम करो, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैंने आपको एक होलिस्टिक वे, होलिस्टिक एक व्यू देने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि ये बड़ा एक अजीब सा सिचुएशन है जिससे वी आर पासिंग थ्रू। आप जो पढ़ाएंगे इसमें सारे एलिमेंट, सारे कंपोनेंट, सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर, बट दिस इज द रियल पिक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन हैज फेल्ड टू टेक केयर ऑफ आवर नीड्स, आवर रिक्वायरमेंट्स, एंड दिस इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फ्लीइंग, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, fratricides are being reported on a regular basis. These are very common issues. Absolutely, Sujit sir. Yes, Ajay sir. जो मिस्टर सुजीत ने बताया है ये सारी चीजें हैं, इसके साथ साथ डिपार्टमेंट में हमारे अनसर्टेनिटी बहुत है।
अभी अभी मतलब जैसे अब हैं, सुबह क्या होगा, रात में क्या होगा, कौन सी कंपनी कहाँ जाएगी, कौन से ट्रूप कहाँ जाएगा, नोबडी नो। एक तो अनसर्टेनिटी बहुत है और ओवर कमिटेड है हम लोग। अब हर स्टेट गवर्नमेंट में चुनाव कराने हैं तो मतलब CAPF कराएगी, मतलब हर महीने में हमारी जो है इस तरह की डिप्लॉयमेंट है, ड्यूटीज हैं, तो हमारी ओवर कमिटेड बहुत है, जिससे ट्रूप्स को जो है रेस्ट एंड रिलीफ नहीं है, और उनको अपने अगर रेस्ट एंड रिलीफ नहीं है और उनको प्रॉपर ढंग से अपने फैमिली और परिवार को देखने का प्रॉपर टाइम नहीं है। दूसरा जो है कमिटमेंट ज्यादा है, और उनका जो बेटर जो प्रोफेशनल या फिर उनका बेटर फ्यूचर है वो भी नहीं है यहाँ पे। जैसे मिस्टर सुजीत ने बताया कि जैसे हम लोगों को अभी 3 साल 4 साल 5 साल पहले कमांडेंट बन जाना चाहिए, इसी तरह से जो लोअर हायरार्की है उसमें भी जो है प्रमोशन रेवेन्यू बहुत ही कम है। ये सारी चीजें हैं जो कि मतलब इस तरह की जो सिचुएशन एराइज हो रही है। Ajay sir, I think you has very well put the conditions of your organization, I will say, because this is what, since I have been taking this session, we have been doing research, we have been interacting with past 5 batches, 5-6 batches of the commandants, where we have been discussing all these things. हमारे मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, how we are being attached with our headquarters with certain other commitments that we need to bring in, where we are already overburdened with our responsibilities, duties, and highly committed to our duties, which we are currently giving. But probably जब हम बात करते हैं सर, मुझे सुजीत सर का ये पॉइंट बहुत वैलिड लगा कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्यों नहीं, यहीं पर ये नंबर हाई क्यों है when we talk about our forces. So if we talk about may it be organizational commitment, social commitment, family commitment, कहीं ना कहीं ये आपने बिल्कुल सही बात कही सर कि हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लेकिन क्या हम as a person being in that organization, being at that leadership position that we are holding, are we really introducing such kind of mechanism? Actually, madam, one point just add on. Just I wanted to just CAPF में more or less same. ये जो प्रॉब्लम है CAPF में more or less same, किसी में जैसे कि थोड़ी सी कम है, किसी में ज्यादा, अदरवाइज ये CAPF में more or less same है. As per madam data is concerned, that suicide rates in states and regions in the year 2021, then Tamil Nadu was the highest one, and Maharashtra again first or second. This one should not compare suicide rates in a society in isolations and forces in isolations. Both are separate things. Suicide maximum taking place due to domestic reasons, and another additional thing that came into in front of us, that personal loan, and due to personal loan they are highly stressed. And another thing that is most important now, that joint family system vanishes. So these are the all social compulsions, personal compulsion which led to suicide. But in case of that resignation or VRS, duties of our troops similar with army. Army troops, they getting retired at the age of 35, 40, but our troops superannuated at the age of 60. They re-employed, they getting that ex-serviceman status. Our forces personnel not getting any status. So these all are the compound reasons which led to these things. So these are the, as Sujit said, that these are national issues and this should be addressed at appropriate level. Absolutely, well said, sir. So now let's keep our discussion and this deliberations keep going. Moving forward, what is stress? Sir, ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं. It is nothing something which I can teach or which is something which we have been hearing for the first time. It is again something that our researchers have said that it has been going through 3 phases. If we try to understand, it is something which is
a result from imbalance between the pressure which exceeds our ability to cope up with it. And the moment we are creating that imbalance, or we are in that imbalancing situation between the pressure and the ability to cope with that pressure, we ultimately end up resulting it in a stress. So here the research says that there are three kinds of phases that stress is being defined. It is a response. सबसे पहला जब हम physical या हम थॉट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, एक सिचुएशन आई, हमारी बॉडी ने कोई एक रिस्पॉन्स शो किया, आपने कोई खबर सुनी फोन पे, आपकी बल्जिंग आईज, हैवी ब्रोज, देयर आर लाइंस ऑन योर फोरहेड, दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स. दूसरा होता है सर stress as a stimulus. When we talk about the events which are impinging on the person, जैसे आपने अभी बात की, वो डोमेस्टिक हो सकता है, वो सोशल प्रेशर हो सकता है, वो वर्क प्रेशर हो सकता है, वो कोई किसी तरीके का हमारे ऊपर एक इस तरीके का इवेंट जो उस पर्सन के ऊपर उस इवेंट का एक कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है. एंड थर्ड इज स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन. हमारे पास एक बॉडी का रिएक्शन हुआ, एक हमारे थॉट का रिएक्शन हुआ, और उन सबको मिला के हमने उस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, दैट बिकम्स दैट ट्रांजैक्शन. And that is how that situation is going to be dealt. एक सिचुएशन है सर, सबके संग वो सिमिलर है, लेकिन सबका देखने का नजरिया अलग अलग हो गया. And that is how somebody who can actually deal with that situation in a very calmly manner, उसको इतना स्ट्रेस हुआ ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ा. और एक जो बहुत ज्यादा पैनिक कर गया, कैटास्ट्रोफाइज हो गया, फ्रीक आउट कर गया, और दे एंड अप विद सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर दे हैव टेकन एक्चुअली अ रॉन्ग डिसीजन. This may not be directly related to work, it could be related to their personal lives. And probably when we talk about this situation, जो आपने कहा सर, अब आप accustomed हो गए, आप used to हो गए हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, या हम कॉर्पोरेट की बात करें, या हम XYZ किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हो सकता है वहां पर जो हमारे जूनियर्स होते हैं या लोअर लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, दे माइट बी फीलिंग इरिटेटेड और एंशियस. यार पता है नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग आने वाली है, हमें इतने टारगेट्स कंप्लीट करने, वी नो दिस. सो दैट इज वेयर द सिचुएशन कुड बी सेम, लेकिन हो सकता है आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को डील बहुत केयरफुली, कहते हैं ना, केयरफुली केयरलेस भी नहीं होने की गुंजाइश है, वहां पर तो केयरफुली होना पड़ेगा. तो these are some of the situations where we are talking about कि हम उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को, स्ट्रेस को ट्रांजिशन करते हैं उस फेज में. अब हम आते हैं अश्विनी सर, जहां पर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि लेट्स मूव ऑन टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस लेवल. यस, सो सर, I hope everyone is having pen and paper with them. Let me stop sharing this PPT and let me share you with all this perceived stress scale. So here we are up on the screen where we are dealing with a perceived stress scale instrument to identify our own stress. Sir, अभी क्या करना है, ये एक PSS जिसको हम perceived stress scale के नाम से जानते हैं. This scale was developed in the year 1983 और इसका ये था कि यहाँ पर एक 10 questions रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किए, जिसके सामने हमें कुछ रेटिंग्स करनी थी, स्कोरिंग्स करनी थी. These 10 statements which are reflected on the screen has to be given the scores which are mentioned on the top of the box. Give 0 for never, 1 score for almost never. If your answer is sometimes to any of these statements, give the rating as 2. Else for fairly often 3, and very often give the score as 4. If you wish, I can just zoom in a bit so that it is much more clearer. Sir, is
visible clearly onto the screen? Thumbs up or Yes. a green tick button? Okay, right, sir. Thank you, sir. On the extreme left of the statements, do the scoring. I would appreciate you all not to focus or take more time to think and discuss on your past 1 month situation. Fairly quickly, you can read it and give the score. Ma'am, could you adjust the PowerPoint so that we could see the last 2 questions, please? Sure, sir. Sure. Thank you. Ma'am, please, I'm not getting first, second, and third. Okay, sir. Let me scroll it a bit. I'm a student. Shekha madam, you can just minimize it a bit Okay. so that it is visible. Just a second. Let me take first one also into account if somebody has missed. So once we have done, just One click give to me a be response. minimized. So should I minimize? Yeah. Okay. Earlier it was okay. Right, sir. No, I mean, oh, no. Can you just see? Yeah, first time points, I rating 01 marking system. Often have you found Top Okay, one. sir. Okay. Yeah. So no, this is it's the okay. marking system. last one? Okay. Going This your- sir is done. you are Has going done marking. your way. Okay. 10th question. 10th question, sir. It's here. Just do the scoring. That's it. Should we add it up? In the No, last sir. month, how often Sir, we you have found to out wait. you could Don't not add it cope right with now. problem? If we have done scoring of all 10 statements out here, then let's move forward. Please just scroll down, ma'am, so that I can see Yes, from the first question. First question, sir. Okay. Yeah. You have told that you are top things. Okay. So for all those participants who have given the scoring for all these 10 statements, now Ma'am, listen please carefully what scroll we it have to up. do. Ma'am, please scroll it up. We a have little, to little. reverse the scores of. Ma'am, last question. Ma'am, last question, 9th and 10th, ma'am. So it's here. Oh, done. Done, sir? Friends. Done. So shall we move? Piling up. Yes. So Ramesh, sir? done. Done, sir. Great, sir. Done. Thank you. Okay, so now what we have to do is, for statement number 4, please have a look. Statement number 4, 5, 7, and 8. Statement number 4, 5, 7, and 8. You have to reverse the scoring. So anybody who has given a score of 0 should. Ma'am, your sound is breaking, please. मैं आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Sure. Sir, for your reference, I have put it on chat also. For these 4 statements, you have to reverse the scoring.
If you have given 0 as a score for any of these 4 statements, write it as 2. Would be replaced by 3. Remains 2. 3 score becomes 1. And 4 score becomes 0. But it will happen only for these 4 questions. 4th, 5th, 7th, and 8th. Have we done the reverse scoring? Then we will do the totaling of the entire scores. 0 to 4. Now we have to add up scores of each statements. 2, 3, 2, 5, 6, 8, 8, Right. So Uday sir has completed. Uday sir, you have done the reverse scoring, I am sure. And post that you have added the total. Yes, madam. Yes. Right. Right. Great. Nagin sir, 24. Okay. So Priya sir, 6. Vipin sir, 21. Okay. So I'm sure a lot of them have already completed. And here is the scores which shows. Yeah. 20. Okay, sir. So now you can just go through the ranges and the scales that have been written out here. If you achieve a total score between 0 to 13, you are having a low stress level. 14 to 16, moderate. And 27 to 40, which is going to require your high attention because the stress level is actually perceived at a higher side. So, sir, I am sure everybody is having their scores and probably they can introspect what this instrument is saying and what their current situation is. Ramesh, sir, I can see your smiling face. Yes, sir. Ramesh, sir, you have to unmute yourself. मैम 12 आ रहा है 12 सर 12 अरे सर फिर तो आपने तो सर कमाल कर दिया आप तो लो स्ट्रेस लेवल पे हैं सर बिल्कुल कंफर्ट जोन Good, yeah, good. Okay. सर share this assessment with you as well so that very often whenever you are sitting and there you can go through this assessment. Yes, Ashok sir. मैम इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ कि जिन लोगों का डिप्लॉयमेंट जैसे मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ ये करंट सिचुएशन के हिसाब से है जिन लोगों का डिप्लॉयमेंट बंगाल बॉर्डर पे है ऑलमोस्ट सारे के सारे 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे उसमें हैं तो ये जो हमारा वर्किंग कंडीशन है और कहाँ पे हम डिप्लॉयड है इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है जी सर मैं देख रहा हूँ One point I would like to add also, the quality of the troops and their availability in the battalion, that is also a matter apart from that. Absolutely, because sir. If the troops are gentle, then there is no problem. If troops are someone who is indisciplined or creating problems, then there may be things different. Absolutely, Mahin sir. I think this is something which we cannot just confine ourselves to our personal level, but it is something which is the accumulation of all your external as well as internal factors. Yes, of course, I do agree with your remarks. There's no doubt. Absolutely, sir. Very well said. और शायद अशोक sir और Mahin sir, आप लोगों ने Ramesh sir ने, I mean, these are some scores which will certainly change, sir. एक सिचुएशन जो आप एनकाउंटर करेंगे या किसी इंडिविजुअल का किसी ऐसे लोकेशन में ट्रांसफर हुआ जहां पर ऑलरेडी सिचुएशंस क्रिटिकल हैं, डिफिकल्ट हैं, probably this stress
scale is going to help you to identify कि अच्छा अब चेंज आ गया है, अभी पता लगा वहां पर पहुंचते थे, हमारा लेवल यहाँ था, अब हम यहाँ आ गए, या हमारा अभी ये सिचुएशन था तो I was bit in a comfortable zone and probably now you have to stretch yourself. So that varies very well. लेकिन सर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बने हैं जो कह सकते हैं 100% भले ही सही ना हो सर, लेकिन हमें एक दिशा जरूर दे देंगे, गाइड जरूर कर देंगे कि where we have to think, step back, think, rethink and reflect thereafter to minimize that level which could not go beyond certain expansion where it would be having some adverse effect onto our health. Again, sir says western border and they are better. Sir, overall situation, I would say all factors we are talking about. Okay, so moving. जितने फ्रेंड्स ने अभी अपने टोटल स्कोर डाले हैं, it is roughly 7:13 in the first and second category. So the people having the middle level of stress is twice than the low level stress. And this is also very clear to us that what level of stress we are facing. The only problem is that solution which we are trying to find out, we are failing in doing so. Yes, it is the matter of only the 4 questions. If we add and are from 1 to 10, then it will be the more numbers. I would say if we are talking about these 10 statements, 10 situations, sir, मैं आपको बताऊं, keeping things in precise manner is sometimes where we have to manage time. लेकिन सर अगर आप assessment की बात करते हैं, और especially when I talk about psychometric assessments और personality assessments, सर आप believe नहीं करेंगे कि assessments कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बड़े-बड़े questionnaires होते हैं, comprising of 300-400 questions, और कई बार सर ऐसा हमें एहसास होता है कि ये questions repeated हैं, जबकि उनमें कुछ ना कुछ minor changes ऐसे होंगे कुछ words के जिनसे हम profiling करना शुरू करते हैं और assessment शुरू करते हैं. So probably that gives you a very, very in-depth, detailed study. And I'm true. अभी हम 10 पे फोकस कर रहे हैं, हम जैसे बढ़ाते जाएंगे सर बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी हमारे areas की. So moving forward, let's talk about stressors at work. सर बहुत सारे stressors में अगर हम अपने workplace की बात करें, it is nothing which is new. हम बात करते हैं सेल्फ रोल डिस्टेंस की, जहां पर एक कब अराइज होता है, इट अराइजेस व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द पर्सन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द. यहाँ पर हम जीरो एरर की बात करते हैं. आपकी सिचुएशन में टाइम लाइन, डेडलाइंस हैड टू बी मेट. There is no such situation where you can overlook these things. और वहां पर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आपके पर्व्यू के अंदर आ जाती हैं. Second, when we talk about role stagnation, सर एक सिचुएशन जहां पर कहते हैं एक बंदा पिछले 5 साल से 10 साल से वही काम करता चला जा रहा है, उसके रोल में कोई चैलेंज ही नहीं है, then becomes a role stagnation. अगर हम आपकी बात करें सर, हमें तो जैसे सर आपने कहा कि हमारा तो हर दिन जो है एक चैलेंजिंग होता है, कब कहाँ कौन सी सिचुएशन अराइज कर जाए और आपको कहाँ एनकाउंटर करना पड़े, and you have to take a very, very critical decision on the spot. That is something which is challenging you. And then there comes the personal inadequacy. लेकिन मैम उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, वो टाइप ऑफ चैलेंजेस एक ही प्रकार के हैं वो. Exactly, sir. उसमें कुछ वैरायटी नहीं है कि आप सोच रहे हो बहुत वैरायटी है उसमें. बिल्कुल सर. सर वो इसलिए ना प्रमोद सर, जब जी आपने जो बात रोल ऑफ स्टैग्नेशन है, रोल ऑफ स्टैग्नेशन आपने दिया है,
वो आमतौर पे है कि एक ही टाइप की ड्यूटी हमारा जवान कर रहा है 20 इयर्स, बिल्कुल मतलब 20 सालों से वो एक ही जगह जा रहा है, एक ही टाइप की वो ड्यूटी कर रहा है। थोड़ा बहुत वेरी करता है थिएटर टू थिएटर, या जैसे कोई ईस्टर्न में कोई वेस्टर्न है, लेकिन लगभग सेम है वो पैटर्न, उसमें कोई जो है ड्रास्टिक चेंज नहीं है। एब्सोल्युटली प्रमोद सर, दिस इज व्हाट कि अगर हम उसी चीज को बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं और छोटे मोटे चैलेंजेस अगर हम फेस भी कर रहे हैं तो सर वो कितना दिन होगा, एक दिन आ गया भाई, अगले दिन से फिर वही हमारा वो सिचुएशन है जहां पर हमें पता है कि हमारी ड्यूटी उसी पेस पे, उसी चीज पे, उसी प्लेस पे हम वही एक रिडंडेंट टास्क करते चले जा रहे हैं और सर हमारी अपनी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हमें पता है सुबह उठे, उठाया अपना और हमारी ये ड्यूटी है, असाइन है, हम वहां गए, हमने इतने आज स्पेंड किए एंड देन प्रोबेबली वी आर बैक विद आवर बटालियन फोर्स। और वो सर एक कहीं ना कहीं उस स्टैग्नेशन जब आता है ना, उस तरीके का स्ट्रेस क्रिएट होता है सर। लेकिन स्ट्रेस का मेन रीजन उसमें ये है कि वो कंटिन्यूअसली जो है एक्टिव रोल में है, एक्टिव रोल में। बिल्कुल सर, एग्री सर। यहाँ पर हम सेटबैक की बात नहीं कर रहे कि वो आराम से बैठा है, पोजीशन में है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर, इनर्शिया में है। लेकिन रोल की अगर हम बात करें तो उसका रोल पर ही, रोल का दायरा, रोल की बाउंड्री वो एक सीमित है, उसे पता है कि किस तरीके का उसका टास्क है, किस तरीके से उसको करना है। फिर हम तीसरा सर एक स्ट्रेसर आ रहा है जहां पर हम पर्सनल इनएडिक्वेसी की बात करते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। सर हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें की, हमें कई बार इतनी सारी चीजें दे दी जाती हैं जहां पर वी आर फीलिंग आवरसेल्व्स दैट हम ये कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सर हमसे कोई पूछता नहीं है कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारे पास तो ये होता है सर करना है। Am I right, sir? So these are some of the things that comes from top, higher ups. करना है भाई, even but तो है ही नहीं इसमें। And there comes the overload and the role expectation. कि हम ये कुछ ऐसे triggers हैं stressors के लिए जो हमें पता है, लेकिन क्या हम उस स्थिति में है कि हम उसको एकदम से कंट्रोल कर पाए या हम उसको मैनेज कर लें। So this is again something where we try to understand कि किस तरीके का स्ट्रेसर, किस तरीके से हम उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं सो दैट उसकी एडवर्सिटी इतनी पीक पे ना चली जाए कि हमारे वो हेल्थ के ऊपर एडवर्स बन के और इस तरीके के जो इंस्टेंसेस हम सुन रहे हैं या आ रहे हैं सामने, मे बी इट मे बी बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक इश्यूज दैट द ट्रूप्स आर फेसिंग, बट could be somewhat minimized or stopped to certain level. And then comes our own stress personality. सर ये वाला स्ट्रेस पर्सनालिटी अब हम जानते हैं और एक और असेसमेंट करते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेस पर्सनालिटी बेस्ड ऑन the 6 dimensions that we will be talking about. This is again an instrument where we would be dealing with 20 statements. So I'll request the cohort to be ready with your pen and paper. I'll be sharing you the stress personality statements out here on the screen. So is it visible? Just let me know, sir, in case I have to zoom in. Let's go for these 20 statements initially. I hope it is very much visible right now. Okay. सर ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर 20 स्टेटमेंट्स हैं. I would request all of you to add these 4 in front of each of these statements. If you feel that it is somewhat happening all the time, give it a score of 4. For often, mark it as 3.
If it's happening sometimes, score goes to 2, and never, then you have to score it as 1. A minute, go through these statements. Ma'am, could you please scroll down? Yes, sir. Sure. Thank you. कमांडेंट ऑप्स ने बोला किससे बात करनी है? मैडम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन The first question is, I feel exhausted by daily demands at work and home. मैम 13th one मैम. Yes, sir. मैम जरा स्कोरिंग दिखाएंगे एक बार को टॉप में. Yes, sir. टॉप. Sure, sir. All the time. So the scores, how you have to do the scoring, it's there in the chat box also. 4 for all the time, 3 for often, 2 for sometime, and 1 for never. So shall we move forward? Madam, 13 and it's not come. Please Are scroll we down. through with? Okay, sir. Let's complete 1 to 15 statements. Post that, remaining 5 statements we will do. Scroll down. Okay. Right, sir. My expectation. Madam, last one. Yes, sir.
Okay, Ban Singh sir says he has completed. It would be great if I can have the response. Have you completed the scoring of these 20 statements? Okay, Nagin sir just is wait. true. Okay, sir. Sure. Thank you, Supriya sir, for confirmation. Should we add that there are some reverse Sir, marking? don't add, sir. Sir, अभी picture बाकी है, suspense है, sir. Let's wait. Question number 13, 14, please. Sure, sir. Yeah, see, ma'am, you can scroll down. Okay, sir. Thank you, sir. So here we have completed. Again, sir, do you want me to scroll somewhere on these statements? Nothing. Oh, okay, sir. Right. So, sir, now let's come to scoring and interpretation. So these are the dimensions at the extreme last left. one. Ma'am, last one. Sir, Scroll last down. one, 20th is, yes, sir. एक मिनट थोड़ा सा ऊपर I find it difficult to balance between work and family demands. ठीक है Right, sir? Are we through? हाँ ठीक है Okay, sir. So here are 4 columns that we can see. To evaluate and understand our stress personality, there are 6 dimensions of stress that has been listed on the extreme left column, first column. In the second column, there are the statements number, which has been mentioned. On the third column, your scores. And at the extreme last column, fourth column, we would be doing the total of these statements. Now, sir, what you have to do is, suppose in your first row, where work family conflict dimension is mentioned, for statement 1, if you have scored 3, for statement 7, if you have scored 2, and for 20th statement, if you have scored 1, just write it down and do the total. So 3 plus 2 plus 1 comes to 5, 6. For each of these statements, mention the score, add them up, and do the total. For 16th statement, mention the score either in sense of helplessness or in lack of purpose in life. I'm repeating once again. For statement number 16, the score you have to add up can be either in sense of helplessness dimension or in lack of purpose in life dimension. Ashwini sir, have you done? I'm just calculating it. Okay. Yes, I had done. Okay. In the Today, first, sir, I you have a done. score 5. Should I tell the score? Mention all your scores in the third column, add them up in the fourth column, and then do the grand total.
because for the range, we will be requiring our grand total. It is 36. 36. Okay, sir. 36. So, sir, you can find it out from these range of scores. Grand total of all 20. Pardon, sir? Grand total of all 20. This 20 only. Ki Yes, sir. of this number. Sir, all 20. Your scores में आपने सर statement wise add किया. 16th क्वेश्चन को सिर्फ आप या तो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस में ऐड करिएगा या लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ में, कहीं भी एक जगह सर. 6 को स्टेटमेंट को सर 16th स्टेटमेंट के स्कोर को आप सिर्फ एक ही जगह सर ऐड करिएगा, या तो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस के अंदर या फिर लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ के अंदर. इसका स्कोर ध्यान रखिएगा, 2 बार नहीं जुड़ जाए कहीं पर 16th स्टेटमेंट का. 5 Man Singh sir scores 31, Rajesh sir scores 42. Okay, Supriya sir 24. क्या बात है sir? You are at your own best value with high degree of control, self-esteem and identity. Yes sir. आपको लग रहा है ये स्ट्रेस पर्सनालिटी ना? Okay, I can see thumbs up. Great, sir. And then we have the scoring range. Once you are through with your grand total, you can just figure it out that where your stress personality lies within which range. 20 to 29 is the topmost control. 30 to 49 range of score gives you a healthy sense of control over your life. So at times you might be feeling anxious in certain situations which need to be controlled for sure. And then in the last two range, it really requires certain attention. So no need to share all your score out here. It's for your introspection. I'll for sure definitely share both of these assessments with you. I'll ask my team to share it in your chat group, WhatsApp group, so that you all can go through it, have that assessment, and can reflect upon. Okay, so I think we are through with this. Yes, ma'am. Okay, sir. Thank you. Let me stop sharing this assessment, and one quickly in context to this what we have shared कि हमें कहाँ पर देखना पड़ेगा कि this is high time and we have to actually come up with the situation where we have to understand the stress is going beyond our control. सर एक ही रॉबर्ट यर्सन एंड जॉन डॉटसन ने एक प्रेशर परफॉर्मेंस कर्व दिया था जिसकी हम बात कर रहे थे. इसकी कुछ स्टेजेस दी हैं और ये कर्व अगर आप देखेंगे सर 3 ट्रैफिक लाइट्स के कलर से बड़ा मैच करता है. रेड कलर जहां पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें तुरंत उसको एड्रेस करना पड़ेगा. येलो जोन जहां पर देयर इज द सिचुएशन इन व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड that it is a time to go beyond or to step backward, and green and dark green zone, which is the ideal zone where our performance is really high. तो सर यहाँ पर रिसर्चर्स ने क्या कहा कि अगर हम
हमारे पास प्रेशर कम है और परफॉर्मेंस भी लो है, तो जनरली हम बोर आउट हो जाते हैं। हम वही टास्क कर रहे हैं, हमारे पास कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई इस तरीके का मोटिवेशन नहीं है, और वो रिडंडेंट टास्क एक मोनोटोनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक क्रिएट करता है, तो हम स्लोली और ग्रेजुअली उसी में ही अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, चैलेंजेस लेना शुरू करते हैं, और हम बोर आउट से इमीडिएटली we start having with more pressure towards moderate level, our performance starts increasing, and then we stretch ourselves to a comfort zone जहां पर हमारा प्रेशर मॉडरेट होता है और परफॉर्मेंस स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम उस कंफर्ट जोन के अंदर आते हैं, तो एक टाइम बाद हमारा प्रेशर जो है वो धीमे धीमे करके इंक्रीज होने के साथ साथ immediately we enter into a optimal performance zone, which is a stretch zone, and here the performance is high. लेकिन हमें लगता है कि अगर हम और प्रेशर देते चले जाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती चली जाएगी, जबकि एक्चुअल में ये हमें एक कर्व बताता है कि ऐसा वास्तविकता में नहीं होता। आप कहते हैं ना, रबड़ को खींचते चले जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि it is going to collapse, and that similarly happens with the performance pressure stress curve. The moment you are stretching yourself, आप करते चले जा रहे हैं, प्रेशर को आप बियर करते चले जा रहे हैं, आपकी एक लेवल तक तो परफॉर्मेंस पीक पे जाती है। That is again a ideal zone with optimum performance and high pressure. लेकिन the moment you understand कि नहीं प्रेशर इंक्रीज, हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी ही होनी है, then we end up into landing into a strain zone, which is a yellow zone. And similarly, if we keep on creating that high pressure, bearing that high pressure, we come up with a lot of burnout symptoms, which is anxiety, depression, stress. और जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इतने सारे केसेस जहां पर जो हमारे पर्सनल्स हैं, जो हमारे ट्रूप्स हैं, पीपल हैं, जो इन जोन ऑफ डिल्यूजन के अंडर लाई करते हैं, वहां पर परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करती, बल्कि उसके कुछ रिपरकशंस होते हैं जहां पर वो प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होता है। इट बी बिकॉज ऑफ any factor, external or internal. So this was the pressure performance curve, which was given by Jobson. And with this note, would like to end this session with you all. Any question, any suggestions, sir, from the cohort? Anything that you would like to come up over here? है कि ये जो बंगाल वाले हैं, इनका स्ट्रेस लेवल इतना अच्छा है, जो 26 पे जाकर के रुके हुए हैं, ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस I would say सर, ये तो देखिए अगर हम टाइम टू टाइम इसको करेंगे ना सर, अभी तो वेस्ट बंगाल में सर कहीं और चली गए, फिर क्या होगा सर? फिर भी तो हमारे जैसे हो जाएंगे मैम, फिर हम जैसे हो जाएंगे 9-10 वाले। शिखा मैम, अगर आप परमिशन दे तो एक चीज पूछना चाहूंगा। बिल्कुल सर। अब जिस लेवल पे हम पहुंच गए ना, यहाँ पे अपने स्ट्रेस की अब बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती जी। अब तो चिंता होती है उनकी जो 20 साल से अपने घर पे जब भी छुट्टी जाता है तो बोलता है मैं कांस्टेबल हूँ। उसके प्रेशर को, उसके स्ट्रेस को आप गेज नहीं कर सकते। आपका जो डिलिब्रेशन था बहुत ही ल्यूसिड था, बहुत अच्छा लगा। हमने स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। स्ट्रेस है क्या, इसको गेज कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपने स्ट्रेस लेवल को पहचानेंगे कैसे। लेकिन इसमें कहीं पे आपने शायद इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत सारे CLMTP वाले जितने होंगे सबके लिए लिया होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ कि इतना स्ट्रेस के बारे में जानना हमें उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। इस स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है
ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएटी शायद इसके बारे में स्पेशलाइजेशन रखती है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट को हैंडल करते हैं जहाँ पे टाइमलाइन होता है, डेडलाइंस होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको मीट आउट करना होता है, लोग फेल करते हैं तो बाकी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। मुझे केवल एक छोटी सी सलाह दीजिए कि वो जो कांस्टेबल 20 साल जब भी छुट्टी जाता है घर पे बोलता है मैं कांस्टेबल हूँ, उसका बच्चा पूछता है पापा आप क्या हो, बोलते हो कांस्टेबल हूँ, उसके प्रेशर को मैं कैसे डिफ्यूज करूं? हाउ टू गेट रिड ऑफ हिज एंजाइटी, हाउ टू हेल्प हिम? सुजीत सर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट पूछा और बिल्कुल आपने सही कहा सर। ये हमारा डेलिब्रेशन बहुत हुआ है, बहुत सारे बैचेस के साथ हुआ है सर। जितना हमारा डिस्कशन हुआ है और आप लोगों की ही बात सर, इस कोहोर्ट की और इससे पहले जो कोहोर्ट है उन सबकी बातों को कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक ऊपर पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। जो आपने डिफ्यूज करने की बात कही सर, एक बात बताइए, यही डिस्कशन हमारा हुआ था कई बैचेस के साथ। क्या हम वास्तविक में जो हमने अभी नर्सरिंग की बात की, या हम अपने से जुड़े लोगों को जो हमारे अंडर हैं, जो रात दिन काम कर रहे हैं, या घर पे जाके घर से दूर रह के जो भी उनकी वेदना है, जो भी वो व्यक्त कर रहे हैं, हम उस पे फोकस कर पा रहे हैं? कहना सर आसान है, हम एज अ लीडर हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। थ्योरीज बहुत आसानी से हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन सर जब हम प्रैक्टिकलिटीज में आते हैं ना, तो हमारे सामने सबसे पहले एक ये चैलेंज आता है कि आप ये बताइए, हम इतने हैवी कमिटमेंट में काम कर रहे हैं, हम इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, हम टाइमलाइन डेडलाइन की बात करते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन क्या हमें उतना टाइम मिलता है उन लोगों के संग उनको नर्चर करने के लिए? आप कितना टाइम आप दे पा रहे हैं उनकी एक्चुअल मन स्थिति को समझने के लिए? और अगर हम चलिए दे भी दिया, कि क्या गारंटी है वो आपके साथ उस लेवल का बॉन्ड शेयर करता है और वो आपसे डिस्कस कर पा रहा है? हो सकता है हमें लगता है कि कई बार हमें एज अ एकेडमिशियन ही लगता है वो बच्चा हमसे डिस्कस कर लेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स आके हमसे डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं मैम वो नहीं डिस्कस कर पा रहा, वो बड़ा इंट्रोवर्ट है, उसे शर्म आती है, या वो झिझकता है, या वो खुल के बात नहीं कर पाता, उसको सिर्फ ऊपर से जो मिला आदेश उसने ऐसा कर लिया, उसने अपनी बात नहीं कही। सर बहुत सारी चीजें हैं, ये कहना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंटेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना सर, कैसे डिफ्यूज करें, इसके लिए एक उस तरीके की नीति, उस तरीके का एक सिस्टम हमें लाना पड़ेगा सर। दिस इज समथिंग। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म मिला है हमें, और आपके ऐसे एक्सपर्ट्स मिले हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट हेल्प अस आउट। हमें अपने अब स्ट्रेस की, एंजाइटी की, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, एज कमांडर्स वी आर नाउ नो मोर वरीड। लेकिन जब वो एक सिंगल अदद कांस्टेबल हमारे सामने खड़ा होता है और बोलता है कि सर ये प्रॉब्लम है, वो हमें ज्यादा डिस्टर्ब करता है, या आप माने या ना माने। ये जितने भी कमांडेंट आज की तारीख में यहाँ बैठे हैं, सब ये सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और बेसिकली हम एस्केपिस्ट बनते जा रहे हैं। एस्केपिस्ट मतलब सुनते सबकी हैं, कर कुछ नहीं पाते, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड वी आर बाउंड टू सफर। मुझे एक कोई ऐसा सेशन इसमें आप ऑर्गेनाइज करें जिसमें मैं आपको एक क्लासिकल सिचुएशन दिया कि क्या आप उस कांस्टेबल के मेंटल स्टेटस को, उसके एंजाइटी लेवल को गेज कर पाएंगे, जो 20 साल 22 साल से कंटिन्यूअस एक ही रैंक को होल्ड कर रहा है। कभी उसके रैंक को बीएसएफ उलट देती है, कभी बोलती है चेवरन जो होगा इसका जो पॉइंट वाला हिस्सा है नीचे होगा, कभी बोलेंगे ऊपर हो जाएगा, कभी बोलेंगे आप सीनियर कांस्टेबल बन जाओगे, कभी आप सीनियर ये बन जाओगे, काम उससे वही करा रहे हैं। तो 20 साल की जो मोनोटोनी है और उसकी जो सोशल रिकग्निशन जो है, जिसको कि आप सोसाइटी में बनने नहीं दे रहे हो, उसके बच्चों के साथ, उसके फैमिली के साथ, जो एक तरह से एक सेंस ऑफ ये होता है ना कि मेरी भी एक सोशल रिकॉग्निशन है, आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। इट इज ए हीनियस क्राइम, इजंट इट? मैं चाहता हूं कि यार ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिविजुअल फेल नहीं कर रहा, उससे जो आप ड्यूटी करने के लिए कर रहे हैं वो तन मन जिससे भी सबसे कर रहा है वो,
लेकिन मुझे कोई तरीका तो बताइए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, उस आदमी को मैं कैसे बोलूं? कल को वो VRS लेता है, वी जस्टिफाई, वो कमिट कर लेता है सुसाइड, वी जस्टिफाई। तो कोई ऐसा सेशन रखिए ना जिसमें आप मुझे तरीका बताइए कि आज कमांडेंट, इफ समवन इज कमिंग विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, how to diffuse his anxiety, how to address his that psychological trauma. Absolutely, sir. I Otherwise this lecture is futile. No. सर सुजीत सर, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया और ये बात बिल्कुल सही है सर। कहते हैं ना सर कि पहले हम अपने पे काम कर ले, फिर हम दूसरे पे काम करें, पहले हम खुद समझ ले, फिर हम दूसरे पे समझें। तो अभी तक सर हम बैचेस में क्या कर रहे हैं कि हम अपने समझने की बात कर रहे हैं कि हम तो समझ गए, जैसे सर आपने कहा, बिल्कुल सही कहा सर, हम तो उस सिचुएशन से, परिस्थितियों से अवगत हो गए, लेकिन आंसरेबल सर आज आप ही हैं, उनकी देनदारी आपकी ही कंधों पे है। Just help us out. This is the question of the hour. Commandant is not the individual; it is an institution. So he is the father figure. So, as the name suggests, he has to answer. क्योंकि मैडम देखिए, आप अपने घर में आप माँ के रोल में भी होंगे, किसी दिन आपने आधी रोटी खाई होगी, आपको चिंता नहीं होगी। आपका ऑफिस में परफॉर्मेंस पे कोई अगर कोई एक गलत रिमार्क्स देता होगा, आपको चिंता उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बच्चा स्कूल में जाए और वहां से टीचर एक छोटा सा एक कमेंट दे कि आपका बच्चा जो है इज नॉट परफॉर्मिंग, ही इज नॉट मेजरिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल, इट विल डिस्टर्ब यू मोर, बिकॉज you are leading your family, you are head of the family. तो हमारे लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि एज कमांडेंट हमारे पास 1200 से ज्यादा आदमी हैं और उसमें से जो चंक है वो कांस्टेबलरी और हेड कांस्टेबल का है, और एवरी डे दे आर कमिंग विद द सेम सिचुएशन। उनको क्या करें, क्या कंसोलेशन दें हम? नहीं तो ऐसे एमएटी में पढ़ा दीजिए, हार्वर्ड में भेज दीजिए मुझे पढ़ने के लिए, सेम लेक्चर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस? All these exercises are futile unless and until they give a solution to us to address this situation. Would you prefer to hand over your country's border security to a man who is highly demotivated? No, sir, absolutely not. So give me a way out. Hold a session. Sir, point very well taken. Or I can say that these things we have been working, and for sure we are going to come up with some of these solutions for the same. आपने इतनी बात छेड़ी सर, मेरे ख्याल से मेरे दिल को छू गई। आपको मैं एक अभी रिसेंटली 2 महीने पहले का एक सिचुएशन बताती हूँ। मेरे पेरेंट्स सर गए थे अभी ये इंडिया चाइना के बॉर्डर के पास, वहां पर अभी जस्ट ऑन अ वेकेशन, और चेरापूंजी होते हुए वो वहां तक पहुंचे। वहां पर BSF के हमारे ट्रूप से भी मिले, जवान से भी मिले। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, उनकी दास्तान सुन के आंसू आ गए। वहां के जितने लोग देखने गए थे, क्यों? वो कहते हैं कि हमारा तो यही सब कुछ है, सारा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन उनकी अपनी गार्डिंग दी बॉर्डर्स ऑफ आवर नेशन है। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, अगर उनको छुट्टी पे भेजा भी जाता है तो वो ज्यादा दिन रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा दिन रहेंगे उनको अपने बच्चों से मोह हो जाएगा, और फिर उनके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होगी वहां पर उनको अपनी पोस्टिंग्स के दौरान, जहां पर उनको अपनी जॉब परफॉर्म करनी है, ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। सर ये सारी इंटरैक्शंस, ये सारी चीजें वहां जाके, वहां इन पर्सन जब हम डील करते हैं, उनसे बात करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसे रिवील होती है जो शायद आज तक मतलब मे भी कहीं है ही नहीं रिकॉर्ड में। और सर सुजीत सर, I would say I ensure this point very well noted. We are working on this, that how it could be beneficial for you as a leader to diffuse their stress, because now it's beyond something which is going beyond you, और आप इनको सेव कर रहे हैं, and ultimately you are saving our nation in that context. And we ensure as a MIT that we will come up with some of the solution which we would be able to share. And hopefully sir, अगर ये हमारा ऑफलाइन सेशंस होंगे तो मेरे ख्याल से हम और भी ज्यादा इंटरैक्ट करके और इन चीजों के कहीं ना कहीं वर्कआउट करके we will have some concrete solution for it. So this assurance is more than enough.
But I think when you hold sessions for the next batches, you come up with some solutions, because we know much about the stress. We are very much aware what the stress is, what anxiety is, how it develops, and how to gauge it. But we are not aware how to tackle the situation, what presently we are facing. Somehow I feel that my organization, it is responsible, but I'm not in a condition to push my organization in the corner and tell them to make this thing happen, address this situation the way I want, make our men happy, bring some happiness to their family. I'm not in a position, but as METN or MET as an institution, if you are holding this kind of a session, you are at a better place to raise this issue, flag this issue, and highlight this concern. And if you could hold the session for helping us out, we would be obliged. Game to 5 baje tak Very well noted, sir. Very well noted, sir. And we will. Thank you very much. I have taken much of your time beyond the time limit. No, sir. Sir, it is something that it's altogether a learning journey, sir. हम BSF के कभी इतना करीब भी नहीं आ पाते अगर हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते. अभी इतना कुछ पता है, लेकिन हाँ कुछ चीजों पे अभी हमें भी काम करना है, सर. जैसे आपने बोला सुजीत सर, and these are the things which we really want you to come up and to guide us ki what extra we can do and how, which way, which direction, which actually give us some certain outcome. Dr. Sikha, for both of us. जी sir. Basically, मैं तो ये कहूँगा कि behalf of the MT University, there must be a kind of research and project on the deployability and the stress level of the troops of the border security force. So then you can present a paper and write and proper report. And same time, this project must be awarded from the Ministry of Home Affairs or any other organization of the ministry. Because बस कहूंगा मैं बात ज्यादा कुछ तो नहीं सर आपने जो बात कही ना सर, ये हमारे और इसमें एक और चीज कि अगर जब आप ऐसा प्रोजेक्ट लेंगी हाथ में या लॉन्च करेंगी तो ऑल दीज ऑफिसर्स एंड प्रायर टू दैट मेनी मोर ऑफिसर्स हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस कोर्स, so they may assist you properly. Absolutely sir. Last time हमारी बात हुई थी, हमारे कुछ ऑफिशियल से मुलाकात भी हुई थी सर कि हम किस प्रोसेस से, क्योंकि सर एक प्रोटोकॉल है आपका सर, एज अ सिविलियन आई कैन नॉट एंटर इनटू योर सर्वे एंड ऑल, तो सर उस पे भी हमारा काम चल रहा है, बात हुई है, so that we are able to follow that protocol. We are there on north ground realities and to work on that. Then probably we will be able to have more information in practicalities, which could be having certain light and objective to meet in terms of solution that could be provided. Thank you. Sorry. Thanks. And so with this note, sir, I would like to hand over. Already we have exceeded our session. It's over to you, Tanvi and Somadev, to culminate the session of today's. Thank you so much. Sorry. Thank you, madam. Oh, sir, don't be sir. Yes, sir. Sir, I would like to add here, Dr. Shikha Dubey is also a dear colleague. She is part of our team. And with full confidence, we can tell that this issue was taken up in the last batch also. And Sujit sir, well taken, the input well taken, and we would definitely try to integrate a session on this. And Mahendra sir, we have already requested, Dr. Shikha also knows, we have already requested the directorate that we would really like to, have a detailed, detailed review of the situation, because we cannot tell anything for sure from here as a civilian unless and until we see what kind of situations you are staying in, and we would love to visit BSF at one of the locations and try to research and then integrate and make this program more useful for you. That would be very that would be our topmost priority. And
we would definitely try to integrate this. Yes. Sir, without taking much time, thank you so much, Dr. Shikha. And thank you for conducting such an insightful session. And I'm sure our participants have something to take away from here. And without taking much time, I would just share the feedback link for today. I know most of you have shared the feedback vocally. I would request you are more than welcome to share this feedback with us on the link as well. And we would try to integrate these, and we have been trying to do that throughout all the batches. Slowly we'll get there. And for week 2, my colleague Soumyadev has shared the handbook on your WhatsApp group. I hope you have received that, and Priyanka from my team has shared it on emails as well. I hope all of you have received. If not, please feel free to ping us on the group, and we shall see you on Monday. I hope you have a great rest of the evening, sir. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. Thank you. Thank you. Giri sir.